Good evening, fellas. First of all, please spam W in the chat for our growing community and for yourself for helping us reach this milestone of 752 subscribers. Thank you, everyone, so much. And moving back on our project, so you're watching Odyssey Cup Season 1, brought to you by Rayuga Esports, powered by Vista Games, and it's going to be the best tournaments that we have ever hosted in this entire community, and it's going to be the first day of this tournament. I'll be your caster Silverhawk for this match, and alongside me, it's going to be Zivo as a co-caster. Say hi, Zivo. Hello, everyone. Hello to Silver as well. I hope everyone is doing really great and everyone is excited as well because, as Silver said, it is the first day of the Odyssey Cup that is hosted by none other than your Ryuga Esports. Quite exciting of tournament. Everyone has been waiting for this. So, without further ado, I would like to introduce you guys to the first two teams, which would be opening the tournament for us. It is none other than Team Fright here, and they will be going against Team Puneet Superstars right now. So both the teams they have been into the tournament scenes. I have quite heard about Team Fright, but Puneet Superstars they are quite a bit new to me, but still it is gonna be quite of an interesting match that we are gonna be watching. That's absolutely right, Zivo. And let's just move straight into the draft. The first pick it has been given to the side of Team Fright, so they've decided to ban out Carmilla for themselves. Since they have the first pick, they can have a much more priority for themselves. But it will be like the team Suponit Superstars will actually give one pick and take two in return. Yep, definitely. First pick and second pick, they both have their own advantages. So you gotta be taking advantage of those things. As for the first team who gets the first pick, it is usually the fact that you can prioritize a hero which you are quite capable of using. As for the team who has a second pick, they have got the chance to counter the draft that the opponent team would be giving to you. So they have both the pros and cons, and overall, looking at the draft, it is quite interesting. The quite of the OG bands coming in from the side of Team Puneet Superstars, while Team Pride they just decide to go for a little less known bands, but still they work out quite well on the band list. That is true. That is true. And as you just mentioned, the non kind of band heroes, since the Carmel and Sicilian, since they rotate quite faster and they are good in clearing the mid lanes, that's quite okay ban for themselves. And banning out the Lucas, since Lucas could work equally as good on EXP and the jungler. That's actually a Mhm. good ban for themselves. And the three bans, the Badang Jaw and Julian, possibly a utility and two junglers for themselves. I'm pretty sure it could possibly be a respect ban towards the team fright, but I guess they had the first pick of the team fright and they have decided to pick Kalia. Kalea, the new hero, which is, quite the versatile in the EXP, in the roam position as well. And, ever since she's got out, it's been quite annoying to counter her because she comes in the pickup category for the heroes. So of course you have quite a hard time having to counter the tsunami slam that comes you in and throws you inside of your enemy's direction. So as a first pick, picking out that Kalea looks really strong for the side of Team Fried right now. But again, for the side of Team Bunit Superstars, that Matilda and Lucian, quite the OGs that we still have into the game. So they both are quite a menace, and there is a reason why they are banned in the pro scenes or in the rank as well. But still, overall, I think, in my opinion, both the teams they both have gotten their equal share of traits. That is true. The equal share of trades, absolutely. Since the meta, like the whatever the both the teams have picked so far, it's like it's been totally revolving
in the meta. You could see the Kalia, they got one and they gave two in return as a Zuxian and Metalia, as you just said, Zivo. And then again, the two picks, they got Hilda and a Suyu. Then again, it was CC, since they needed a EXP for themselves. The Rome and the EXP has been justified for the side of Team Pride, and the Roma and the EXP equally to the side of Team Punit Superstars. So what is left right now is for the team Punit Superstars to pick a marksman and a jungler for themselves, and a mage and a marksman equally to the side of Team Fried. So that should be the case, that they must ban out those picks, like forcefully ban out those picks, which they shouldn't give to their opponents. Yep, yep. So you would want to ban out the heroes which are in top tier right now, or the heroes which you don't want to face off against when going against your own lane. But looking at the bans right now, the Farsa quite understandable because of her long range with her burst ability as well. Same with that Granger. But that 1-1 once again, Team Fright, they go for the quite a bit of an unusual ban because of that 1-1, but still, if it is a great 1-1 user that they have in the enemy, then of course she is gonna be a menace. But yes, the alpha ban is quite reasonable given that they are gonna be going a little tanky lineup. Same, same with Atsuyu as well, as alpha counters him out. That's true. That's true. Definitely, Alpha would have countered the side of the team Fright, because the Suyu, the Alpha is the only one who could actually match the pace of jungling if it's the Suyu in the opponent, because of the first skill and the two damage it gives with his skills and the abilities. And then again, you can see the teammates in the higher ranks. They also help the jungler to the scale up faster before the level one turtle that comes on the 2 minute mark. And right now, the jungler is the only thing left for the team Punit Superstars to pick right now. They've got their marksman as a carry, and an answer to that carry, the stoner has went for the Harit, and right now they need a good mage for them to actually just close the gap between the Matildas, Circling Eagle, and the CC. I quite agree with you. They could have gone for maybe a Vexana as well because she has got the lane clearing skills. But once again, the Veil, quite of an unusual pick, I would say. But if it works out, it is gonna be working out quite well because they've got quite the squishy heroes, I would say. So it is gonna be we've got to see how those work out. That's true. That's true. The windstorm from the whale could have actually sync really well with the Kalia's ult, the tsunami slam, and could possibly be good if the Suyu joins the team fight, and the blade search could give them a good opening along with the Kalia's first kill with the knockup she gives along with tsunami slam. That could give them a good engaging. But right now, the jungler of the team Pony Superstars, they have managed to grab themselves a Hayabusa. So the whale and the Hari, they need to be kind of careful, because the Sayu on the Hayabusa will definitely target the backlines. And the first turtle, the one who gets the first turtle, will get the power spike for themselves, because the Sayu and the Hayabusa, both of them needs the kills to get the power spike. Yep, yep, definitely. The first turtle is always the one which will be deciding which team gets the upper hand in the match. So we've gotta watch how both the teams are gonna be executing the draft. The drafts both look really, really great. A Harry going against a carry. Both of them, they've got their own advantages against each other, and that is one of the main reasons why a Harry and a carry going against each other is quite interesting to watch because they've got similar skills and it works out really well for the both of them. That's true. That's true. And let's just dive straight into the land of dawn. This is the first match of the tournament. Team Fright on the blue side and Team Punning Superstars onto the red side. Both the teams have made an equal, beautiful draft for themselves. So right now, it depends who gets the skills for themselves and the turtle and the objectives that team will secure for themselves. The Harith will need his power spike item, the Holy Crystal, to dish out a lot of damage with the Synchro Fission and the Chrono Dash. And the Hayabusa, he will get the kills for his power spike. Same that goes to Suyo.
Yes, definitely. So right off the bat, we are seeing quite a poking games coming in. Top lane, mid lane, bottom lane, everywhere the poking games are gonna be coming in. But look at that already. Rick, he is having trouble going against that Zushin and her lantern flare, and he's gonna be needing all of the backup that he needs during the laning phase right now. Because as far as we know, Zushin she pokes quite a lot, so as we are seeing right now, Hilda is just getting taken up, getting taken down. So it is gonna be quite hard for them. But look at that Oh, fried garlic sniping on Matilda, but she is gonna be living away with that slither of HP. that's true. She almost got away with the Quiller that she gave onto the top side again. You can see the Ogi Shadow Clown is shown her. And the first blood secured by Pepe, the carry. Yep. So last hit definitely went on to carry, which is good for her, I guess so, because she is the master, so she's gonna be needing all the gold, all the farm that she needs. And same with Havas as well. At least he got the assist. So the turtle is gonna be spawning soon, and it is gonna be quite a brawl that we are gonna be seeing. But once again, Rick is getting marked out by Hayabusa. The windstorm really helping him away, but still, Carrie Pie won't be escaping from Suyo and the onslaught coming in. But look at that mid lane still going for it. That is a double kill for fried garlic onto that Suyo right here. So 2 kills secured. The trade going onto the side of Team Fried right now, and they are still invading the jungle and zoning everyone that comes in their way. That's true. The fried garlic seemed they should have gone for the turtle. Okay, Tsunami Slam Oh coming in. my goodness. Tsunami Slam coming in, but it won't be helping much as the Zushin is the one to fall down. So with almost 3 kills in their hands, the turtle is gonna be an uncontested one. That's true. They got them since the turtle encircling eagle comes in, but as a defensively for themselves. The first turtle given to the side of Team Fright for themselves. Hayabusa just lacking behind at the farm because Suyo just keeps on stealing his buffs right now since they got the blue buff for themselves. Talking about the rotations, the Zukshin she should actually rotate to the gold lane because Hari actually got killed once again. Okay, oh look at the damage of that Hilda just poking them while they rotate for themselves. Hilda, she is quite annoying with her, triple combo, the triple axe combo. And if you're quite squishy, then if she gets her stack, it's gonna be execute for you. But once again, a fight that is definitely coming out. Matilda won't be escaping. She's the first one to get taken down. Stoner onto the chopping block next. And Zushin dealing all the damage with the lantern flare, picking up that Hilda on Query right there. But still, fried garlic goes for Pepe Los Biharis onto the back line, but he won't be escaping. Oh, That is a shutdown coming in from Sayu right there. So a 1-for-2, 1-for-1 trade coming in, but still the lead is in the hands of Team Fried. well, actually, there the fried garlic would have escaped from there, but I guess Yep. he got kind of greedy there and he just lost his life. And Sayu was really great at this map awareness. He knew that he's going to overextend and he actually punished him while he rotated back again. That was a good court shadow combination for himself. Again, he's able to, get his farm back up after that one death he's got onto the mid side. And Shona seems to have some trouble while doing the 1v2 situation. Lantern Flare pops up, but look at the damage coming in. Zaman Force used up again. Goodness. 7-4 is used up for the defensive maneuver, but once again, off-cam kill. Sayu gets taken down. Windstorm comes in from Vale, and once again, Carry will be onto the chopping block. So 3 versus 2 right now. Zushin and Mat trying their best to get the turret away from the hands. Team Fried, but still they decide to go for it, and Hilda dishing out as much damage as they can while Suyu is on to the bottom lane taking that turtle. Again it's going to be an uncontested turtle. Like the Hayabusa, he knows like he needs to get those buffs, but like the Matilda and the Zukshin, they're way too fixated towards the rotation, and that's where the problem occurs because the Hilda is not going to let them rotate. And look how annoying the Hilda is for that Hayabusa. She's not even let that Hayabusa escape from there, and look at the zoning comes in. But oh, Oh my goodness, a fight might be breaking out onto the top lane because if we look at the positioning, they are just going around the bushes trying to get someone off guard. Look at that Sayu trying to go in with his spot shadow, but
he will be getting away, and look at that. So your fried garlic tries to dish out as dead, but he will still be escaping with the help of his guiding wind right there. Although Cece, she is trying her best to take that trade away, taking out that mid turret out, but still look at that circling eagle coming on to Queenie, but won't be the damage. But once again, that is a triple kill actually in the hands of Rick right there with the help of his sandstorm. So overall, the Veil pick is working out really well for the side of Team Pride. That's true. Like their objectives, they're securing the objectives way too early because the team Punet Superstars, the Hayabusa, he needs those kills and he's getting like killed in every 1 or 2 minutes by the Hilda, and he's getting killed by the rotation he does because the Queenie, like she's not like letting the Hayabusa engage with the quad shadow. She's just making it like as a bait for themselves. But again, some action happening on mid side. Yep, definitely. Carrie is just getting marked out all the way out because of, they know the potential of Carrie if she gets that farm, and she'll be melting you away. So you've got to be safe than to be sorry. But once again, Tsunami Slam coming in from Fried Paneer, but she will be getting taken down, although Stoner tries to go in with that Chrono Dash. But no, the turret stands in his way. So they gotta back down and just stay low for a while. That's true. Again, one more turtle comes in, but Sayud, he doesn't actually have that much farm. He could get like a Zonic coming in from that Hilda again. Look at the damage. Oh my god. She's going to get killed by that Hilda again. Like the Sayu, he seems to be in some trouble. Retribution used it as well. He doesn't have the Oh quad my shadow. He goodness. could have get killed, but oh my god, the damage. He got killed 1v1. Sayu. Oh my goodness. I thought he was about to escape, but no, he still decides to go for it. And Hilda is just having her time of her life, just bursting out that Hayabusa. And she's a fighter, she's a tank fighter, so Hayabusa can't really dish out much damage until and unless he got that full stack and some penetration items as well. But overall, Team Fright, they are doing their very best right now. That's true. The goal gap from the side of Team Fried, it's going to be 5k goal lead they have as of now, but something's happening on to the mid side. Yep, something is definitely happening onto the mid side. Sayu once again get caught in the windstorm of Veil right there, not able to escape despite having all the mobility. But Fried Garlic, he is stuck in between. But Kalea is there to save the day to get him away. But still, the Lord has spawned, and Team Fried, they decide to take that Lord before they engage to any other team fights. That's true. And I really like the fact that the Team Fried, they didn't actually went for the turtle. They waited for the Lord to spawn because they have actually got the access to the inhibitor turrets as of now. And the Lord would crash onto the mid side on that inhibitor turret, which could actually give them a good goal lead if they manage to get that inhibitor turrets and the gold minions from the mid side. That's a good objective they want to secure as of now. And talking about Sayu, the Hayabusa, he's facing like a lot of like Hilda, like the rotations from that Hilda and the Mm, early poke. And since yep. he can't get the items for himself, he's not able to grab the kills over to the back line. Again, some action happening onto the mid side. Yep, definitely some actions happening. Team Puneet Superstars trying to dish out some damage, trying to go for some engage before the Lord comes, but they kind of lack the damage that they need because they are behind 7k gold. So at this point, if I were them, I would be waiting out for that Lord to come in and wait for a chance to fight back. But still, they gotta defend the inhibitor away from the Lord. But mid lane, I feel like they won't be able to. Still, T-Fight does come out, Oh, but Hamza won't be dishing out much damage with his OV Shadow kill. Still, a lot of resources has been used up for all the side of Team Booty. Superstar Stoner goes in with a Chrono Dash combo, and look at that, the base is already wide open, tries to go in, but Stoner will be getting taken down in the hands of Zri. Right there, that is a double kill, taking away Queenie as well. Just barely escaping, barely managing to dish out the damage onto the base, but still they won't be succeeding as Team Fright takes the first match of the day. Victory!
what actually went wrong in the favor of Puneet Superstars? I guess it was actually the Hilda who caused the most trouble to the Hayabusa, and Mm, like the fact that Vale is kind of easy target to for an Hayabusa if he gets the caught shadow, like the S2 of that whale, the knockup is the only thing that whale could actually help him outplay the Hayabusa Scott Shadow, but that wasn't actually the case. It was actually the Hilda, and you can see the first item from that Hilda. It is actually a blade of Heptasis. So that explains why Sayu was getting kind of killed in his own jungle. mm. Yep, definitely. So Sayu, he was not able to find the solid ground that was needed for him to have the um farm as well. He did not get the early game snowball that a Hayabusa usually needs for the damage to come. And overall, throughout the entire game, as you said, Hilda, Queenie on that Hilda was doing a lot to Sayu, preventing him from going anywhere, just poking him out, dishing away all the damage. And given the fact that he is squishy, she was able to land all of her hits onto him. So that was quite the bad idea for Sayu to go for a Hayabusa. Maybe could have played a little bit more safe around his teammates. But if we look at the team composition, team Pune Superstars, they were quite on the squishy side. They could have had a they could have had a tanky frontliner, would have helped on that Hilda, but it is the draft gap that we are speaking right now, and the execution as well could have made up on a bit on that execution. But Team Fright, they were doing really great on the team composition. That's true. That's true. Like, and also talking about the builds, like, just take a look at the builds of both the junglers. Like, Mhm. the fried garlic has already got his BOD, and if you Yep. talk about Sayu, since he was getting killed again and again by the Hilda, he has only managed to get the two items. Mhm. And like the talking about the EXP laners, like the Kalia, she has managed to grab three items on herself. That Mhm. explains the second item that the fried paneer went on Domi. That Yep. was okay because the Queenie just went on the Blade of Heptasis, so she doesn't have to Mhm. care enough about that dominant size. So that was a good combination and coordination coming in from Team Fright. Yep, definitely. And that was quite an exciting match that we saw. But there are a lot of matches coming in. So for now, we'll be taking a short break and see you right after.
beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got a shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got a shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got a shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction.
keep on winning if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living, I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking, I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining the Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living, I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking, I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining the Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living, I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking, I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will. तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और बेहतरीन टूर्नामेंट में। और इसी के साथ ये ओडिसी कप जो यहाँ पे चलता हुआ, और यहाँ पे जो मैच हमें देखने को मिलेगा, फ्यूनिक्स ई स्पोर्ट्स वर्सेस सुपर यामा जो है यहाँ पे टीम्स को जो आपस में यहाँ पे क्लैश करने वाली, आपस में से युद्ध भूमि में उतरने वाली है। दोनों ही टीम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे हमें दिख रहा है सुपर हु जो है फर्स्ट बैटिंग करेंगे हीरो की तरफ। मैं हूं आपका कास्टर शिनरा और मेरे साथ है मेरे को कास्टर यहाँ पे सन्नी जी, उनको तो आप जानते होंगे। तो सन्नी भाई, क्या लगता है यहाँ पे फर्स्ट बैन हमें क्या देने को मिल सकता है? शिनरा, जैसे ही मैं मेटा देख रहा हूँ यहाँ पे, तो केलिया बैन हो सकती है, क्योंकि केलिया 29 मार्च के बाद सारी टीम्स यूज कर सकती है टूर्नामेंट लॉबी में। तो राइट नाउ सुपर यामा दे आर गोइंग विद द हैरिड बैन। यहाँ पे हैरिड भी एक मेटा पिक है जो लेट गेम डीमन बन जाता है 2 आइटम्स के बाद। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो है अभी स्टार्टिंग से ही जो है
गोल्ड लेन के ऊपर जो है अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं वहाँ पे। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो इसका जवाबी हमला करते हुए क्या यहाँ पे बैन किया जाएगा? क्या यहाँ पे हाइलस को बैन किया जाएगा? या फिर जो है एक तरफ जंगलर को बैन करके अपना जो एक गेम का स्ट्रैटेजी है वो कुक अप किया जाएगा? देखने वाली बात होगी यहाँ पे, सनी भाई। एंड केलिया बैन किया गया, बहुत ही बेहतरीन बैन है यहाँ पे। लाइक इनको पता है कि फर्स्ट पिक है सुपर यामा के पास, केलिया ओपन करेंगे तो पेल दिए जाएंगे, पर ठीक है, दैट्स अ गुड बैन। एंड यहाँ पे आई थिंक एक मेज बैन होने को देख सकता है हमें, जो शिन या हाइलोस भी बैन हो सकता है, पर मटिल्डा बैन की गई है। हाइलोस में बहुत चलती है मटिल्डा। जी, बिल्कुल, जिस तरह से ये उड़ा के ले जाती है मटिल्डा, इनको जो है मैं उड़न खटोला बुलाता हूँ, क्योंकि अपनी साथ-साथ जो है टीममेट्स को भी उड़ा के ले जाती है। अपनी टीम में जो है मोबिलिटी जिस तरह से प्रदान करती है, बहुत ही बेहतरीन हीरोज़ रहता है और ख़ास करके हमें पता है कि टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत देता है ये हीरो, तो इसको जो है बैन कर दिया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे जो दूसरा बैन हमें पैनिक की तरफ से देखने को मिला है, उसे बैन किया गया यहाँ पे जॉय को। और ये चुलबुरी रानी जो है इस बैटलफ़ील्ड पे हमें देखने को नहीं मिलेगी, इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक बीट्स वाली अल्ट है वो इस युद्ध भूमि में हमें नहीं देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे सुपर रेटरी तीसरा बैन करते हुए जाएँगे अपनी टीम के लिए। क्या वो हाइलास होने वाला है? मैं अभी भी हाइलास पे ही दाँव लगाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो टैंक है ना, ये बहुत ही बेहतरीन टैंक है। अपना हाइलास घोड़ा मानव इनको हम कहते हैं। अपना जो ग्लोरियस पाथवे जो ये अपना अल्ट लगा के टीम को जो है बैक लेन में काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैन किया जाएगा फैनी को, तो केबल नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरी के साथ वहाँ पे जंगलर दूसरा सुयु उनको भी बैन कर दिया गया। तो अर्ली गेम पे थोड़ा-सा प्रभाव कम रखने का भी मौका दिया गया है। उसी के साथ फर्स्ट पिक सुपर हू यहाँ पे क्या उठाएँगे, देखने वाली बात होगी यहाँ पे सन्नी जी। जो वो फैनी बैन इन्होंने किया है यहाँ पे, वो फैनी बैन मुझे लग रहा है कि इन्होंने रिस्पेक्ट बैन किया है। फर्स्ट पिक मुझे तो नहीं लगता वो क्या उठाएं। रेंजर ओपन है, रेंजर ले जा सकते हैं। सिसिलियन ओपन है, जो शिन भी ओपन है यहाँ पे, तो कुछ भी जा सकते हैं। लाइक हाइलोस देखिए भी जा अगर वो सकते हैं। हाँ जी, 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 बिल्कुल। यहाँ पे अगर वो एक भी पिक उठाएँगे, उसका जो है 2 जो हैं मेटा पिक्स वो ऑलरेडी जो है एनिमी टीम के पास चले जाएँगे। और यहाँ पे उन्होंने जो अपने लूकास जी हैं, नारुतो जी हैं, उन पे दाँव खेलना चाहा है, उनको उठाया है जंगल लेन पे साइड। और इसी के साथ यहाँ पे मौका रहेगा जो टीम यहाँ पे जो है यहाँ पे फीनिक्स स्पोर्ट्स, उनके पास मौका रहेगा यहाँ पे उठाने का। तो उनके पास जो है ग्रैंजर ओपन रहेगा साथ-साथ, जैसे कि आपने कहा है। हटा देना। जी, मेज है, कहीं नहीं वो दिखी। भी रहेगा। जो अपने सिसिलियन है, वो भी ओपन है। तो अभी शायद दोनों ही जो पिक है, वो उठा के गेम का पारा थोड़ा-सा परेशान करने वाला पिक ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा-सा हवस ज़रूर किया गया, लेकिन उठा लिया गया है अपने चमगादड़ के देवता को। और उसी के साथ दूसरा जो पिक रहेगा शिन की तरफ से, थोड़ा-सा अपनी टीम के साथ विमर्श करते हुए लास्ट सेकंड में उठाएँगे। क्या देखना पड़ेगा, पारी ये क्या रहेगी? Your team is picking. और इरिथिल उठाया गया है। काफ़ी अच्छा है, मैं कहूँगा ग्रैंजर छोड़ के यहाँ पे इन्होंने जो है इरिथिल को प्रायोरिटाइज़ किया है अपनी साइड पे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सनी भाई? दोनों लेट गेम डीमंस उठाया गया है यहाँ पे, सिसिलियन और एरेथिल का डैमेज थोड़ा जल्दी आता है ना, उसे काउंटर करने के लिए गैतो उठाया गया है यहाँ पे। गैतो ना ही सिसिलियन से मरता है, ना ही एरेथिल से मरता है लेट गेम पे। और ड्राफ्टन अभी यहाँ पे सुपर यामा की बहुत अच्छी चल रही है लूटर्स रेट्रीब्यूशन पे, जो अर्ली गेम से ही डैमेज डिश आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स ड्राफ्टिंग फेज में थोड़े से ऊपर दिखते हुए, पर अभी भी टैंक एंड हाइपर नहीं लिया गया है फीनिक्स स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो अभी भी पलट सकते हैं वो गेम। जी, बिल्कुल, यहाँ पे पूरा मौका रहेगा उनके पास पलटने का। और इसके साथ सुपर चीज़ यहाँ पे लॉक इन करते हुए अपने ग्रैंजर को। उसी के साथ दूसरी पारी यहाँ पे टैंक या फिर ये इस पे दाव लगाना चाहेंगे यहाँ पे जो फीनिक्स ई स्पोर्ट्स है उनकी तरफ से देखने को हमें मिलेगा। फिलहाल अभी मैंडेका के ऊपर जो है हवस जरूर किया गया था, लेकिन लॉक इन किया जाएगा फोबियस। काफी अच्छा पिक यहाँ पे मैं कहूंगा फोबियस को, और काफी अच्छा जो है एक तरीके से टीम को सपोर्ट देते हैं। फ्रंट लेन खेलने में काफी अच्छा रहते हैं ये। उसी के साथ देखना पड़ेगा यहाँ पे जो चौथा बैन जाएगा किस तरफ। हाइलस को जरूर बैन करना चाहेंगे, मौका नहीं देना चाहेंगे जो है हाइलस को इस युद्ध भूमि में उतरने का, क्योंकि हाइलस भी अगर आ जाएंगे तो आगे काफी ज्यादा जो है फ्रंट लेनर रहेंगे और काफी ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। वो देखना पड़ेगा किस तरह से ये खेलते हैं। यहाँ पे टीम फीनिक्स ई स्पोर्ट को हायाबूसा बैन करना चाहिए। हायाबूसा ये एक हीरो है ना जो बैक लाइन पे मार के उनके एरेथिल, उनका सिसिलियन दोनों को ईजिली टारगेट कर सकता है।
पर देन अगेन हाइपर पिक कर लिया गया, या तो रोम पे जाके हाइपर भी जा सकता है सुपर Your रिट्रीट। team is banning. आप क्या बोलना चाहेंगे उस बैन के बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे फ्लोरिन को बैन किया गया है। मैं कह रहा हूँ काफी जो है फ्लोरिन हमें इतनी बैन देखने को मिलती नहीं है। दूसरी साइड पे वहां पे अल्फा को जरूर बैन किया जाएगा, नहीं चाहते हैं कि ट्रू डैमेज इस गेम में आए। और कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो है अगर वैलेंटीना पिक हो जाती है जो है यहाँ पे फिनिक्स की साइड से, तो दिक्कत बढ़ सकती थी लूकस के, लेकिन उनका जो है मेज ऑलरेडी पिक है वहां पे, सिसिलियन पे जो है दाव लगा लिया है उन्होंने ऑलरेडी, तो नहीं जाएंगे उसकी तरफ। और यहाँ पे देखा जाएगा क्या बैन करना चाहते हैं। चिप बैन किया गया है, काफी अच्छा बैन मैं कहूंगा, क्योंकि जो अपने गाटो जी हैं वो एक्सपी लेन पे भी जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल पिक है वो रोम भी जा सकते हैं, उसके साथ साथ जो है एक्सपी पे भी जा सकते हैं। तो चिप यहाँ पे बैन करना है काफी अच्छा सुझाव रहे। सुझाव क्या है, उन्होंने तो ऑलरेडी बैन कर दिया है। और जो 5वां बैन रहेगा सुपर यामा की तरफ से, वो बैन करेंगे सीधा हायाबुसा को। नहीं चाहते हैं इस गेम में जो है डीनिंग करके आए हायाबुसा और अपनी अल्ट का प्रयोग करें वहां पे, तो उनको जो है बैन कर दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पे रेन अपना जो चौथा पिक है वो उठाएंगे, और यहाँ पे लॉक इन किया गया है बदांग को, और काफी अच्छा मैं कहूंगा। हालांकि नर्फ आने के बाद भी जो है बदांग इस बैटलफील्ड पे अभी भी डटे हुए हैं, उनमें ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ जो शॉट है, जो रेंज है उनकी थोड़ी सी शॉर्ट की गई है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ गुशन पे हवर किया जा रहा है। डार्लिंग यहाँ पे क्या उठाना चाहेंगे, उसी के साथ नीचे सुपर हु रोमिंग की तरफ से एंजेला के ऊपर हवर करते हुए, लेकिन हम सभी को पता है यहाँ पे एंजेला तो नहीं, कुछ और पिक होगा, या फिर एंजेला भी जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सन्नी भाई इसके उनके बारे में? पास गैतो है तो एंजेला डेफिनेटली जा सकता है। गैतो एंजेला लेट गेम, गैतो आपका और सुपर गैतो ऑन दैट गैतो सुपर रेटरी एंजेला तीनों के कॉम्बो बनेंगे। एंड टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स को डेफिनेटली डैमेज डिश आउट करना पाएगा। जो इनके हीरोस है आप देखेंगे लेट गेम डैमेज वाले हीरोस हैं, एंड फोवियस एंड जो बदान उठाया वो टैंकीनेस तो लाएंगे, पर उनके आइटम्स के आने के बाद ही वो टैंकीनेस आएंगी। एंड बदान आफ्टर नर्फ मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली इन रोम। क्या वो फोवियस रोम जा रहे हैं कि बदान रोम जा रहे हैं? शिनरा आपको क्या लगता है? बदान, जिसने हमने देखा है बदान रोम ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द लोड्स। या मेरे ख्याल से जो है हम बदांग रोम ही जाएंगे अपने थंडर बिल्ड के साथ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सुपर डार्लिंग ने जो है लालटेन की देवी को उठा लिया गया है, तो गेम में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आने वाली है फ्रंट लेनर्स को। और लेकिन उसी के साथ यहाँ पे लूनन को उठाया गया है, काफी अच्छा पिक मैं कहूंगा पीछे से डिश आउट करने के लिए, और जो है यहाँ पे स्कूशी हीरोज को टारगेट करने के लिए, उनको जो है फिनिश ऑफ करने का काफी अच्छा एसेसन जरूर उठाया गया है। लेकिन दिक्कत इनकी बन सकती है, क्योंकि जो पोटेंशियल है फिनी स्पोर्ट्स का वो लेट गेम की तरफ है। अगर गेम अर्ली पे जो है प्रेशर दे के स्नोबॉल हो जाता है, तो सुपर यामा जो है ज्यादा से ज्यादा जल्दी चाहेंगे कि गेम एंड हो जाए, और अगर वो कामयाब रही तो यहाँ पे जो यहाँ पे लेट गेम में उनका जो मैं कहूंगा पोटेंशियल है वो पहुंचने से पहले ही ये हो सकता है कि गेम पहले ही समाप्त हो जाए। वही Phoenix Esports, they are planning for the late game right now, शिनरा। एंड उनकी पूरी होप वो सिसिलियन, एरेथिल एंड नोलन के ऊपर है। नोलन का बर्स्ट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, एंड वो एक ऐसा हीरो, वन ऑफ दोज हीरोज है जो क्लाइंब अप भी करता है, उसे पावर स्पाइक की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पे वो पावर स्पाइक किससे लेगा? एंजेला तो आपकी सेफ खेलेगी, रेंजर के पास अनलिमिटेड डैश है, जोशन आपके उठा के पटकेगी। गैतो एंड लूटस तो आप पकड़ नहीं सकते, तो नोलन अर्ली गेम डैमेज किसे डिस आउट करेगा? आपको लगता है शिनरा? देखिए नोना को जो है ना बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा। वो जो है बाद में आएंगे टीम फाइट पे, जब उनके जो रिसोर्सेज हैं एनिमी टीम के वो सारे जब वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही नोलन जो है कुछ कर पाएंगे। और कुछ ही हीरोज पे जैसे कि आपने कहा कि एंजेला वगैरह जो है काफी ज्यादा सेफ खेलेंगी, तो वही प्लानिंग उनकी रही किस तरह से वो जो है एम्बुश करते हैं इन सब हीरोज को। और इसके साथ हम देखते हैं कि दोनों जो हीरोज है अपने अपने जो खेती बाड़ी की तरफ लग चुके हैं। नोलन को ऑब्वियसली अपने ब्लू बफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको जो है जरूरत पड़ेगी अभी ब्लू बफ की। और उसी के साथ यहाँ पे बदांग गए हैं यहाँ पे उनका जो विजन देने के लिए। तब तक के लिए सनी भाई क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? फर्स्ट ब्लड किस करेंगे चांसेस? देखिए भाई सुपर हुड को देखिए कैसे इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बदान यहाँ पे छुपा हुआ है झाड़ियों के अंदर। एंड बदान विजन तो मिल चुका है कि रेड पे है वो, एंड यहाँ पे जोशिन को भी देखा जाएगा कि कैसे पोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, लीथो पे फाइट कर सकते हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पे लगातार डैमेज पड़ता हुआ फर्स्ट ब्लड ने यहाँ पे बहुत ही इजीली लेके गए घटोकाच अपनी टीम के लिए। उसी के साथ बदांग पीछे से आए थे जरूर हेल्प करने का प्रयास करते हुए, लेकिन अभी तक जो है टीम का
जो खाता है वो खो लिया सुपर यामा की तरफ से। उन्होंने जो है टीम का अपना जो के लिए खाता यहाँ पे खोल चुके हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे देखा जाएगा बदांग ने वॉल जरूर लगाई है, उसके साथ डैमेज देने का प्रयास पोक किया गया है दोनों ही टीमों के द्वारा। और अपने ग्रैंडर यहाँ पे देखते हुए वो जो है डैमेज देने का प्रयास दोबारा करेंगे। पीछे सिसिलियन जरूर आए हैं, छोटा सा डैमेज देके पीछे देंगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन पे हमें देखने को मिल रहा है जूशिन ने नोलन को यहाँ पे मृत्यु के घाट उठा दिया। और उसके साथ यहाँ पे फोबियस बहुत ही दुविधा में पड़ते हुए डबल किल बहुत ही इजिली जो है यहाँ पे मेज उठा के ले जाएंगे अपनी जो जूशिन है। और कहीं ना कहीं ये जो जूशिन है अभी स्नो बॉलिंग करने के लिए रेडी हो चुकी है, और इसी के साथ बार बार जो है दिक्कत बनी रहेगी फीनिक्स स्पोर्ट्स के लिए। बहुत ही उम्दा खेल रही है ये सुपर डार्लिंग। 3 मिनट भी नहीं हो गए हैं, 3 किल्स उठा के बैठी हैं। 2 बार एनिमी का हाइपर को शट डाउन किया इन्होंने, एंड हाइपर अभी जस्ट नाउ लेवल 4 के हैं। एनिमी हाइपर को देखोगे आप सुपर रेटिट को, वो लेवल 5 के हो चुके हैं। टर्टल भी स्पॉन हो चुके हैं, सिसिलियन लेवल 4 के नहीं हो पाए हैं यहाँ पे। एंड जो जोशिन का अभी पावर स्पाइक आएगा वो आई थिंक फीनिक्स स्पोर्ट्स के लिए बहुत ट्रबलसम होने वाला है। 3 किल्स विद इन 3 मिनट्स, गोल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। ऑलरेडी 8500 गोल डिफरेंस देख सकते हैं हम यहाँ पे। टर्टल भी मिला है उनको शिंड्रा। जी जी बिल्कुल सन्नी भाई, जैसा कि मैं कह रहा था ना कि इनको जो है अभी स्नो बॉलिंग मिल चुका है, और इसके साथ ये इसको है मेंटेन करके रखेंगे, और लेट गेम जो है वो आने नहीं देंगे। अगर लेट गेम नहीं आने देंगे तो इजी जो विक्ट्री है वो यामा स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा यहाँ पे। एब्सोल्युटली शिनरैन। यहाँ पे बदान को देखिए, बदान बार बार बुश में छुपने की कोशिश कर रहा है, पर सुपर यामा इनको पता है कि बदान कहाँ पे बैठा होगा। यहाँ पे एंजेला देखिए कितना सेफ खेल रही है। नोलन फार्म करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मिंग स्पीड अभी भी ज़्यादा है नोलन की 2 बार बनने के बाद। दे आर ओनली 1 लेवल बिहाइंड दैट सुपर रेटरी, बट देन अगेन यहाँ पे फंस चुके हैं सिसिलियन। क्या वो बच पाएंगे? 1 HP है, हीलिंग नहीं हो पाया। सिसिलियन इज डाउन। यहाँ पे बदान ने यहाँ पे वॉल पे फंसा के एंजेला ने अल्ट मार के ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ पे बदांग 1 HP पे है, पर अपनी जान बचा के भागेंगे यहाँ से। वो क्या निकल पाएंगे? पर नहीं, जोशिन पीछे से आ रही है। दोनों किल्स लेने का लालच है यहाँ पे सुपर यामा के पास। बदान यहाँ पे थोड़ी सी शील्ड के साथ बचे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पर नहीं बच पाएंगे। पूरा का पूरा टावर दे दिया कि भाई ले लो बदान की जान, ले लो सोना, पर मुझे जिंदा रहने दो। यहाँ पे सिसिलियन पीछे से आ रहा है थोड़ा हेल्प करने के लिए। एंजेला को डाउन किया, दैट वाज अ नाइस अल्ट, नाइस सेकंड स्टिल फ्रॉम आदित्य यहाँ पे। एंड थोड़ा सा वापस तो लिया है इन्होंने, लाइक यू नो वो किल लेके टावर बनाते हैं। पर मेन चीज़ है यहाँ पे एवएम को नहीं मारा गया है शिनरा। एरेथल लेट गेम में सबको मार सकती है विद दैट डैमेज, विद दैट मोबिलिटी। एंड यहाँ पे टॉप लेन पे भी प्रेशर मर रहा है। गैर तो यहाँ पे रेंजी सुपर यामा के थोड़े से प्रेशर पाए। टॉप लेन का सोना भी उठा रहे हैं वहाँ पे रेन फ्रॉम फीनिक्स स्पोर्ट्स। यहाँ बिल्कुल जो है एक साइड की तरफ जो है वहाँ पे देखने को हमें मिला अभी के जो है टॉप लेन पे वहाँ पे उठाएगा, लेकिन बॉटम लेन पे मैं देख रहा हूँ ग्रैंजर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा। वहाँ पे फाइट होने के चांसेस जरूर पूरे लगते हुए, और पोक भी किया गया था उनको, लेकिन ग्रैंजर कहीं ना कहीं सेफ खेलते हुए और दैट सोनाटा का प्रयोग करते हुए, बुशेस को चेक करते हुए, बादाम अभी भी घात लगा के वो छुपे हुए हैं। वो उनको पता है कि किस तरह से यहाँ पे मौका मिलेगा जरूर। वो मौका की तलाश में बादाम अभी भी लगे हुए हैं, झाड़ी में हर जगह छुपते रहते हैं। लेकिन टर्टल महाराज ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये टर्टल फ्री का टर्टल जाएगा सीधा सुपर रेटरी। यहाँ पे अपना रेटरी मार के जो है टर्टल को कर लेंगे प्राप्त। और उसके साथ जो गेम का अभी पड़ाव है काफी अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। उसी के साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नोलन जो गए हैं वो रेड बफ में गए हैं उनके, और उसी के साथ वो मौके को फायदा उठाते हुए पीछे से जो है रेटरी का जो है फार्म वो चुराते हुए। और यहाँ पे फार्म चुराने की बात कही गई तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, चीजों को पीछे हटना पड़ेगा। ग्रैंजर गए हैं बुश के अंदर, एक के बाद एक गदा लगातार जो है यहाँ पे अल्ट का प्रयोग होता हुआ, और उसके साथ धाराशाही हो चुके अपने ग्रैंजर। लेकिन पीछे से लूकास आए हैं बदला लेने के लिए। क्या वो बदला अपना लेने का पूरे कामयाब रहेंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा अल्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे किस तरह उनको मारा गया। और पीछे से जूशिन जिस तरह से डैमेज देती हुई, अभी भी जो है टीम थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। एक गलती यहाँ पे अगर करेंगे तो गेम का पासा कुछ और पलट सकता है। और गेम की अगर बात करें तो बेचारे ग्रैंजर वहां पे अकेले फंसते हुए, लेकिन पीछे से वॉल लगा के एंड करेंगे सीधा। और अपनी जो एंजेला है उनको भेजा गया है यहाँ पे मृत्यु दंड के द्वार, और उसी के साथ संभल के खेलना पड़ेगा। रेटरी जरूर आए हैं यहाँ पे, और अपना जो फार्म दिया गया है। लेकिन देखिए जिस तरह से भी फाइटिंग चल रहा है ना, मैं कहना चाहता हूँ सन्नी भाई यहाँ पे अभी आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, उन्होंने सब गोल्ड भी दे दिया, सब कुछ दे, लेकिन टावर अभी भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं जो लीन का जो मेंटेनेंस है, जो अपनी जो फीनिक्स स्पोर्ट्स है उनका भी काफी अच्छा है।
अपने जो टावर्स है, अपने जो स्तंभ है, वो उनको जाने नहीं दिए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, और काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करती हुई दिख रही है हमको। जो ऑब्जेक्टिव से ऊपर पकड़ है अभी फिनिक्स स्पोर्ट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। 8 भी टावर नहीं दे, 7 मिनट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे फोबियस इज देयर टॉप लेन पे अच्छा गैंग मारा था इन्होंने, पर फर्स्ट चुके थे, बहुत डीप जा चुके थे। एंड फिनिक्स स्पोर्ट्स मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस इस गेम में आ रहे हैं। शिनरा में आपको याद दिला दूं, अपने दर्शकों को याद दिला दूं, उनकी जो कॉम्पोजिशन है, लुक की यहाँ पे बदान का यार देखिए, यहाँ पे एंजेला को मार दिया गया, लूकस को भी मार सकते हैं। एंटी हील है क्या यहाँ पे? एंटी हील नहीं है, 1 HP बदान बचना ट्राई कर रहे थे, 1 HP का उनका हाइपर है जो शिन वॉज सिसिलियन, दोनों मेज एंड में बचे हुए हैं। पर यहाँ पे ड्रेंजर आते हुए, ड्रेंजर तलाश में है, नहीं बचाएंगे अपनी मेज को। पर यहाँ पे देखिए तीसरा टर्टल भी आराम से मिलेगा टीम सुपर यामा को। यहाँ पे फिनिक्स स्पोर्ट्स 8 भी टर्टल जो न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स है उस पर फोकस नहीं किया। तीसरा सिसिलियन का अच्छा ट्राई, आदित्य का अच्छा ट्राई चुराने का, पर नहीं चुरा पाए। एंड यहाँ पे रेंट को दीजिए, वेट मैं पूरा का पूरा गलत बोल रहा था, ये तीसरा टर्टल है, ये फिनिक्स स्पोर्ट्स ने सिक्योर किया यहाँ पे वो मिड पे फाइट लेने के बाद। एंड यहाँ पे पहला टावर जा सकता था बॉटल लेन पे, रेंजर पुशेस बट नो ही नोस कि भाई 4 बंदे हैं वहाँ पे। देखिए कहीं ना कहीं पे उनको भी पता है कि ग्रेंजर के ऊपर जो है पकड़ बनाना बहुत जरूरी रहेगा, तो उनको वो मौका नहीं देना चाहते हैं वो निकलने का। और जिस तरह से अपने टावर के ऊपर जो कंट्रोल बना के रखा है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है बदाम की तरफ से। दोबारा वॉल लगाई है, उनको जो है डैमेज देने का प्रयास जरूर करेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे हल्का प्रयोग किया गया है, एंजेला जरूर आएंगे उनको बचाने के लिए, और उसी के साथ बहुत ही इजीली लिए के जाएंगे शट डाउन, डबल किल इजीली अपने झोली में भरते हुए। पीछे से ट्रेंजर आए हैं यहाँ पे डेड सोनाटा का प्रयोग करते हुए, लेकिन फोबियस चढ़ चुके हैं पीछे ही लगा, और पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन यूजी का प्रयोग करते हुए पकड़े जाएंगे फोबियस अकेले, और उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ पे गट का अच्छा उनके पीछे पड़ चुके हैं, डबल किल बहुत ही इजीली। जिस तरह से अभी पारी चल रही है, और फार्म अभी जो मैं कहूंगा 2K की तरफ से बढ़ता हुआ, मिड का जो स्तंभ है वो भी लेना चाहेंगे, यहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन बदांग वो भी रेडी है, वो कहीं ना कहीं जरूर 2 से 3 बंदे पकड़ना चाहेंगे, लेकिन पीछे से आए हैं और खाली करके लेके गए हैं एंजेला को। क्या ये बेहतरीन नोनन, पता नहीं लगने दिया, एकदम चुपचाप से आए और सीधा एंजेला को उतार दिया है मृत्यु के घाट। और उसी के साथ यहाँ पे जिस तरह का गेम मैं देख रहा हूँ, काफी बेहतरीन कांटे की टक्कर चलती हुई एक के बाद एक। भले ही किल में जो है कम पीछे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उनको पता है कि किस तरह से गेम के मिनियन जो है कंट्रोल करना है, और किस तरह से जो अपनी जो पकड़ है वो बना के रखनी है। एग्जैक्टली शिनरान, यहाँ पे मिड लेन पे मिड फाइट दे सकते हैं। बदान को फिर से झाड़ी के अंदर पकड़ा गया है भाई, जो गेम सेंस है यहाँ पे सुपर यामा की ऑन पॉइंट है। लाइक चौथी बार है कि बदान को मतलब मारने ही नहीं दे रहे अपने सेकंड, उनको पता है बदान का गेम प्ले क्या होने वाला है। आप टाइम की तरफ देखेंगे तो हम मिड लेट गेम की तरफ है, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। डैमेज अभी आएगा सिसिलियन और शिन जीत रहा है यहाँ पे। जो फिनिक्स स्पोर्ट्स का कॉम्पोजिशन था वो लेट गेम वाला था, एंड सुपर यामा यहाँ पे ट्राई करेंगे गेम जल्दी एंड करने का। लॉर्ड इनिशिएट किया है इन्होंने, एंजेला थोड़े ज्यादा ही फ्रंट लाइन में, शायद जो अपने गैथर के ऊपर भरोसा यहाँ पे इर्थिल आ चुकी है, पर नोलन साइड लाइन पुश कर रहे हैं। नोलन ठीक है, साइड लाइन पुश करने ट्राई किया है यहाँ पे, दैट वुड बी अ फ्री लॉर्ड, पर नहीं। लुक एट दैट बदान, यहाँ पे क्या कमबैक था भाई, क्या बदान का अल था। पर देन अगेन यहाँ पे उनकी हाइपर की कमी है, पूरी टीम वाइप आउट हो जाएगी। रेन जी बॉटम लेन पुश कर रहे हैं, 2 टावर लेके चले जाएंगे, ठीक है टावर्स में तो इक्वल है अभी, पर वो जो लॉर्ड मार्च चल रहा है बहुत प्रॉब्लम देने वाला है यहाँ पे टीम फिनिक्स स्पोर्ट्स को। इसी के साथ देखिए ना, स्तंभ जो है मिड का ऑलरेडी जा चुका है, और यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जरूर रही है बचाने के लिए इस मिनियन को, लेकिन इससे पीछे जो एक और मिनियन वेव वो आएंगी, और वो इनहेंस वाली होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मौका एक और रहेगा यहाँ पे मिड स्तंभ का जो है स्तर उनका जो है कम कर सके। और उसके साथ यहाँ पे बदान कोशिश जरूर करेंगे पकड़ने की, यहाँ पे पीछे से जो है आए जरूर है, का प्रयोग किया गया है, और उसी के साथ पीछे हटेंगे, रेटरी मार के पीछे हट गए। उनका प्रयास काफी अच्छा था, मौका करना चाहते थे कि यहाँ पे 1 शॉट पे निकाल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं निकल पाए। और एक तरफ जो है हम आइटमाइजेशन की तरफ नजर डालना चाहेंगे और देखना चाहेंगे यहाँ पे टीमों ने अभी तक क्या क्या बनाया। अगर बात की जाए यहाँ पे काफी अच्छा हमें जो है आइटमाइजेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो है अच्छा खासा उनका जो है मैं कहूंगा डैमेज पोटेंशियल काफी अच्छा बना लिया। एंटी हील उनके पास ऑलरेडी आ चुका है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो थंडर बेल के स्टैक्स भी काफी अच्छे आ चुके हैं गटोकाचा के ऊपर। और दूसरी तरफ से यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे रेन के पास मौका नहीं मिल रहा है, उनको जो है डैमेज पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो कमी जरूर खिलती हुई हमें दिख रही है। जो फार्म की कमी है वो कहीं ना कहीं जरूर डरती हुई दिख रही है।
और अगर गेम फार्म की बात करें, स्वर्ण मुद्राओं की बात करें, तो यहाँ पे अभी देखेंगे जिस तरह से 5K का डिफरेंस ऑलरेडी आता हुआ, ऑलमोस्ट 5K का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है और आगे चल के आ भी जाएगा, जिस तरह से हमें पता है कि गेम की पारी चलती हुई। लेकिन अभी भी एक मौका जरूर रहेगा यहाँ पे, बदाम जो है गेम पलट सकते हैं अगर वो चाहें। अगर वो पकड़ लेते हैं 2 से 3 बंदे एक साथ, तो गेम की पारी कुछ और हो सकती है। लेकिन वही बात है कि क्या वो पारी आने का मौका यहाँ पे सुपर यामा देना चाहेंगी, या फिर जो सुपर यामा है वो इस गेम को जो नेक्स्ट लॉर्ड है उसी के साथ यहाँ पे एंड करने का प्रयास करना चाहेंगे। उसी के साथ यहाँ पे अल्ट मार के गए हैं लूकास, अंदर खत्म करना चाहेंगे यहाँ पे रेंजी को, लेकिन बहुत ही कम एचपी पे रन निकलते हुए वो गए हैं पीछे की साइड। और उसी के साथ यहाँ पे डार्लिंग आते हुए अपने लालडेन से जो है परेशान करना चाहते हैं, उनको डैमेज देने का प्रयास जरूर किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे हटेंगे और अपनी जो लेन्स है वहां पे फार्म करेंगे और कुछ देर में हमारे जो लॉर्ड है वो जरूर आएंगे। और अभी जो अपडेट के बाद हमें पता है कि 18 मिनट से पहले जो है एडवांस लॉर्ड नहीं आता है और अभी जो है 9 शॉट ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। उसके बाद शट किया गया है यहाँ पे लालटीन की देवी को, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। एक एंटी स्क्यूरियस तो उनको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही गायब हो जाएंगी और कहीं क्रूशियल पॉइंट पे अगर ऐसे गायब हो जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर बढ़ सकती है टीम के लिए। और बात की जाए तो यहाँ पे ब्लू बफ पे दोबारा नोलन लगते हुए, वो अपने जो ब्लू बफ है वो ऑलरेडी ले लिया उन्होंने और अभी ये जो फाइट है ये छिड़ने वाली है लॉर्ड की तरफ। लॉर्ड की आराधना की जाएगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले डैमेज देने का प्रयास किया गया है। गटोकाचा के ऊपर पीछे हटना पड़ेगा उनको थोड़ा सा और थोड़ा संभल के खेलने की पारी यहाँ पे रहेगी। और लॉर्ड वो भी आ चुके हैं, गेम उनको भी पता है कि किस तरह से जाएगा। ये जो पारी है, ये जो पासा है, ये लॉर्ड के ऊपर खेला जाएगा सनी भाई। लॉर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं शिंगा, दोनों टीम्स सारी बुशेस के अंदर बैठी हैं। दोनों टीम से पता है जो लॉर्ड इस वक्त जाएगा जिस टीम के पास, वो टीम जीत सकती है। यहाँ पे देखो गया तो बैट लाइन पे आ चुका है, एंजेला का अल्ट आ चुका है लूटर्स के ऊपर। यहाँ पे फोवियस फटे हुए हैं, फोवियस मेल्ट हो चुके हैं, गायब एकदम। एंड यहाँ पे बैक लाइन के ऊपर जा रहे हैं, एथल का भी डैमेज आ रहा है, पर नोलन कहाँ है? बार बार हम देख रहे हैं नोलन टीम फाइट से अलग है, वो टावर पुशिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। गाइस चैट शिनरा भाई, इस गेम का मेन फोकस ही ऑब्जेक्टिव्स है एंड वो न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बैक लाइन से पुश करने ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे लूटर्स आते हुए, यहाँ पे लूटर्स के पास अल्ट नहीं होंगे, पीछे से आ रखे हैं नोलन ने किल निकाला, सिसिलियन ने किल निकाला एंड यहाँ पे टीम सुपर यामा के 2 बंदे ही बचे हैं। एंजेला के पास अल्ट है, क्या लूटर्स घुसेंगे अंदर? नहीं। एंड यहाँ पे लॉर्ड फीनिक्स स्पोर्ट्स ने ले लिया। क्या वो एक थ्रो था शिनरा आपके हिसाब से? देखिए कहीं ना कहीं ओवर एक्सटेंड किया गया फाइट को और उस ओवर एक्सटेंड के चक्कर में अपने जो है किल यहाँ पे गवाए गए। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये जो फाइट है ये किल का नहीं है, ऑब्जेक्टिव का रहेगा। यहाँ पे किल आपकी ज्यादा रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव आपके पास ज्यादा रहेगा, तो भी आपका जो गेम है वो आपके हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हाथ में अभी कुछ नहीं रहेगा एंजेला के, क्योंकि एंजेला को दिया गया है मृत्यु दंड और वो जाएंगी पीछे अपनी जो है रिस्पॉन्स स्क्रीन की तरफ। और काफी अच्छा खेलते हुए यहाँ पे मैं कहूंगा नूनल जो है एक तरह से अपनी भूमिका काफी अच्छी तरह निकालते हुए एक सेशन की। और उसी के साथ लॉर्ड मार्च करता हुआ बॉटम लेन से आता हुआ वो, और इसको डिफेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे जल्दबाजी का कोई मौका नहीं है, शांति से आराम से जो है डिफेंड करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि इतना इनहेंस लॉर्ड नहीं रहेगा, ये काफी इजीली जो है डिफेंड किया जा सकता है ये लॉर्ड। बहुत ही उम्दा डिफेंस किया यहाँ पे सुपर यामा है। 12 मिनट में लॉर्ड डिफेंस करना, जब आपका एंजेला नहीं है, यहाँ पे टावर्स भी नहीं जवाए हैं, मिड लेन का टावर जाता भी है तो क्या दो क्या यहाँ पे टीम फीनिक्स स्पोर्ट्स की यहाँ पे मुझे वही एक गलती लग गई थी, उन्होंने लॉर्ड के साथ मैच नहीं किया। भाई तुमने लॉर्ड उठाया घुसो उसके साथ एंड 8 मिड लेन का टावर भी नहीं जाने दे रहे यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स पर। जो गेम है इन्होंने 15 मिनट तक खींच दिया है, सिसिलियन अभी हर्ट करने लगेगा यहाँ पे। एंड शिनरा आपको क्या लगता है क्या ये जल्दी थी सुपर यामा की तरफ से? पर डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा उम्दा किया इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल। उसी के साथ यहाँ पे नूलन दोबारा से जो घात लगा के वो बैठ चुके हैं यहाँ पे बुश पे। उन्हें पता है कि किस तरह से पीछे से ध्यान नहीं रहेगा, आएंगे और सीधा किल निकालने का प्रयास जरूर किया जाएगा। उसी के साथ ब्लू बफ पे थोड़ी सा जो है तानासुनी हो सकती है, वहां पे कशमकश होती हुई फाइट का जो है रूपांतर यहाँ पर बनता हुआ। लूकस अल्ट के गए हैं अल्ट मार के अंदर और उसी के साथ यहाँ पे अल्ट देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा। एंजेला के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आता हुआ पीछे से आ चुके हैं अनस्टॉपेबल लेके जाते हुए नोलन। उनको पता है कि किनको जहाँ पे जो है
टारगेट करना है। 3 किल ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 14 किल जा सकता है। ट्रिपल किल निकालते हुए यहाँ पे सुपर जो है अपने चीजू जो है बहुत ही इजीली है, और उनके पास मेनियक लेने का मौका भी रहेगा और निकाल लिया जाएगा मेनियक, और इसी के साथ अपनी जो टीम की विक्ट्री है वो भी निकालने का एक मौका रहेगा, क्योंकि कुछ ही देर में जो है शायद से अपने जो मेरे ख्याल से फोबियस आ जाएंगे बचाने के लिए, लेकिन ये टावर कहीं ना कहीं निकाला जा सकता है। और उसी के साथ यहाँ पे फोबियस आते हुए मिड लेन की तरफ अपना जो टावर है बचाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अभी के टाइम पे जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लॉर्ड भी आने वाला है, और पीछे हटके सही यही रहेगा कि अपनी जो बाकी की लेन्स है उनको अंडर कंट्रोल किया जाए, और इसी के साथ ब्लू बफ नहीं देना चाहेंगे यहाँ पर ओनर को। और इसी के साथ ये जो फाइट है ये दोबारा एक बार लॉर्ड के ऊपर छिड़ेगी, और इस बार जो ये लॉर्ड ले जाएगा गेम का पड़ाव उसकी तरफ झुक जाएगा। शिनरा हमें 18 आई थिंक 18 मिनट का लॉट देखने को मिला यहाँ पे, पर नहीं गैतो के ऊपर यहाँ पे जंप किया गया, गैतो की एचपी मेल्ट हो रही है। 3v1 है, हील मारा गया, जंप मार के भागा जाएगा। यहाँ पे एंजेला ने अल्ट किया नहीं इसके ऊपर, ठीक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर चीज हो जिसने अभी मेनियाक लिया था वो शट डाउन हो चुके हैं। एंड यहाँ पे टीम फिनिक्स ई स्पोर्ट्स विल बी टेकिंग दिस लॉर्ड आई थिंक ईजिली। गैतो के पास अल्ट नहीं इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे फोवियस देखो कितना अच्छा जोन आउट कर रहे हैं, चिप डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं पीछे से आदित्य ऑन दैट सिसिलियन। एंड यहाँ पे फ्रंट लेनर की कमी अब महसूस हो रही है, क्योंकि फ्रंट लेनर यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स से मेल्ट हो रहे हैं। एंड ये 17 मिनट का लॉर्ड है, इवॉल्व लॉर्ड नहीं है, पर फिर भी साइड लेन्स पे सुपर विनियंस आने वाले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है ना रेन की हमें जो है तारीफ करनी पड़ेगी। अपने जो लोनन है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो सही समय पे सही टारगेट को जो है सही जगह पे टारगेट करते हैं, और जो है उनका जो किल निकाल लेते हैं, जिसके कारण गेम का प्रभाव जो है दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन पीछे हटते हुए, और अभी उसके साथ जो लॉर्ड है बॉटम लेन से मार्च करता हुआ आएगा, और ये जो पारी रहेगी देखने वाली रहेगी, किस तरह से डिफेंड करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे गए जरूर हैं गटुकाचा अंदर, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा, बहुत ही कम एचपी है उनके पास, पूरे मेल्ट हो चुके हैं सीरियम पीछे से डैमेज देते हुए, और पूरी तरीके से गटुकाचा जो है वो मेल्ट होते हुए वहां पे, माफी चाहूंगा गटुकाचा नहीं, यहाँ पे जो अपने जो हाइपर थे सुपर रेट्री वो वहां पे मारे गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे लॉर्ड बेस पे आता हुआ, एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहा था यहाँ पे गटवाचा की तरफ से एवजी को मारने का, लेकिन नाकामयाब होते हुए उसमें, और गेम थोड़ा सा पलटता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पे। और लॉर्ड अभी भी बेस की तरफ है, और लॉर्ड सीधा एंड कर देंगे बेस को, और ये लॉर्ड जैसे ही एंड किया गया, और ये जो विक्ट्री है अपनी तरफ से खींची। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली नोनल ने, जिस तरह से टारगेट किए गए, जिस तरह से उनकी जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग थी, जो इनका जो माइक्रो था काफी अच्छा था, जिसके कारण ये लोग जीते हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया खेला फिनिक्स स्पोर्ट्स में। अर्ली गेम वो 6-0 से पीछे थे, जोशी ने 3-0 भी अर्ली गेम एडवांटेज निकाला, पर लेट गेम उनका वही हालत हुई जब सिसिलियन का डैमेज आया, रेथिल का डैमेज आया, नोलन साइड लाइन पुश ही पुश किए जा रहे थे। वो 12 मिनट से पहले टीम फाइट्स पे नहीं आया, हमें वो डेटा में भी मिल रहा है। अब अगर टीम फाइट पार्टिसिपेशन देखेगा तो हाइपर की 50% ही है यहाँ पे, 50% for that hyper and late game। यहाँ पे देखिए रेंजी was getting melted, he was switching out his items 18 मिनट में, he was desperate कि भाई कहीं से डैमेज कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे सिसिलियन का ज़्यादा हो रहा है। एंड मुझे यही लगता है यामा स्पोर्ट को गेम जल्दी ख़त्म करना था, पर फिनिक्स स्पोर्ट से करने नहीं दिया। जो ये सेकंड लॉट के दौरान इन्होंने थोड़ा सा मिड लेन पुश करके भटकाया था ना लूटस को, लूटस वो जल्दी अल्ट था, वहीं पर शायद थोड़ी सी मार खा गए। जी बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको पूरा क्रेडिट जो है यहाँ पे रैन को देना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने जो है हर बारी जो है मौके का फायदा उठाया। अगर एक साइड जो है डाउन जा रही है, उन्होंने बोला ठीक है मैं टीम फाइट पे नहीं जा सकता तो मैं दूसरी जगह जाकर टावर निकालूंगा, अगर मैं टावर नहीं निकाल सकता मैं दूसरी साइड जाके लेन क्लियर कर दूंगा कि आप पे जो है कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहे। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने गेम का जो अपने माइक्रो के कारण गेम को जिस तरह से लाए, और लास्ट गेम में जो है सिसिलियन का डैमेज आता हुआ, और वो अपनी जो गेम है लॉर्ड के साथ मार्च करते हुए जो फिनिक्स स्पोर्ट्स है अपनी विक्ट्री को लेके गए हैं। अपने जो विक्ट्री का ध्वज है वो लहरा दिया गया इस मैच में, और इसी के साथ वो जाएंगे आगे। तब तक के लिए मैं हूं आपका आकाश शिंद्रा, मेरे साथ है सनी। देखते रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। On this path that I walk, and if I keep going, I pray I'll be at the top.
Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I
I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do. And ladies and gentlemen, this is Sunny, and we will be starting a match number 3 here. The players are ready in the lobby, and we will be starting with the draft phase as well. So let's go. Draft phase. And let's see, it's between Blazin ML. Okay. Blazin ML. Blazin ML versus Tail Bees. Sheesh. Let's see who wins there. The first ban is there for the day for YouTube. Let's see the bans. Let me see the bans as well. And honestly, I think they should go for a Harriet ban or a Kalia ban here. The teams here, they are wonderful as well, and they are going for a Melissa ban. We hardly see that in the mid lobby as well. A Melissa ban here in the tournament. Honestly, I don't know what they are thinking, but that's a good ban as well. And right now, they should go for Demon Boss. They are going for the Jushin. I think they saw the last match, right? They definitely saw the last match. We do see a Seiyo ban here as well. Okay, that's good for Nine-Tailed Beast. That's from Naruto reference, guys. And a Julian ban as well. That's good. Julian is in meta right now. And both the teams, they haven't banned Kalia. Kalia is allowed in the tournament, guys. Okay, so they can go for a Kalia right now. And let's see the ban. And the final ban. Is it gonna be a Ranger? Is it gonna be a Harriet? Or even a Sicilian? Sicilian, we saw that he is a Manus right now, right? We are gonna see a Harriet ban. That's a lovely ban there. So right now, the team Blazing ML, will they go for a Kalia ban here, an Assassin ban, even a Hayabusa ban? Will work, should work, or a Hylos. They are going for a Badan ban here. Badan has been nerfed badly, and they will be the team Tailed Beast here. Will they go for a Kalia or a Hylos? Like the first pick is theirs. We are gonna see a Sicilian here with the flames. So we already saw in the match 2 what the Sicilian can do, could do. And wait, we are gonna see a Tidwell pick first here from Blazing ML. Honestly, the Tidwell, he can be easily, what do you say, counter by that Akai or even a Digi here, and a first pick. Even a Valentina will do, but then again the mage is there, so they should go for an Akai. Even a Akai Hyper will work here for Tail Beast. Okay. I don't know, the Kalia is still open and the teams are allowed to to pick Kalia after 29 March, and we see a counter here for Sicilian. Farsa, especially in the right hands, is disastrous. The power spike of Farsa is insane. 2 airstrikes and the player is already gone here. And right now they can go for a Digi or an Akai Hyper, but no, we will be seeing Tail Beast going for an Atlas here. These teams, they are picking their tanks, their front liner at first. And both of them are like the CC masters, like Atlas and Tidwell. Those heroes, they they define on their sets. They a perfect sets from these two, and the game is yours, especially in the late game, right? We do see like both the teams, they have the similar press lights. They have a 14 mage, they have a ultimate CC tank, and
we are gonna see Iruthil here the late game. The magic damage is there, the physical damage is there. I won't be shocked if we see a Ranger here as well. For Team Blazing ML, they can go for a Ranger easily, and it will counter mostly Sicilian or Iruthil as well. But Iruthil does counter that. What do you say? Ranger pretty hard, especially in the late game. And yeah, and we do have Silver here as well. Silver, can you take your lead here? Give me a 2 minutes as well. Just take the lead on drafting. All right, sure, why not? Just talking about the draft, I guess a Dicky pick would have been a lot better here because against the Tiger, Your team is and banning. like it's just like the both the ults of Atlas and Tiger just do the same thing, just bringing the enemies together like a CC, like a team CC for themselves. And again, the Darth Vader has decided to go a Mincetar. I don't know if that's a really good pick as of now because there were a lot of beautiful picks open right here. Like a Hilo CXP would have worked really good. Then CCPXP would have worked really well. But I guess Your they're just team going for is the comfort banning. picks for themselves. Talking about the second phase of banning, both the teams now need a good jungler for themselves. So I guess they're going to prioritize to ban out the junglers. Since the Suyo and Julian has been already banned out, banning out more junglers would actually give them a good opening, I guess so, for themselves to go on the comfort draft they actually want to build so far. Uh, and so far, so good for themselves as of now. They need a marksman onto the red side, the team Tail Beast. So let's see how they go for. If they pick a Granger against a Earthel, I'm pretty sure Your Earthel team is wins the banning. lane against a Granger. If I'm not wrong, that's how it is. And the rotation coming in from the blue side, the team Blazing ML, that would be good because the S2 of the Atlas gives him more movement speed as it decays over so far. So that's going to be plus point for themselves. Along with Sicilian, if he just opens the Bat's Feast, he gets the movement speed and the heal for himself. So both the teams, I guess they're trying to go as a late damage composition for themselves. Leila's been banned out. I guess that could be a respect ban or could be a ban Your wasted. team is But banning. let's see how this it goes so far. Again, a jungler banned from the red team, the team Tail Beast. So one more jungler. That's total like four junglers actually. So one more ban is in the hands of Team Blazing ML. Let's see if they ban out one more jungler for themselves because they need jungler right now. Since the alpha is open, the joy is open, the fanny is open. There are a lot of meta junglers open at the point, but it just depends how really well they execute their draft. And looking at the draft, it's like they're just trying to go with the comfort for themselves. It's like totally comfort draft for them. Absolutely, and we Your gonna team see a is Hanabi picking. ban here as well. I'm surprised they didn't ban Ranger. I think they have probably trust in Zoli Molly that he or she can counter Ranger easily. But Ranger here, especially with that Minty and Tidwell, will be a disastrous spread. A Brody here will be good as well. What do you think, Silver, about that? That's true. That's true. You definitely would go good as of now. But like talking about the jungler bans, like see, the Suyo is banned out, the Hanzo is banned, the Haya is banned, the Julian is banned. That leaves the options for Fanny and a Joy, and could potentially be a Alpha as well. But like looking at the draft, Sunny, don't you think this draft is totally revolving around a comfort draft? Absolutely, both the teams like the team Blazing ML and the Tail Beast, they could have. And look at Your we do team see is a Jaw. picking. Wait, Johnson here. Is that a troll plate or we're gonna see a Johnson hyper? If you can remember Silver. And then again about the comfort pit, the team Nine Tail Beast, they could have gone for that Digi pit, a Chai pit, even a Chai hyper would have worked here. Wonderful. But then again, they are not. They are in the comfort zone here. And I don't know, is that a pause here? Well, I don't think so. And as you just said, let's not forget the Johnson from the 3v3 because the Johnson was the actually on the retribution
and he was playing phenomenal on that. But let's be skeptical on that because this is going to be a Your 5v5 team is battle. picking. 3v3 hits different. I know you're hyped up for that, Sunny. Absolutely, and we are gonna see the tank melters here, especially that Alpha with that true damage and that Dragon with his passive here. So it is looking grim from Blazy ML right now. And let's just see what they are going for a I am the Johnson Hyper, moonlight aren't they? that breaks Like through that the Mia is darkness. there. What are we seeing here, Miss Ria? Okay, the Mincy is a hyper here, but then again, still, I'm surprised. What are we seeing here, Silver? This is going to be the first time, especially for me. And honestly, all the best players in ML, I think they can even win this with strategy. Like, especially Mincy, if he got his 2 items, right? The damage will be there, the burst damage, especially with that tutorial set. Okay, I might be looking at the picture here that Blazing ML is painting here. Silver, what do you think about that? Hmm, could be the case, but you just said that Mincy needs just 2 core items. But it's really difficult for him to farm in the early phase because the Alpha is a better jungler than Mincetar actually. And if Alpha manages to get the first 2 turtles, it's actually over for the Mincetar because Alpha's ultimate is the only thing that could be cancelled by Mincetar's King's Calling. But he could still use his first and S1 and S2. That's the only core damage skills for himself typically. So let's see how this goes. And one more thing for Tail Beast, they do have that Sicilian and Irithel for the late game. So even if their alpha fails in the early, they are there to get carried, Welcome right? to Mobile The damage, Legends! Yep. the port, especially the port potential is there, and 5 Mincy, seconds especially till on the the enemy reaches the retribution, doesn't have, battlefield. that Match them! mobility. So once he's taught, he's All there troops to, pull deployed! out the fight. It's either die or win for him in that situation here. And look at that Farsa. He is there for that chip damage. They are helping their Mincy for that blue buff. The team, Blaze and ML are doing the same. Yep, that's right. Like the Gyuki, he's gonna rotate quite faster than the Minsera, the Misria. He has already got his blue buff, so he'll be rotating back to his red buff. You can see the fast rotation coming in from power 1 to 3, 4 onto the Zofty Morphe. And Eleanor, the Mia, she's gonna get the power spike from at least 3 to 4 items until she starts shining in the entire game. So they need to gank that Mia. Oh, Inspire used it up again. Look at the backup coming in from that Shikaku right there. It's probably going to be over for the first blood for that Mia right there. Oh my god, look at the HP of that Irithil, but still, like, she manages to escape from there. That was a close call. That was a Team wonderful hero dance has for been team. slain! Wait, we do see a kill in the mid lane as well. The dragon has fallen, and look at that Mincy on a slither of HP, and he is still taking that blue buff. And then mid lane, the Farsa is going down here as well. Team Tail hero Beast, has they Oh, been are on a slain! roll right now. man, the coordination, like, it's a super fast rotation for an alpha, actually. Like, look at the Mency. He's already got his second buff of the day. And look at the alpha. He has cleared all the jungle from the bot side. Now he's going on to the top side to gang that Johnson because the Johnson is actually the EXP against Yuzong. I guess definitely Yuzong has the upper hand, but he needs to get level 4 for a good turtle contest. Absolutely, and Turtle will be spawning here. The teams are there ready. Mincy, he is quite low on HP, and that will definitely hurt him during the Turtle fight. Look at that. The Johnson might be in trouble. His lane is getting turned. He won't be level 4. This Mincy, he is getting stun locked here. He Team won't be able to hero even has pull up been his ult slain! right now. Yep, that's true. And it's probably over for the side of red team because this turtle has been given to this blue team, the team Blue Blazing. team has So it's slain probably the going to be turtle! hard for that Mincetar to grab all the farm up again. The Johnson with his ult, I guess he's trying to hit the Irithel right there, but he's just going back for the rotation again. Oh my god, he just crashes back again. Mia just comes out of that car right there from that Optimus Prime. Okay, but the Darth Vader is also there to provide some vision and some tankiness to the Mia for a good escape. Absolutely, that Mia was scared for her life. Like you can see, these teams don't trust each other. Like she just jump out, and we do see her, a tank in the bottom lane. The Tidwell is there, Darth Vader. He is there, but no, the Zoli Morphe. Team hero She has been knew slain! that Tidwell was there, and look at that. That was a Yep, perfect again. batter for Team Tailbeast. Hmm.
The Shikaku is looking for a the flicker fatal links again. The Johnson with the result is carrying on probably the Mincetar again. Oh, look at the Kings calling onto that. Ethel grabs onto the Spear of Alpha. Just trying to go back and dish out some damage over to the bad feast right there. But bad impact. It's probably going to be three people for absolutely one person onto the gold lane and the double kill for that Alpha. They could actually grab that bot lane tier 1 turret as well. Absolutely, and Dragon is pushing at the top lane. He is getting that role, and that was such a nice engage here. But Mia was out of that engage, like she barely survived that. And the Sicilian, he is getting fed right now. He is at the 303 at the. It's already been 4 minutes, and the teams they have already died 7 times. The Mincy on a Johnson here. Means he's definitely onto that Johnson. Isubu seems to be in some trouble. Bad feeds used up, but Mystery just trying to dish out some damage. It's beautiful by used up again. Like the Dragon is also there to provide some support onto them. Then again, it's going to be the mega kill for that Sicilian. Again, the next turtle going to be spawning up. But like, look at the Mincitar. He's not even able to get his buffs. He's just totally fixated towards getting all those kills. But he's failing to do it. The Blazing ML, they come with the strategy and they are gonna follow that strategy to their grave right now. Mincy not even able to get his buff, no farms, and look at that damage from Alpha. He is already level 9. They will take this. Like that's a 3 level 3 level gap, Miss Ria. And between Yuki and the turtle, I think that's a free turtle, right? There's no way this means he steals that. No, and look at that Atlas, man. He is. Wait, no, man. They destroyed that Mincy here, and Mincy is down here. The Johnson is there with his trud. Nobody inside that trud. And Silver. My god, the throttle and the field links combination and the spear of Pulpa. There was no escape for that Mensitar again. Oh my god, just crashed onto that Sicilian. He's waiting forward, but he just goes down, and finally a first revenge play coming in from that Johnson. But onto the bot side, some action happening to that Mia goes down over 1 to 2, probably. And I think look at that. That Tidwell might be able to save that tower, yes, but no, that Atlas, he was thinking about that. If he had his ult, they are cutting the lanes. The bottom lane should go down with that Tidwell if that Tidwell does lead. And this Tidwell, he doesn't want to leave. He is like, bro, I'm gonna protect this tower right now, right here. And the towers goes down. Same for the top lane. Look at that Johnson. He is already driving the truck of doom. Who will he let sit? And no. Wait, look at that Atlas, man. He knew. And the sprint has been used, and the Phobias. Oh, wait, no, the Fars are here. And that was a nice hood. Oh, Okay. the three people fatal links again onto the mid side. Mitsria goes on, King Swalling used up again. The Johnson seems to be in some trouble. Mitsria gets the double, and Yuki gets a triple kill over there. It's a payback for themselves, 2 for 3. But again, they could actually grab a kill over the Tiger as well. He's been spotted off by Yuki. Honestly, Blazing ML, they might win this if they have the enough. The farm is the. But then again, Yurito is getting entered here. The dragon is gonna be a menace, especially if he gets, that gank on game, that ambush on game. And look at that. The Tidwell, okay, he survives. The third turtle will be spawning here. The Johnson is already driving. And Oh, close call. But again, like the position of that Atlas is way too good. Chicago is just spotting out the roams and the Johnson every single time as much as he could. So after this third turtle, there could be possibly be the lot for themselves. They need to grab at least the tier 2 from the mid side. The Johnson is just fixated towards driving the car, so he could grab as much kills as possible. But the farm difference is way too much. Shukaku just wants to engage on to the Misria. Fatal Links is probably there. Used up onto the Spear of Alpha as well. King's Calling. There's no point for him to use King's Calling over there. Feathered Airstrike. But still not enough damage to grab any of the kills out of those 5 people. And look at the skin of Alpha. He has managed to grab the 10 kills. And the skin looks very flashy now. Blue team turret has been destroyed. absolutely, it's been 7 minutes, and the team Tail Beast, they already have 17 kills. They have the tower advantage. And look at that Sicilian. Look at that perfect combo for team Tail Beast. I don't know any way out of the silver. Honestly, the pets that were twice dicey as well. And the train from the coordination from Tail Beast is on point as well. That's true. It's just the fact that the team
Tail Beast, I guess they're still trying to learn the meta as of now. Okay, the Johnson dashes onto that Ethel. Look at the Inspire used up again. The Mia grabs a kill over the Zoffy Morphe. Shukaku doesn't have enough backup anymore. The Isobu is still rotating from the mid side over to the bot side, but till he rotates, all the three players, the Darth Vader and the Elecnor, will be just going back into their own turret. And look at that, the Farsa is taking mark here from Dragon, team from hero Alpha, has been from slain. Sicilian. She is not getting a single time to breathe. Like, she just spawned right now. And Mincy, okay, he is farming the lanes, not the, I don't know, not the mobs. I don't know what he's doing. He will be recalling here. Okay, that's a wise move. And the Mia is taking farm as well. Like, despite his team, he is only 1-0 down. And the Johnson is away with that Mia again. That's true. Like I sometimes feel like the Johnson's Optimus Prime is one of the pay to lose skins because you could actually see the heroes riding inside the Johnson's ultimate. So that's actually a disappointment because if you use the normal skin or the legend skin or other skins, you won't actually see the person who's actually riding with the Johnson. So that's the loss for picking as a Optimus Prime skin for themselves. You could see Shukaku; he's just giving a lot of vision to that of that Tigreal, and along with that, the Johnson. I guess Johnson's just been driving very carefully and just calmly. He's just waiting for the moment if he could actually grab a kill over to that Yuriko over there. He just grabs over the Inspire used up again. Will be able to escape, but Yuriko escapes the low HP. That Mia just goes with the ultimate over there. But no, heavy cross performed. That Jockey Muffin grabs a kill over to that Mia again. Power 1, 2, 3. Fatal links over to the two people. Implosion gets the two people right there. He's falling again. Disengage from there. Yuki gets the Lord over there. Again, the Spear of Alpha used around the Mysteria. She will not be able to escape from there. Darth Vader, it's probably going to be over. And Yuki gets the double over there. That's a whole wipe, or that was nearly a whole wipe of Johnson. He barely survives that. The Lord has been slain by tailed beast here, and I think they can end this. That Mia is on that, wind of nature. I don't think so that wind of nature will help you now. Johnson is driving here with that Mia as well. The wind of nature has been popped, but no. They just took a fight inside tower and they won that tail beast. They are on another level right now. Farsa, she just cancelled her ult. Like, she could have played the minions as well, but I think she is afraid here as well. The Lord is marching down the bottom lane. The Mincy, they will try to protect this turret, but I think they should give up the turret, Silver. That's true. That's true. They should actually give up the turret, but the Darth Vader and the Mysteria doesn't want to. Yuki and Yuriko are still there. Shukaku wants to engage the Fatal Links, and the mask is on. You can see the two people Fatal Links again calling used up against the Spear of Alpha and the heavy crossbow from the Zoffy Morphe. Again, the throttle comes in from that Johnson. That Mia still doesn't have enough damage to dish out some damage over to the Yuki, but look how Yuki is chasing the Spear of Alpha and the true damage. Another legendary pops in for Gyuki. Might want to just go for the double over there. Just dives right inside the base. He is totally fearless. Meanwhile, Farsa, she is flying back to her base, not even recalling. I think flying is faster. And there's one cannon minion there. And look at that, Zolly Morphe. She is on a mission. She will be marking out the match. The Tidwell is there. And I think that's a GG. That's a wonderful match, Tail Beast. That was wonderful here. I think they won the third match. And the pits, they were quite, dicey as well. And I don't know, Silver, what went wrong for the team plays in ML? Can you just point it out to me? Oh my god. Like just breaking out the draft would be because like the entire draft, there's no early game in the entire draft of team the blue team, actually the tail beast. They actually needed some frontliners for themselves as well. And if you check out the itemizations of the side of team blue, you could just see like the Johnson is on the magic build. So all the frontline has to do would be done by the Tigreal himself. But he was already getting like gapped and like he was getting damaged by that Alpha's true damage right there. And then again, the Atlas's Fatal Links comes in handy to grab 5 people. The King's Calling, and I guess from Minstetar, the Misria, like she wasn't even fixated towards her own jungle. She was just way too like fixated towards getting the kills, which she actually couldn't. And that's where the gold lead started to rise up, and the team Blazing just got the upper lead in their entire rotation. Yuriko, I'm pretty sure like he did the least amount of work in the team fight, but still he managed to get the turrets into his own lane. He managed to like dominate his lane and defend his turret as well at the end of the game.
When he started to engage, then that was the point where actually he lost his turret. But I guess like the boss, like the team blue, I guess they were too fixated towards the kill and not the objectives. Wisely said, Silver. And I think the team Tail Beast, they played really well. 11 minute is a solid time. And I think with that, we will be taking a short break. We will be inviting the next few teams. And sayonara, guys. We will be back. Worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got Shannon to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got Shannon to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got Shannon to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream. Welcome back, viewers. This is going to be the fourth match for today against the team
Meow Esports taking on Team Holocaust 1942. Let's see how well this goes. As far as we go ahead in the tournament, we have seen quite interesting drafts from the previous teams. So far so good for themselves. And congratulations for the teams who have uh, went ahead by winning the battle against their opponents. Same goes to this match, the fourth match of today. Let's see how this goes so far. So uh, the team Meow Esports, they have the first pick for themselves. Let's see how they execute it. Actually, no, wait a second. It's actually the team Holocaust 1942 actually has the first pick, if I'm not wrong, Sunny. Only love and Your magic Absolutely. team They is are banning. no. everlasting. I think yeah, Holocaust 1942 do have the first pick here. And right now, let's see, Meow Esports. The Sicilian has been banned. Hmm. My That's team true. been itching for a Your real So team I fight. is guess they're banning. just banning out the fast rotation picks for themselves. Kalia is also banned from the Meow Esports again. Like it's like you give one hero and you take back two. So I'm expecting again a Badang ban coming in from either of these teams again, along with a Suyo and a Haya ban. Oh, Your let's see team that my is prediction banning. goes well again. It was actually a Badang ban coming in from Holocaust. A Patan ban, especially after it gets nerfs, silver. I don't think so that's ban worthy. But then again, we do see an Harith opening here. Maybe they are planning to take Harith for themselves. Even a Hylos, even a Matilda. But then again, let's see what Meow Esports will ban here. Kalia ban is a good ban, is a decent ban, especially after it got, confirmed that you can play the tournaments after 29 April. The players are spamming that in the tournament as well. So that's good. Always And on we the do see a way. Matilda ban. Your That's a wonderful team ban is as well. banning. That's true. So they're just not letting the Matilda pick get slide because the Holocaust, since they have the first pick. Again, like a lot of junglers are still open. I guess either of these teams have no fear, to the junglers for the Suyo, Haya, like the Lucas, the Fanny, the Joy. I guess it's just the matter of engaging and the rotation that we have seen so far. The So immortal one but chose to Your let's see how well team extinguish the is this goes. But banning. shadows that okay, plague the this world. Ben Laden has decided to ban out his Suyo. So so the jungler, so the first jungler is actually banned out again. So let's see what the answer the Meow Esports has to give for that Suyo ban. I think Meow Esports, they should go for a Harith ban. They should know the Holocaust 1942. They are priming up for that Harith. Like you can see in their builds, the Badang is there, Seyo is there, and that Sicilian is there. And I think the Holocaust, they will definitely go with that. What do you say that Phobius and Harith here? Could be Phovius. I would have been skeptical on the Phovius, but Harith, I guess so. They could Time actually to ban it drop the out, beat of the but they Your have puppet. team is skipped picking. that leverance of banning out that Harith. Either the Phobius, they got one more jungler out, the Joy, so that opens a lot of possibilities for the team Holocaust to go Hylos, could go Harith, could go Granger. A lot of picks are open right now. It just matters which one they are the most comfortable with. Absolutely, and Team Holocaust here thinking about the first Let's pick, and fight they to our will be heart's going Your with that team is Lucas, picking. a Lucas on a vengeance. So I think it's especially in the XP lane here, we did saw Yama Esports using that Lucas with that red tree on a general role, and it didn't. And they are going for that By thy wish. Zoshin early Guided game by damage. lantern's Okay, light. early game. That's good. And a Yin as well. This is show that Yin to the off throw Holocaust here. Dragon is a good pick, but then again they are going for a Your Halo. team is So the front picking. lane and the mid lane, the potential is there for Team Meow Esports. That's right. So the Hylos has been already picked. That opens the possibility for the team Holocaust to go for a Gato if they actually want to. But I feel like Lucas could actually be a flex pick right here. And if Magic they is want to my go for life. a Gato or maybe like a Harit, and they definitely went for a Harit, I'm not so sure. But oh Your my team god, my is picking. predictions, Sunny. The predictions were on point. They were even teasing us, with that, Beatrice and Your all. team is And a true banning. damage, the true damage king is here, Alpha, man. I think he wants to, he used that skin, especially for that trail effects after 10 end.
Alpha here will definitely suit, especially on that Gato and that Looters. They need to be, shut down with that true damage, especially in the late games. Sir, what's your That's true. command? Your But team I do is feel like banning. Lucas Jungle is a much better option right here because he's able to, CC immune all the stuns and all the engages that pops him onto him after using Unleash the Beast. So that opens a lot of potential for him to gank Your for the team is turtles and more banning. objectives. But let's see how well this goes so far. The team Holocaust, they're banning out the marksman because the team Meow Esports needs the marksman as of now. And since they already have got the Harit for them, that's a good ban right there. And again, if you see, the Fanny is banned from the Meow Esports. Might want to just ban one more jungler because they need jungler as well, unless that Lucas just changes his emblem from Vengeance to Retribution. Absolutely, Silver, and that Fanny ban, I think that might be a target ban as well, and I think they should go with the Hayabusa. Hayabusa here with that mobility will be quite hard for Team Meow Esports to counter here. And honestly, is that a Hayabusa there, or wait, Pain no, a is the body proof there? that I'm Team still is alive. banning. Why will they ban an when they know that Harvit, they already have picked Harvit, right? Other Let's thinking that go. Harvit is in the mid lane, and Your Irithel ban team is a is wise picking. ban. We saw the Irithel damage, the burst damage, especially in the late game here. Well, I do feel like the Brody could actually be the respect band towards them because you can't use a Harith Mm-hmm. in mid lane when it comes to a high ranks. Mm-hmm. But talking about the ban, I do just feel like it's going to be a respect ban towards them. But Harith could actually be a flex pick as well, unless they feel like Harith is going on to the mid lane and they will pick one more marksman again. So that's a good call right there if they're going with their gut feeling. But they're going to be a one more marksman just banned out. So like they banned out Brody, but I feel like they took out a marksman just for themselves to lose their hero pool right there. Absolutely, and Let's hear from the CC, how crowd. could we forget Make about some noise if CC? you have a Like story. the team Meow Esports, they are going for that true damage, and we will be seeing a Chip and a Eve here right now. A Chip or a Farsa here, they are still thinking about that. And let's just talk about that CC. CC with that true damage, with that sustainability after the 12 minutes when she got that items, right? A she or a he? Like, oh wait, never mind. We are not gonna go there. The she will be like unstoppable, unkillable. Harriet will be the only one who will be able Payback to burst him time. down. And let's see, we are going to see a Farsa and a Angela here. The same combo we saw on the Yama Esports match, the match number 2 here. And Silva, what do you think? Man, I mean, I knew it from the start that Lucas is actually going to be the jungler right there, but Your I'm pretty sure team he is didn't change picking. his emblem because he might think that Meow Sports would be watching the stream and they would counter him if he just changes the engines to retribution. So it's just about, oh my god, wait a second. Are we going to see a Carmilla as a jungler? What is happening over here, Sunny? I have no idea. Like they deuced us at the last moment. The Angela was there, but at the like last mini second, they swiped that Carmilla with that jungle. But no, not even jungle. Carmilla is going gold lane here with those spells. Are they teasing us? Wait, what is that? Lucas, he is on sprint, man. What Holojas are they here to troll? Are they playing with their food right now? We are not gonna see any retreat. I think they're just messing with us, Silver, right now. That's definitely true. That's definitely. I take my words back, I've been Sunny. I waiting for expected too a lot long. more from the team, but they're just trying to troll us right there. But it's just a matter of time what they do at the last second. For now, there's no retribution at all. Like the draft has been finalized, so I do feel like the team Holocaust they have a good draft since the Carmel result would give them a good engage and the curse of blood along with the feather day strike from that farsa, and if the gato let's just coordinates and times with the Carmel result, then I don't think so the team esports is going to withstand all that thing. Yeah, there's a retrieve we were talking about. It's a Lucas, a jungle right there for team Holocaust, and let's see. They do have a high-low CC Zuxian carry to melt like the true damage. The team Meow Esports they are focused on the true damage, Silver. Like they know that late game they will be the one melting. And Holocaust they should know about that. They should worry about this. And let's see Welcome to how they Mobile counter this. Legends. That's 5 true. seconds till the Here we enemy are in the land reaches of the dawn. This is the battlefield. fourth match Smash for the them. first day. Taking Holocaust All taking on troops Meow deployed. Esports.
Let's see how the team execute their drafts really well. Sin is like the Sin, the Alpha. He'll be able to farm up way faster than the Lucas because of the true damage and the retribution that he's going to give the damage to the blue buff. And the blue buff is actually more squishy than the red buff right there. So the Ben Laden is actually focusing on to the red buff. He might want to just focus and go to the gold lane. Same goes to the Sin as well. He's going to start his red buff as of now. Samui and Vegeta, they're going to play kind of safe right there. Lantern Flare, she has all of the mana right there. Okay, 9 lives seems to be in some trouble right there. If he gets caught in the Lantern Flare, it's going to be over. Oh my god, look at the damage from the Synchro Vision over to the Nom Nom. He almost lost his life right there. Yeah, both of the teams, they were so aggro here, and we can see level 4 on Alpha soon. And that's the farming difference you are talking about, right, Silver? The Looters, he is still far away, he is still taking his blue buff, and this Alpha is already level 4, and they can catch this Sarut here. That's true. He still has a vengeance if he wants to engage again. The Carmilla and the Farsa still rotating right there. If he gets caught up, it's going to be way too difficult for him to escape. The Farsa again, the Spear of Alpha used up to disengage right there. The Ben, he still doesn't have the ult, the Unleash the Beast right there. Sin, it seems to be in some trouble. First blood for that Kum. Then again, the Ben gets the kill over to them. Unleash the Beast used up inside their own turret. Nom Nom seems to be in some trouble. Farsa just trying to dish out some damage. But look at the HP of the Ben right there. Lantern used it, but look at the HP. He dies, but he makes sure like his enemies died as well. But oh my god, the rotation comes in from the Dino. That was a really good rotation, like leaving his EXP for a top lane gank. That was a really good rotation from Dino. So he can just rotate back to his EXP for this next turtle fight. Absolutely, Dino with that massive big brain rotation there, and he did get rewarded for that. A kill here, he won't be level 4, but the Carmilla is there to, share the HP. Look at that farming scenario from Meow Esports. The farming is on point. The turtle has been started here. Yep, that's true. The Ben doesn't have the Unleash the Beast right there. Neither the Curse of Blood for that Carmilla. But the Feathered Edge Strike used up again. They're trying to dish out some damage right there. Dino just targets the Farsa onto the back lines. You can see the AOG. He's still available if he wants to target some people right there. 1v1 onto the top side. But again, look at the flash combo. AOG used up onto the 3 people. Curse of Blood on 3 people again. Like, Vegeta seems to escape from there. But now that's Sin. But he still goes down because there's no one to give him the follow-up that he actually needs. And it's like 2-2 trade again. So I don't think they actually got from that something. A 2-2 trade, but I think the flow of that battle was in the hands of Holocross. And then again, the Harrowth, he is taking free farm at the top lane. And look at that, he is even poking that. The turtle, nobody's slaying it. The turtle is glad he is alive. And look at that Farsa, that Harrowth zoning out. And Sanji, he was a little late there. His gold laner is already dead, and I think, yeah, the Holocross, wait, look at that, he is like, how dare you kill my gold laner, I'm gonna kill you, bro. But then again, Silver, the turtle is gonna get slain. Yeah, it is gonna get slain. Look at that blood. No, the blood of course didn't get connected to one, and there is nobody to stop this Lucas. He is a menace. He is still going on, man. The CC, will they get greedy here? They shouldn't get greedy here, but no, look at them. They showed the damage. The Farsa ult is there as well. But then again, it's a 3v3 battle. Both of them are at low HP right now. CC, it's a perfect playground for CC here. The ult is there for the CC, and the CC, he walks away from the ult. He could have. Oh my god. He just popped the pathway, but that was absolutely for nothing, just defensively. But he thought he could actually grab the kill over to that Lucas, but still, like, the CC was in a terrible situation right there. Nom again, he kind of gets gapped in 1v2 situation, but the Feathered Edge Strike, the aim of the Sir, it is just too perfect. It's impeccable aim, so that no one escapes it so far. And 9 lives, like, he's trying to dish out some damage again over to that carry. The Dino has also left his lane again for a 4v2 engage on top side. It's again a 5-man engage if we possibly see it so far. That Farsa is spotted out by that Samuel right there. Kum and 9 lives.
They will possibly just engage if they actually want to, but there's no Ben in the team fight. Okay, the pops of the pathway right there. Two people onto the curse of blood. The land will flare again. It's beautiful for Yusuf. It's probably like the five people engaged onto them, but again the Sir escapes the flicker onto them. But again the Unleashed Beast used up. Oh, CC will manage to escape shock of blast again. They look at the HP they have, but they escape with a really low HP, regardless of the fact that they got two people. Two people, and I think Silver, we are forgetting Meow Esports. They have the perfect composition, talent melting composition for the late game. They do have that CC for that true damage. They do have that Alpha for the true damage. Even that carry is a true damage. So the team Holocast, they will be melted pretty soon at the late game. And look at that, the Zoshin, IG Vegeta, he barely survives at that 1 HP, but he will live, you know. But then again, this turtle will be uncontested as the first one. Quite the high loads, he is providing the vision, but there is no backup. They are marking that carry. They know Holocast. They know that carry is going to be a problem for them. They are not letting it breed. Like, it's a 0-3-3 from Nom. Yep, that's not going to let that slide pops up the pathway again from that Nom and the Samui, but they just goes down again. Crimson Beacon used up with the feather airstrike, just trying to dish out some damage over to the back lines. Sin and Vegeta just engages. They disengages from there again back. They have to defend the mid turret. So far, so good for them. But again, there are two people just wants to engage onto the bot side. Actually the mid side. But the Vengeance pops up. Two people onto the Curse of Blood. Spear of Alpha used to just back off from there. How dire this actually the situation was. Nom just trying to give some damage to the Vengeance out of that turret. Kum again, he pops with the Vengeance. There's no actually backup for them. They could actually have used the AOG from the Gato to disengage, but they just left them hanging over there. There was no backup. No backup, and 9 lives. I think he already used 4 of his lives right now. Harith, he is playing quite risky, and look at that. That's another Pokemon 5 on Lucas. He is chasing the damage. What is that damage from Lucas, man? Hylos is there on the back line, but no, this Lucas, he is not going down. He knows his damage is there. Oh my god, look at the basic attack comes in from that Farsa to that Alpha. That was too funny. That was too funny. He should have known. He should have known that he needs to escape, but that was good map awareness from Sir, the Farsa. Like, especially from mages getting that kill from that basic attack, we hardly see that. And this game, Meow Esports, they are playing like good. They are sustaining. But then again, I think the Holocast, they are overextending in some ways. Especially that Harriet, he's already 3-4-5-1 against Nom 1-3-4. Like, you do have the advantage. You do get that perfectly timed gank on that lane. So you shouldn't give those kills, man. Like, you need that power spike here. And look at that CC. I think CC is going to be the MVP. The way she is zoning, her rotations are on point. Hylos, that's a 4-man ult on that Hylos. So they all are slow. The Farsa, she ults, the blood connects 2 people. The Gato will jump. The Alpha will jump also. And look at that. That's a 1-on-1 trade here. Never mind, 1-on-2 trade, man. Lying life. Oh, no way! The shockwave blast comes in from that Lucas and grabs the kill over the Alpha. But again, leave it to the double kill over there. Oh my god, no way! Hell no way. That was absolutely master play coming in from Ben right there. Zaman Force used up, just dishing out some damage over to the Vegeta, but still couldn't get that. But that play from Ben, it was phenomenal. It was phenomenal. Geez, Silver, the confidence, the aggro outplays from Team Holocast, I'm just loving them, man. You can actually see it, and it's Harriet. You can see in Lucas. Lucas knew he's gonna die, but he was like, man, I'm gonna die. I'm gonna take you with me. And we do see a fight here as well. 2 has been connected. The Farsa aerial strikes are there. Gato misses a jump, but not the kill here. And look at that. CC is at the back line. But no, she won't be able to provide the damage. But look at that Harriet. Where are you, that Harriet? He was perfectly positioned, and yeah, he will get the mage as well. The unlimited dashes are there. And Carrie, she is taking farm. Lucas is taking that Lord. That's the first time I've seen that, the blazing goes to the Lord. And that's a free Lord. That's definitely a free Lord. That might be a free tower as well for that carry. Nom, but no, he proceeds to go bad. What is this team? This team is actually crazy. The Holocast, they are playing so good. The Meow Esports, they are trying their best here.
Like the Mao Esports, they're trying their best to, get their farm back up because the carry speedy light wheels need those power spike items for them, like the golden staff, the corrosion scythe, and the DHs. So, yeah, well, she actually got the DHs just now for them. So it should be an easy load as long as the front lines keep doing their job of frontlining the damage, and as long as they don't get caught inside the curse of blood. And that's highly doubtful because the AOG from the evil Doofenshmirtz is possibly like the best engaging possibility for themselves. Again, the Feather Day Strike pops up, just dishing out some damage over to the back lines. They just have to force to back off inside their own fountain to reheal themselves. Like the 9 lives, he's totally alone over there, will be able to just dish out some damage with the Chrono Dash and the Zaman Force. But look at the 4 people onto the top lane, they'll be definitely getting that inhibitor turret for themselves. Sammy just getting a lot of damage over there, and 9 lives will be forced to back off. Actually, there's no one actually been lost in the entire team fight. So this could possibly be very dreadful for themselves if they want to defend this turret right there. Tamil Force used it up again. Like the Dino seems to be some triple killing spree for the 9 lives. Like the pathway pops up again. 2 people in the curse of blood. He still doesn't have the Spear of Alpha. AOG on 2 people. Oh my god. It's possibly over for the team Meow Esports. The team Holocaust has been decided to grab that crystal out of their base, and they're still not even targeting the base as long as they get that ultimate wipeout for themselves. That's a GG right there. That was a wonderful match. Holocaust, they knew the Victory! threat, especially the late game threat. So they were like, we're gonna end the game here. Like, we even gonna play a little bit with you and Meow Esports. That was a wonderful fight. Like, you guys just need to keep your cool. Alpha with a Choto there. That's just sad, bro. Alpha, he played quite well, especially with the ults that he used to, run away. That was like perfectly timed there. And Well, mhm. like if I just break the draft in, if I just want to break the draft and the rotations, then I feel like the Carmilla was the playmaker in every team fight because, like you see, the Curse of Blood, they were just getting a lot stickier with themselves. It felt like they weren't keeping the distance out of the Curse of Blood. If there was no ult of that Carmilla, if it wasn't more than 2 or 3 people, like at least 2 or more than 2 people were caught in every curse of blood as much as she gave it. So I guess Alpha was also one of the people who got caught in the curse of blood, and then the Lucas comes in with his unleash the beast combinations and just bursts out the front line with his flash combos, full stacks, and the Farsa from the back lines, just doing the tap on the ultimate, the Feather Day Strike, and just dishing out a lot of damage. And Harit, he was getting the free farm after the mid game because the carry, she was fixated over towards just getting the turrets and actually not joining the team fights. So that was the playmaker of the entire game. The Carmilla, I think she should be the one to get the MVP if I'm not wrong, Sunny. Don't you think? Don't you think that? She should, especially when she ulted. Like, she was like the minimum of 2 people were getting stuck on her ult, and then we can see even the Gather was jumping on her. Right, the perfect synergy was there, and I think with that we will be taking a short break, guys. We will be back with match number 5, so stay tuned.
on this path that I walk, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich, cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't. And hello, beautiful people. We are back, and with me, we do have Bell, a awesome caster. He is back in the scene, and this is gonna be our match number 5 between Soul Society and Internal Torment. Players are getting ready, and let's see, Bell. Can you just introduce yourself to our stream? Are you excited about these matches? Um, I'm quite excited in the matches, and I'm back from the scene after almost 4 5 months, and I'll try my best. I'll hope you guys don't get disappointed from me. And Sunny, you gotta cover up my back, bro. Absolutely no issues, and we are just waiting for the players to get in ready up. They are asking for the win. 1 minute, and we do see a Soul Society here versus Internal Torment. These two teams, they are new in the scene, and they are already, they are already good. Like they are climbing up the stairs, especially the Soul Society. They are the ones riding, and we might see some troll strategies from them, or even new strategies that they will bring on for the scene here. And yeah, the teams are ready. Let us just shift towards the drafting phase here in a second, and let's see what the draft are. They are they gonna pick for that meta picks here or nothing? And we do see it's but the Internal Torment does have the first pick here. And Bell, what do you think they will ban here? Uh, Considering they have the first pick, so they might go for Suyu, that I forgot the name. Suyu, Joy, Granger, picks like that. So they gotta ban some heroes there that hardly counters them. Absolutely. I think they can go for Kyle as well if they go for a Harriet. But then again, what will they ban? They can even ban a Sicilian here. Sicilian is a menace, especially in the late game here.
Internal torment. Don't torment us and just My tell tail's us. been itching They for a are going Your for team is Australia. Okay, banning. that's great. That's great. And we do have here Jatin. What will he ban? Will he go for a Sir, Harriet? But no, a what's your Fanny command? ban. Your team is That might be banning. a respected ban here, Bell. Yeah, Fanny's quite a dangerous hero, and the users know how to use it. So you gotta respect the I user am and not the ban the only one ban. Your bound by team And there is go out the instinct. banning. phobias. So we can expect a joy or a Harry from the side of A ch- uh, internal torment. Especially a Joy, Harriet, Time or to even a drop the Moscow. beat of the You Your know team that clash. Is banning. Povius is especially good in countering these because of his passive, and we see a Joy ban. The Team Soul Society did know what's up. Okay, they Yeah, are on the lead. They know like why they are the enemies will be banned in that 4 years. And let's see the third ban here. Well, yeah, as you say, they're trying to read the strategy of eternal torment, banning the joy. Now we got to see a Your Kato team ban is coming from the banning. side of eternal torment. What can their strategies be? Let's fight to our heart's no content. idea. And we Your see a team is Lucas ban picking. here. We see a Jato ban. I think the team internal torment they should be going for that. I think a Moscow here, but Moochie Whiskey. Harriet is still open. Harriet would be wonderful instead of a Moscow. Let's just see what they pick. Even if they go for a Harriet, the Harriet is unbeatable. Like especially with these two items, the damage already exceeds 1k, and that too in the mid game. And we Butterflies will be seeing born a in Your Zoshin team is first wait. picking. Okay, Guided by lantern's light. Uh, Am and along with more that, the than a team, weapon. the red team has decided to go for Julian, and The we might see Immortal a One Suyo here. chose me to vanquish Your the As we team said, evil is that picking. there was plague this this Suyo and world. Julian. What can I say about this combo? I haven't seen it much. two What do you think about the assassins. picks? Yeah, that is two assassins for Team Soul Society. Julian and Asaya. Like the early game, late Magic is game is my there, and there's life. the Harriet we were talking about. Bell, Team Soul Society. Will they be able to counter this Harriet? Counter this Zoshin? That Zoshin man, the CC from Zoshin is on point. But I don't think so. Honestly, it's gonna be enough. And a Your Batang team here. is The picking. Wombo combo is there, and the team internal torment. They are looking spicy right now. They are looking tough right now. The team Soul Society. They need answers for that Badang and that Harvith here. That's quite a deadly combo Only coming from the love sides of and Eternal light Your Torment. are team is And banning. in everlasting. reply, Soul Society has begun up the Sicilian. With that, just their late game becomes extremely strong. Uh, but looking at that, they should have picked the Granger instead of Julian. It might get banned from the sides of Eternal Torment in the upcoming ban. Might be, and they are looking for what will they ban? Especially here, they do have the gold lane, and they will go for a Your Hayabusa. team is Hayabusa is a banning. good ban as well. They know that Sicilian he needs that safe Experience space, the and the youth Granger Your is banned team here. of They is don't Ren. banning. want that poking, especially in the late game. With the ban of Granger, what other Your marksman do you team think is this Team Soul banning. Society will be willing to pick? Honestly, Bell, I think they will be going for that. What is that hero, man? Brody. They will be going for that Brody. Brody is good, but then Your again, a team is Moscow ban. picking. Okay, Monster here would have done a purple and two pearl here. A Valentina pick will be Yeah, disastrous here for Team Soul Society. What do you think about that, Bell? yeah, it can be really dangerous for them, but about the marksman pick, as you said, Brody lacks the mobility, and here in the team of Eternal Torment, you can see a Badang and a Zushin, which can be really bad for Brody. So they should think for other options. What do you think would be a perfect pick from them? I don't know. They are hovering above Bruno, but no, they are Your keeping team that is MM pip picking. for the last. And they will be going for a Hylos. Hylos is good. And do we see a Johnson here from Internal Torment? Marv, bliss guy, he is playing this tournament. And we might see. But no, he is going for that Franco. They are planning for that CC. Like they want to shut down even that Julian or you know what, a Sayo here. But a Chow Roam will do as well. That's a lovely sting as well. And we are gonna see a Fedrin Hyper. The CC is gonna be there for team internals here.
I don't Always know. on the Matilda Yeah, way. was we might open see. as well. The shield Yeah, is gonna be insane. yeah, we wanna see a Matilda plus pattern combo, which is quite a deadly combo if in its own. How do you think the team Soul Society will think to counter it? Your team The is carries in. often Honestly, can go for it, but the carry lacks range. hmm I was thinking about Carrie, but they did show Need us the some stitches? Melissa. I Melissa can here. help. I don't know. Melissa here might get easily counter from Harrod, especially in the early game when the Yeah, tank is there with that Melissa, Matilda, and Batang. Even with that Zoshin, the uh, CC provided will be, disastrous. yeah. Talking about Brody, Melissa also lacks the mobility. As hmm a mobility, she only for catch, and the Zushin will be really problem for Melissa. They gotta watch out for that. I see. The drafting is here. The teams are loading, and it is looking quite grim for Team Society here. They do have a Sicilian for the late game. They do have a Julian. These two heroes are the one that can, turn the tides of the game. But yet, again, the team internal tournament, they do have that Matilda unlimited shield. They do have that Harriet who gets the shield, and a Fredrin, a solid perfect tank, and that Welcome Badang to who, Mobile shows, Legends! the setups are there for the Badang as well. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Yeah, the Smash Badang them! will be really big problem for the team of Soul All Society. And units deployed! talking of the team of Soul Society, they turn like a front line. They got a Hylos, but he's the only one doing the front line, and they don't got a setter in their team, which can be a problem for the team of Soul Society. What would you like to say about that? Absolutely, and look at that. They are zoning out that Sicilian. That Sicilian won't be even level 2, I think. Yeah, the 1 minion is already down. The Matilda is there with that quantum charge. They are not letting that Soul Society mid laner farm here. He already. Will he be able to level 2 here? Are they going to take all the farms? So that's a perfect execution. The Hyper is here as well. And the Hyper executes, and the Matilda, he uses her statin still. That was perfect. That was perfectly done. But the Hyper, he lost that, effective farming speed. The Sicilian, he went to the base here. And at the bottom, we can see Melissa, Bosses, Harriet here. Harriet is having some trouble, but he needs those items. A single item here in the tide will be changed. And the Sicilian is not even level 2 here on that Hisoka string. That's a lovely Uh, stain here. Silent is really zoning. Silent is really zoning. Which can be a problem for Sicilian. As we know, Sicilian is really a scaly hero. If he don't get those minions and as well as his tag, he'll be a really be First weak in the blood! later stages of the game. And as we're talking in the bot lane, the Harris got taken down by the Suyu. That was a fabulous first blood, especially on the Harriet. I think the Team Soul Society, the ranking is good. I don't know what. And look at that, that Joshin, she really survives at 1 HP. But then again, that Zoltrat, he is on level 4. The Badan setup was this Hylos might be in trouble. Jatin, will you be able to live? I don't think so. You can. There's the smack. And there he Team goes hero down. The has been Sicilian. slain! He's the one struggling right now. He isn't even level 2. It's already 3 minutes. The turtle has been spawned. And look at that Julian on that SP lane. He's not even level 4. They cannot steal this turtle. I don't Blue think so team they has can. And slain that's the a free turtle! turtle. That's a good turtle for internal tournament. They want more. They are going towards that rub buff as well. And look at that Sicilian. That's on level 2. That is so sad, man. Yeah, even their Roma and Sicilian both are in level 2. Looking at the FPs, uh, the Hylos have more FP than the Sicilian, which is really sad for the side of Soul Society. Uh, and as the first turtle went to the side of Eternal Torment, it was a free turtle as uh, team Soul Society is quite behind in XP, which is really bad for them. The Sicilian is surely behind on XP and on gold as well. He needs to take that mid lane, but no. That Silent and that Blaze, they are janking that. They are securing that mid lane. They are blocking that minions there perfectly. And Sicilian, he will struggle. And that Hyper, he is trying his hard. And at the same time, Julian at the top lane, he is doing just fine. He's doing even good against that, Badan. But let's see for how long Zoltrak is here.
He is inside the enemy jungle. They fight for that little buff there, but no. And look at that. That Blaze is on 1 HP there. He survives. That's the perfectly timed. You know the experience, and the top lane gank is here, Bell. The Julian, he might die here, and they are recalling Mocha Wiki here. That was a nice recall. That was a nice kill, and the Tyler Jevon, he was not there on the time there. But we might see a gank here at Poon 1 here. But then again, the team is not there. Matilda might be coming here. She is still zoning out the mid lane. And Badan here, he is starting the lane here as well. At the top side, we can see the team Eternal Torment contesting the red buff. It will be really hard for the team Soul Society to take the red. And as we said, the team Eternal Torment has secured the red buff from Z's. It The will red be buff. really hard from Mhm. yeah, it will be really hard for the team Soul Society to come back from here. Yeah, And looking even. at the turtle, it Mhm. should be theoretically it should be a free turtle for the side of Eternal Torment. Oh, that was a nice ult from Hilo, slowing three people down. The Melissa is there. Will they fight? But no, the Batan, he punches them, corners them, and the team fight is here inside the enemy jungle. Joshin, he pulls two of them back. Where are you going? You're not going. You're going straight to the respawning time. And now, after killing two people, after, wasting his red tree, they are here taking the second turtle for team. Internal Torment is here. And I don't know, honestly, this Uh, Harriet is taking farm as well. Julian might be able to take the top lane turret here with 2 hits. The Badang is here though. But no, that Julian, he hit that Badang. He should have hit in the turret. The Hylos is here. Jatin, he is trying to protect the turret, but no, he will go down and the turret will go down here as well. Man, this is looking tough for Soul Society here. Especially for the Sicilian, his gold is not even 2000 here. yeah, even the XP gap compared to the mage from the size of Eternal Torment, it's 2 level gap between them, and now it's 3 level gap. It's really hard for the Sicilian to come back from here. And even there is a more than 1.5k goal lead between them. In the top side, we can see a preparation for the gang towards G's. Oh, that was a perfect initiation from Zoltrat. He uses his second skill. And look at that. The Badang is gone. That's a 4-man. Oh, that's a solo Zoltrat there. And they survive the Team Soul Society. That was a good gun. But no, the mid lane is here. Matilda is here. Will they lose their hyper? No, that was perfect from Soul Society. Perfectly executed. But then again at the bot lane, the Melissa, the computer, he is having a hard time. He will die. He will go to the respawn area right now. And that was a good trade, I think, from Internal Torment. Their MM is getting fed here. And he will even go in rear. He doesn't fear that Halos. He doesn't fear the enemy hyper here. He is already buff. And the Matilda is there for the support. The Matilda is the reason he is so confident. And right now, the hyper Sayo is that Badang is there for a perfect combo, perfect set on that high lows. And the Internal Torment, they are gonna win this. I think the combos, the experience is showing. And this poor Sicilian, he might die as well inside the tower. But no, the Joshin might pull it up, but no, he doesn't. But on the meanwhile, this Jeez man, he is pushing with all of his, power here, Bell. Yeah, I can say right now he's the hope from the side of Soul Society. As other than him, all of the other members of their team is suffering quite a bit. Um, he's coming, but Zoltrack saw him and is chasing him. Um, with that, his whole track, he didn't manage to catch the Julian, and Julian has escaped from the top. Four members of the team, Eternal Torment is approaching G's. Will he be taken down? The team Internal Torment, they are inside the tower. They are not even respecting the tower. Barely any HP lost on them. That was a 5-man gap on the top lane. The Sicilian, I don't think so there is any contribution from him. He is having a tough game here. Sayo here is fighting, but I don't know. The taunt is there. I think that's a wipe, but that should be a wipe. Or will they live? Sicilian is the last one alive, and that's a 5-man gang here. At the same time, the computer, he is pushing the bottom lane. He is trying to get that goal, and I think the team Internal Torment,
They should focus on this MM right now. They will, and they will be checking the bush as well. Zoltra, that's what experience speaks for, right? He knew where they will be. The map presence was there. That was wonderful from Zoltra. And yeah, the MM will lose her life, and they have started the Lord here as well. Look at that. Jeez, he is recalling. The both of them are recalling. Wait, why are they recalling here? Yeah, the first lord is being taken down from the sides of eternal torment. The game for the sides of Soul Society isn't going very well. There is 8k goal difference between the two teams. From here, it will be really hard thing to come back. Uh, what do you think they should do to keep their team getting farmed? As long as they have Sicilian, they have G's on that Julian, I think they do have a fighting chance, and they just have to stick to turrets, right? The turrets are your friend. Especially even the Lord is not that strong, especially it's gonna be a level 1 squad. They are too deep, they are out farm, and look at that damage here from Harriet. Look at that damage from Joshin. The Sicilian is dead again. The Sicilian isn't farm. That was a bad dash from that Hyper CU as well. And that's a 2v5 defense here. They the team Internal Torment, they have already, start fighting here. And with that, the lords will be marching the mid-inhabitor turret of the Soul Society. And with this turret soon gonna be taken down. Only 3 members standing, and with that, the Sicilian have spawned back. It's a 4-man base defense. Will they successfully manage to defend the base? I don't know. That's a double kill for that. Will that be a maniac? No, that Harriet he steals that, and the base lord is there as well. Internal Torment. They have won this match. They have definitely won match. And what a lovely match from them. Victory! Yeah, it was quite a pleasurable match to watch a Fadrin after such a long time. Yeah. He's quite my favorite hero. Like you know how good he is, taking Yeah. damage and dealing such a great amount of damage. That's really lovely to see him. I'm surprised that Zoshin is the MVP here. Like I thought the Harriet or that Zoltrat on that Fedrin will be, but Zoshin was the powerhouse, I guess. And if you look at that, the Sicilian, he already got like 15k damage. The troll was 3000, and that too at 10-minute mark here. I think that was where they, fall down as a team. They needed that Sicilian to get farm, especially when the turtle spawned. Like the Sicilian was level 2, and I think with that we will be taking a short break. Internal Torment, thank you for taking part, thank you for winning, and we will see you in round 2 here. And with that, we will be taking a short break.
mention, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once a minute. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once a minute. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once a minute. I'm moving forward, I mentioned, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walk, and if I keep going I pray I'll be at the top. Okay. All right. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Odyssey Cup, hosted by none other than your Ryuga Esports. This is the sixth match that is happening right now. And, it was quite a short break, but we are back. Yes, bringing you another two of the teams which will be battling it out
in this best of one series, the teams are none other than RTN and Team RX Inferno in the house with us. On to the caster's desk, though. This is your caster Zero again, welcoming you, and alongside with me, it will be none other than Belle. Uh, So yes, so the draft phase has already started, and Belle, the new hero Kalea, she has been quite the OP hero. So of course we are gonna be seeing her on the ban. And aside from Kalea, what other bans are you expecting from both the teams? uh, about the Kalia is quite a menace. Her tsunami slash is really a thing. And other than her, we Your saw a team is Hayabusa banning. ban. What do you think the strategies can be banning the Hayabusa? Mm-hmm. Hayabusa, one of the most, I would say, one of the most annoying assassins right now, one of the top tier assassins, Your team aside is from the banning. Suyo and the Joy. He's kind of picked quite a lot as well as the top top tier assassins right now. So I guess that is the reason why Hayabusa is banned. And the Badang ban quite relatable as well, because he got his fist wall, Your fist team crack, is banning. and the fist combo is quite hard for you to counter, given that you've got the knockbacks and everything. So, but yes, if we look at the side of Your Team team is RTN right banning. now, they are banning out almost all of the jungle heroes right now. I guess they are quite confident they can deal with any of the other heroes except for the ones in the jungle lane. Yeah, they have banned Your team all is three of their banning. bans have been used for junglers. Uh, that's something to watch out for them. What do you think? What can be their strategy? Let's fight to our Mm-hmm. I heart's would Your say team is picking. they might just they're just limiting the hero pool for side of Only Team love RX and Inferno right knowledge now. are So everlasting. that's why three of the ban slots was dedicated towards the jungle lane, and might be targeting the jungler of Team RX Inferno. So that might be one of the strategy. And the other thing is they can go for the joy which they left out open. So might be Some like stitches? Your how team they is are picking. just keeping the hero pool quite limited so that they are able to counter almost all the heroes out. Yeah. Talking about the team, RTN, they have picked Melissa. So that that can be something I'm really confused about. As Harry and Granger, both of the meta marksmen are open. That's something I have to think about. What do you think? Mm-hmm. That Melissa pick, yes. So there has been quite the craze about Melissa going around because of her damage and attack speed, or even if you build attack speed or crit build, it is kind of quite a craze for Melissa having around. So I guess they are kind of following that. But yes, as you said, the Harriet and Granger were Your both team left is open. picking. But in this case, I guess they are gonna be going for the, what do you call it? Mastery Franco. over meta or something of that sort. But again, the Franco I can understand. You got the hook, you got the suppress, but Yeah. the Kagura, the Kagura, I don't. She's been on the bottom of the tier list for quite a long time because of her Yes. utility, maybe. So that Kagura, I guess it is one of the comfort picks. But then again, I don't quite see it working out, given that Team RX Inferno, they are already lacking a solid CC or AoE CC right there. Yes, sir. As you say, the Kagura is really out of Your matter right now, team but is she got a banning. huge burst damage, which can be really a problem for Melissa. As you know, Melissa actually needs the Inspire to deal some damage. So she can't take any other spells, which is really problematic for her. Even the Iron Hook can pull her, and she wouldn't have a Purify to purify that. That's Your really a thing. team is And banning. from the side of RTN, they have decided to ban Brody. What do you think about that?
Oh yes, Brody. Yes, very. I would say a very wise band because he has been rising onto the marksman Your leaderboard team is here banned. and there. I have seen him picked out his burst damages quite a lot, and since his foreswing and backswing timing has been reduced, he has been getting picked out quite a lot. So yes, they might be having some issues around that broadly, but I would like to talk about that Sicilian pick. Some people they might have trouble against going against the Your team Sicilian, is banned. might go easy on them, but it kind of depends on the user and the whole team because for a Sicilian to be to be a problem, you have to have the farm, you have to have the stacks. So if your team has a Sicilian and your team is doing good, then of course the Sicilian is going to be dominating the whole game. But if you choke down Sicilian in the early Your phases of the team game, is defeated. then he won't be able to give you any problem. So yeah, as far as I know, having a Sicilian, it is quite good as it gives the late game security for you. But again, you have to be careful because as a Sicilian, you don't have much of the mobility. So you have got to rely on to your EXP, on to your tank to protect you and your positioning as well. Yes, as you said, this Sicilian is quite a Your menace in the team is late game, but in taken. early he can be zoned out. Just like we saw in the previous matches, where the Sicilian got really zoned out, due to which he could not farm for most of the matches. Due to which he was nothing else than a big minion walking around the map, which for which team RTN has to watch out. And to play Sicilian, you really need to position yourself well. Uh, that's something they gotta watch out for. Yes, you have to watch it out. And, there has been quite a craze about Lucas Jungle because of his recent buffs. So Lucas on the EXP quite good, but on the jungle, I think it will work quite Your much team better. lost. Then again, a Granger will be going against a Melissa. It is gonna be a range versus range right now, and both have the mobility with their own second skills, the blink, the dash. They will be needing quite a lot to dodge each other's, skills, bullets, and needles. And of course, the last pick Alucard coming in, quite unusual, but still going against an alpha. Both of them have the life steal. So it is gonna be depending on which team gets more farm, gets the initiation, so that they can have the early game snowball. On to the last pick though, they will be going out for the tank, which might be a solid CZ. A Tigreal paired with a Khalid paired with an Alpha, three of them, quite a great combo if you have the full team communication. So it is gonna be quite a menace, but it is going to be depending on the execution because the draft has already finished and it is looking quite good for both the teams. As you said, the last pick Alucard really surprised me as I don't even see him much in the pro leagues as well as the tournaments I have been watching recently. Uh, that should be a problem. Or if the team is if they know how to work with Alucard, it will be really nice. But I really doubt that Alucard pick. What do you think? They will them be able to manage that Alucard? Alucard, yes, quite skeptical about that pick. But if you have mastery over that Alucard, that maybe you might be able to come on top. But it depends on how good of an Alucard user you are. It is kind of the mastery Welcome over to meta Mobile play for the side Legends. of Team RX Inferno right now. 5 seconds While for the till side the of enemy Team reaches the battlefield. RTN, Smash they them. do have quite the All meta troops deployed. composition aside from that Melissa. So it should work out well in their favor. The draft is looking really great, but overall, it is gonna be depending on how both the teams are gonna be positioning each other out. Ziu, would you like to talk about the talent, the emblem and the talent Alpha has taken? He didn't took the season hunter, instead took the festival blood. He's going for more spellbound rather than fast jungle player, which can be a problem as
there might be some jungle experience gap later on in the match. Do you think it will really matter? With a hero which deals the true damage, I don't think Season Hunter is gonna be having quite much of an impact. Even me myself, I don't really go a Season Hunter on that alpha because he already got the true damage and his skill cooldowns are quite low. So he should be able to spam the skills out again and again. He might need a little bit more tankiness, a bit more spell vamp because he is a fighter. He's gonna be sustaining quite a lot. So that might be also the reason, but while we were talking, the first blood already going on to the side of RX Inferno, the marksman from Team RD and falling down. But both the teams, they are looking for a fight. Look at that. Alucard will be going in against that Alpha, flickering out Tigreal. Alpha is quite in the middle. His pair of Alpha does get used up, but both the teams, they do not have their full resources used ready, so they have to back down and the turtle is about to spawn. So back to my question, Bell. But the teams, they have their rotation quite well. What do you think about the rotation of the tank from Team RX Inferno so far? The rotation from the team RX Inferno, it was really fast rotation going to the goal lane, picking up the Melissa. As I talked about, she lacks mobility, and which was the cause of her death. She lacked the mobility. Uh, it was quite a nice decision for the tank of RX to Mm-hmm. pick up her. Mm-hmm. Yep, definitely. So the turtle fight, the turtle around the fight, Oreo did win the turtle out. But look at all of the damage getting dished out by Lucas right there. Four people down already for the side of Team RTN. Might be the fifth one. Melissa running for her life, but she won't be able to win. That is a triple kill in the hands of Lucas right there. So Lucas, he is quite dominating it with his beast form. Once he reaches his level 4, he is gonna be the one dominating the whole match. So you have got to watch out for that Lucas and quite pay attention to him. But then again, he is the EXP, so you have to give attention to both the side lanes. But again, a Khalid against a Lucas. Lucas is definitely having his time of his life farming around here and there. As you said, on the top line, on the other hand, on the top line, on the goal lane, there already has been created such a huge amount of 1K goal lead over the Melissa to the hands of Granger, which can be really sad for her. She might get poked out, and Granger, after he gets level 4, he starts to poke, and Mm-hmm. that's really something. His poke is really dangerous. Yes, definitely. He's gonna be popping up with the Rhapsody and that's another, but look at that. The implosion coming from Tigro. Kagura goes in with her same umbrella, takes a kill onto Dum Dum on that Melissa right now. The damage she is dishing out is pairing quite well. And look at that, still more going for Oreo right. They're taking one more kill. Two people down already for the side of Team RTN. And if we see the score is a 9-2 right now with a goal lead of 4K onto the side of Team RX Atlanta. So their positioning has been really well. They're engaged same as well, and the skill timings, everyone has their own backup. So they are getting the early game snowball right now, but that was a bad decision from Alucard. He will be getting taken down. He did go alone in that enemy jungle, trying to invade. But he could have went around with his teammates, but that was an opportunity for the side of Team RTN to take the kill. But once again, Tigreal gets taken out in the hands of Kagura right there. Lily doing a really great job proving me wrong on that Kagura, but still won't be dishing out around the turtle as Team RTN takes the turtle this time. So, well, overall, looking at the match right now, what do you have to say about Team RX Inferno? Team RX Inferno, they're really working well with their strategy. They're doing their best. And they should watch out for the Sicilian. As the late game approaches, her his damage will be really high. That's something the team RX Inferno got to watch out for.
Yep, definitely. So, another fight might be brewing onto the top lane, but look at that. Lily, she did get caught up in the hands of Sicilian with his sanguine claws. The conceal does get used up, but look at Xavier poking around with the Death Sonata and the Rhapsody. So he is gonna be stacking up on his Capriccio stacks, and he's gonna be dishing out quite a lot of damage. But look at the mid lane, though there might be a fight. Oreo is the first one to get taken down, and still they are going. Lucas, he does use up his Sacred Beast form right now. Kagura goes for the backup, takes the kill onto Ace Saitama on that Tigreal. But once again, 2 pack 1966, getting the kill, getting the double kill, getting the trade that is desperately needed for the side of Team RTN right now still goes in. That is the shutdown triple, almost a triple kill for the side of RTN. So they are fighting back, and this time, since Alpha is getting all the farm, he is kind of dominating against Oreo. Even Alucard, look at that Raging Sandstorm coming in. Alucard does get taken out once again. A great backup coming in from Khalid. But then again, Lily on that Kagura just bursting Khalid out like it's nothing. So Team RTN, they are fighting back, and it. I personally I feel like Team RS Inferno, they kind of messed up around the time where that Alucard was invading that jungle. So that was the time where they kind of messed up. So yeah, I suppose they kind of need to watch out now for Team RTN. Yes, you, as you said, that was absolutely right. And now we can see in the top lane, Tigreal using the implosion on two members. But it was on no use. That backup from his team was really late. And with that, the team RTN wouldn't be managed to get anything with the implosion. Yep, definitely. They did use up their resources, but they won't be dishing out much damage. But still, Selau gets taken down. That was quite unfortunate for him. Goes down to Xavier, gets Dum Dum gets away with that slither of HP, but still, Tupac tries to go in with these pair of Alpha. He won't be dishing out much damage because Alucard he will be able to escape. So looking at the map, the turret is definitely in the side of Team RTN right now. Map control as well. So RX Inferno, they were winning the early game, but still objective wise, they are definitely losing all those to Team RTN right now. Yeah, as you said, not only objective was even the goal lead, which was on the favor of RX in the early game, and it was really a good amount of goal lead. But now it's completely gone. Rather, it's on the side of RTN, and with that, the fight will be starting. There goes the implosion as well as the Oh, dragon hunting, but we yeah. wouldn't be able to get anything. There goes down the Alucard. Next will be the Khalid from the side of RX. No, I mean RTN. And with that, the Franco will also get taken down from the side of RX Inferno. Okay. That was a really great implosion coming in from Tigreal. All of them were together. They were able to take out almost all of the side of Team RX Inferno right there. Granger trying to do some much damage here, and there. Suzuran taking all the damage. Bat's Feast does get used up. Granger will be escaping, but is he trying to go back? Okay, he does not land the Death Sonata onto Tigreal, but still with the marksman now for the side of Team RX Inferno, the Lord might be onto the side of Team RTN right now, but still, look at that Franco trying to push out a flicker hook, but he will be failing that, and Tupac takes the Lord with these with no contest whatsoever. So RX Inferno, they are losing their foothold. They were dominating the early game, but to look at that from mid to late, it is Team RTN that is getting their hold right now. Lucas is not being able to do anything, but look at the back line. Tira going in with the three-man implosion, and with that, three people already down for the side of Team RS Inferno right there. So Tigreal balancing his out, balancing his implosion out really well with that flicker. Team RS Inferno, they did not see that coming at all, so they have to lose their own life around overall for the side of RTN.
They are doing really great. The Lord will be marching in from the top lane, going towards the side of RX Inferno right now. So, well, what do you think Team RX Inferno should be doing so that they have a chance to have a comeback in the game? Uh, right now at this position, they're really at bad situation. The RX Inferno, Kellyo got a land an impressive iron hook to change the game. Other than this, I don't see much hope. The Granger can be quite helpful, but we have to watch out for the Sicilian. We can burst the Granger with Oh, three shots. okay. The Hiron hook from Killiu that was on point, but he was not able. He did not have any backup, so he had to use up his resources as well. The Winter Crown staying with it, but yes, that was an overall great Iron hook coming in from Celio, but he does miss it out. If he had landed that one, then it would have been a guaranteed kill. His teammates are waiting around, but still overall, Team RX Inferno, they kind of need to be together, have their positioning out well. So, if we talk about the team composition for the side of Team RTN, they have the Tigreal, they have the Khalid, they have the Alpha, three of the solid AoE CCs coming towards them. But if we take a look at RX Inferno, yes, they do have a lot of damage, a lot of burst heroes, but still they kind of lack that AoE CC, right? Celio, he does have the suppressed, but it is still a single hit target, a single target skill. So that I feel like that is something where you are lacking around in the team form. Maybe an Atlas would have worked, or maybe a Gatotkacha, but they kind of need to wrap their hands around the whole combo because it is quite not working out. Maybe wait for the Tigreal to land his implosion so that they can all catch each other together. But still, overall, they are having quite a bit of the struggle. Yes, you as you said, the Franco have separation. So separation is the superior form of crowd control among all the other crowd controls. But you have to see that RTX they got quite a lot of CC to cancel that separation. Either Yes. Franco will have to use the frozen or his separation will be Oh my cancelled. god. Oh my goodness, the flicker explosion coming in from Tigreal yet again. Oreo gets taken down, but still, the team RTN, they have all five of their members surviving. Lord coming in from the from the bottom lane still goes for the Stagnant Claws. Purify will be baited out from Xavier. Although Xavier on that Granger he is doing quite well, he is not able to find any of the opportunity to have a full team wipeout. Same with Lily as well. She does have a lot of damage, but as a mage, you kind of need to have a CC skill, just like Sicilian or maybe a Vexana. But still, look at that. So dishing out the Winter Crown as well. The Lord is in the base, going against the all of the members for Aris Inferno. Almost a full wipeout, and with that, the crystal does get taken down in the side for the side of Team RTN. Yes, the team RTN has secured their victory against the team RX. Though both of team had good drafts, but the draft of RTN that was really easy to pull off, and which has been really easily pulled off, due to which the team RX got eliminated from the match. Hmm. Yes, definitely. Though this, So yeah, if I have to talk about the draft, the Lucas, Granger, and Alucard, they were quite acceptable. But instead of that Franco, if they had gone for maybe a high loss or maybe a Gatot Kacha, or if you are not comfortable, then you can still go for maybe a Atlas or Tigreal as well. It all works out. Same with the Kagura pick. There were Farsa, there was a Luoi, and quite a Vexana as well. So those three were quite the other choices that you could have gotten as well. But the team composition, it did not work out for their side. Early game, it was definitely working out. But as the game progresses from the mid to late, you have to think about the sustain that comes in from your opponent.
the amount of CC that your opponent can deal with you, the amount of damage that your opponent can dish out. So you have to keep those factors in consideration when taking a hero in a tournament, because it is gonna be a 5v5. You are gonna be battling it out. It is where the team synergy shines the most. So that is also one of the reasons that Kagura is not quite picked out in tournaments, right? So yes, she did have a lot of hero damage. She does 29%, but if we look, she does not have the solid CC that was needed very, very desperately for the side of Team RX Inferno. So yes, it was quite a great match, but then again, I do hope RX Inferno they come back more stronger. And congratulations to Team RTN for advancing towards the next round. But this was the match. This is the end of the match, and we will be bringing you more matches. So don't go anywhere, and we will be taking a short break. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons. I've had a lot of blessings. My friends know I'm
my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining to Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once I'm in it, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे ओडिसी कप के एक नए टूर्नामेंट में। और इसी के साथ जो ये टीम फाइट होने वाला है यहाँ पे जेपलिंग वर्सेस TWBD की जो है ये स्क्वाड है दोनों की, यहाँ पे लड़ेगी आपस में। मैं हूँ आपका कास्टर शिनरा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे को कास्टर जय भाई। जानेंगे उनसे। तो जय भाई, क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा? और शिंदा भाई नमस्कार। जो यहाँ पे मैच जो है शिंदा भाई, यहाँ पे मैच तो अच्छा देखने की उम्मीद से आए हैं। अच्छा कास्टिंग, अच्छा मैच, तड़कता भड़कता मैच देखने को मिलेगा। इससे अच्छा और क्या उम्मीद कर सकता है? ये दोनों टीम नए हैं, हमने तो पहले इनके मैच मैंने तो नहीं देखा शिंदा भाई। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सा जो मैच हमें प्रदर्शन का जो यहाँ पे मौका देंगे, जो पीक और बैन होगा, जो भी होगा, बढ़िया बढ़िया सब चीजें देखने को मिले हमें शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे ड्राफ्टिंग फेज पे, लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे जो है एक मेंबर्स से उनके अभी तक आए नहीं है, ये इस लॉबी से बाहर निकल गए थे शायद, इसलिए उनको जो है दोबारा से बुलाया जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो टीम है ब्लू साइड पे रहेगी हमारी जेपलिंग की टीम, और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो TWBD उनकी साइड पे रहा जाएगा। और जो फर्स्ट पिक है यहाँ पे मिला जाएगा, जो टीम है वो देखना पड़ेगा किसी वाली टीम की तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जय भाई आपको बताना चाहता हूँ कि गेम का जो ये जाता हुआ अक्सर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन गेम्स हमें मैचेस अभी चलते हुए जो आए हैं बहुत ही अच्छी तरह देखने को मिले हैं। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग फेज की तरफ। ड्राफ्टिंग फेज की तरफ यहाँ पे आते हुए हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट बैन। क्या लगता है जय भाई? अपनी थोड़ी दिव्य दृष्टि डालिए और ऑडियंस को बताइए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लुकस को बैन किया जाएगा। जी शिंदा भाई, लुकास यहाँ पे जो है वो हमें बैन देखने को मिल तो गया, लेकिन इसी के साथ जो है मुझे लगता है अगर यहाँ पे जो टीम से नई नई टीम से अगर उसमें से भी कोई फैनी प्लेयर हमें देखने को मिले तो शायद फैनी बैन की मौका देखने को मिल सकता है, तो फैनी पीक होने की देखने को मौका मिल सकता है। इसका जूशिन जो है हम भूल कर सकते हैं, हमारे 900 साल की जो STG भाई की बूढ़ी अम्मा जूशिन, उनको भी बैन जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है शिंदा भाई। 900 साल की बूढ़ी अम्मा, हमें पता है कि इस तरह से मैच पे गदर मचा के रखती है, और इसी तरह से जो गदर है यहाँ पे मचता हुआ देखने से पहले। लेकिन यहाँ पे बैन किया जाएगा फैनी को। नहीं मौका चाहते हैं कि फैनी आए इस गेम में, और उनको जो है बैन कर दिया गया है, तो केबल्स का प्रयोग हमें इस गेम में नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे दूसरे बैन की तरफ जाते हुए अपने जो है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बैन किया गया है चुलबुली रानी, हमारी जो जॉय है उनको बैन कर दिया गया है। तो इस मैच में हमें जो है इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स का प्रयोग होते हुए नहीं दिखेगा जय भाई। और दूसरा अगर बैन करे तो क्या जवाबी हमला आपको लगता है यहाँ पे कि जवाबी हमला क्या रहेगा? जी यहाँ पे जुशिन तो मुझे लगता है भाई बैन कर दो, क्योंकि जुशिन बहुत ही ज्यादा जो है ब्रोकन हीरो अभी राइट नाउ। इसी के साथ भाई यहाँ पे जो बैन है उसमें आप सुयू को भी बैन कर सकते हो, क्योंकि सुयू का स्नोबॉलिंग आपको पता है शिंदा भाई, हम लोगों ने काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, काफी बड़े बड़े मैचेस में भी जो टीम्स है उनके मैचेस में सुनियो की वो अगर जो सुयू है उनको जो मौका मिलता है तो किस तरीके से वो पोक और बास्ट डैमेज दे सकते हैं सुयू। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा यहाँ पे देखिए जिस तरह से उड़न खटोला को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, मटिल्डा जो है इनको मैं उड़न खटोला बुलाता हूँ, जिस तरह से उड़ के ले जाती है और अपने टीममेट्स को भी उड़ा के ले जाती है साथ में, तो इनको मैं उड़न खटोला बुलाना पसंद करता हूँ। लेकिन उनको जो है अभी बैन कर दिया गया है, तो इस गेम में नहीं देखने को मिलेंगे।
उसी के साथ तीसरा बैन लूक, क्या बैन करेंगे अपनी टीम के लिए जो सहायक बनेगा इस मैच में? क्या वो यहाँ पे होंगे हमारे सिसिलियन चमगादड़ के देवता, या फिर बैन किया जाएगा लालटेन की देवी को और नाम लेते ही आगमन होता हुआ उनको भेज दिया जाएगा बैन सेक्शन में? और दूसरी तरफ से जो है यहाँ पे ग्रिम, वो शायद थोड़ा सोच विचार करके यहाँ पे बैन करेंगे जेपलिन की तरफ से। क्या ही बैन हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे? शायद हायाबुसा जो है बैन होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि हायाबुसा अच्छे खासे जो बैकलाइन काउंटर हीरो माने जाते हैं, उनके शेडो जो है निंजा शेडो स्किल की वजह से। तो यहाँ पे शायद हायाबुसा या ग्रेंजर को भी बैन ऑप्शन में रखा जा सकता है। ग्रेंजर आजकल जो डैमेज दे रहे हैं थोड़ा बहुत नर्फ होने के बाद भी, तो ऐसा लगता नहीं कि उनको सच में कोई नर्फ मिला है, क्योंकि ग्रेंजर अकेले काफी होते हैं मैक्सिमम हीरोज की तरफ। इसके साथ जो आपके चमकादड़ वाले भैया है उनको बैन कर दिया गया है शिंडा भाई। जी हाँ बिल्कुल, लेट गेम में कोई भी एडवांटेज नहीं देना चाहते हैं, और इसी के साथ केलिया को यहाँ पे लॉक इन कर दिया गया है, और उसी के साथ साथ 2 मेटा पिक्स के चांसेस जरूर रहेंगे यहाँ पे। अपने जो टीम्स हैं जेपलिन के, उनके पास जो है वो मैचेस जरूर रहेगा यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे देखने को मिला एरिथ को लॉक इन करने का प्रयास जरूर करेंगे वहां पे, और उसी के साथ दूसरा पिक शायद ग्रेंजर या फिर कुछ और जाना जाएगा। क्या लगता है आपको यहाँ पे जय भाई की केलिया के ट्रेड ऑफ में यहाँ पे आपको जो है गोल्ड लेन पे हैरिथ को ट्रेड ऑफ किया गया है, तो किस तरह का ट्रेड है यहाँ पे? ये क्या महंगा साबित हो सकता है या फिर एक कहूंगा मैं एक किफायती ट्रेड है कि एक तरीके से कहा जाए तो? यहाँ पे जो ट्रेड है मैं कहना चाहूंगा अच्छा खासा ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे सुयू को देखिए जिस तरह से पिक किया गया, हरित को जो गोल्डन पे भेजा जाएगा, हरित को अगर फार्म मिलता है तो उनको जो धमासान जो यूथ को देखने को मिलेगा, उसमें जो हरित का जो डोमिनेट देखने को मिलता है अगर प्रॉपर हरित प्लेयर हुए तो यहाँ पे गेम इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। इसी के साथ हरित का काउंटर जो हमारे भाले वाले भैया शिंडा भाई विंचेस्टर को जो यहाँ पे होवर किया जाए, शायद पिक करेंगे क्योंकि विंचेस्टर जो है ऑलमोस्ट कोई भी डैशर को काउंटर कर सकता है। इसी के साथ मेलिसा भी होवर किया जा रहा है। मेलिसा अच्छा है लेकिन नार्कोटिक को उतना कुछ पिक रेट उतना है नहीं उनका, लेकिन फिर भी उनको मेलिसा जो है ले लिया गया, वो लॉन्ग डिस्टेंस से डैमेज कर सकते हैं। लेकिन है अगर यहाँ पे जो हमारे भाले वाले भैया को ले लेते तो शायद थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे TWBT को। जी हाँ बिल्कुल, दिखाया जरूर गया था, लेकिन अभी जो है जूड़ा की तरफ से उठाया गया है यहाँ पे घोड़ा मानव को। और कहना चाहता हूँ आगे बहुत ही अच्छे जो है फ्रंट लेनर उठा लिए गए हैं, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी इन लोगों को पीछे से डैमेज देने के लिए। जो है लॉन्ग रेंज हीरोज उनकी कमी अभी रहेगी। जो मेलेसा वो ऑलरेडी पिक कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेज कौन सा पिक करेंगे? क्या लगता है आपको यहाँ पे किस तरह का मेज काम ने जो है यहाँ पे सामने काम आ सकता है अगेंस्ट हैरिथ? यहाँ पे गोल्डन पे वो जरूर रहेंगे, तो उनको भी जो है थोड़ा सा ऐसा कौन सा एमएम है जो हेल्प करेगा इन लोगों को? यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा शिंडा भाई जो है बादांग हमारे जो है, आई थिंक बादांग यहाँ पे अभी तक बैन नहीं हुए। बादांग पिक भी अच्छा खासा साबित हो सकता है। उनके जो दीवार होता है उसके बाद हैरिथ का जो जामान फोर्स जो है उसका यूज हमें देखने को मौका मिल सकता है। लेकिन इसका जो सीसी है यो वाली क्वीन हमारी, उनको ले लिया गया शिंडा भाई। तो पिक तो मैं कहना चाहूंगा जेपलिन की तरफ से जो पिक्स है वो बहुत ही शानदार पिक्स देखने को मिला है। हाइलोस मेलिसा भी अच्छा है, साथ में केलिया भी उनको मिला हुआ है। तो दोनों तरफ की टीम की पिक देखने को तो उम्मीद तो जग रहा है कि एक अच्छा खासा जो घमासान फाइट हमें देखने को मिलेगा। बस सुई जो है, सुई को अर्ली गेम जो है स्नोबॉलिंग और डैमेज का मौका ना मिले तो। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सीसी पिक किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। अपनी योयो से ये मारेंगे घोड़े को, चाहे चाबुक की तरह जिस तरह से प्रयोग करेंगे वो वहां पे उनको जरूर वहां पे दंड दिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से काउंटर भी है सीसी जो है हाइलोस का, और काफी ज्यादा अच्छा खासा सस्टेन डैमेज कर लेती है, खुद को सस्टेन भी कर लेती है, साथ के साथ कंटिन्यूस डैमेज भी देती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा हारी है वो एक तरह से जो झुकाव है गेम का वो थोड़ा सा यहाँ पे जेपलिन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मेरे को अभी। और उसी के साथ यहाँ पे क्या लगता है जय भाई, यहाँ पे जो है हायाबुसा बैन किया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे दूसरी तरफ से देखा जाए तो फारसा भी बैन किया है। काफी अच्छा बैन मैं कहूंगा, क्योंकि अभी मेज पिक रहता था जो जेपलिन की तरफ से है, तो नहीं चाहते कि फारसा दी जाए उनको। बहुत ही अच्छा बैन, क्योंकि रिसेंट में हमने देखा कि फारसा कितना अच्छा चल रही है रिसेंटली टूर्नामेंट्स वगैरह पे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, पार्शा बैन जो है बहुत ही अच्छा बैन। उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस पर अल्टीमेट फेयर स्ट्राइक का यूज होता है वो बहुत ही जो है अभी घातक साबित हो रहा है। वो जो है एनिमीज की जो लाइफ है एचपी बहुत कम कर सकता है, कम एचपी के एनिमी उनको बस्ट आउट कर सकते हैं। तो पार्शा बैन बहुत ही अच्छा था। उसके साथ जो यहाँ पे हमारे हायाबुसा को बैन किया गया है, जो हमारे निंजा हाथोड़ी वाले भैया
वो बहुत ही अच्छा बैंड मैं बोलना चाहूंगा जैप की तरफ से भी, जेपलिन की तरफ से भी, क्योंकि हायाबुसा पीछे जाके काउंटर कर सकते हैं, अच्छा खासा जो स्किल यूज करके वो पुश भी कर सकते हैं। इसके बाद गाटो का एओजी का मौका देखने को मिलेगा नहीं, और डीगी जो है, डीगी को यहाँ पे ओवर किया जा रहा है, लेकिन डीगी के लिए सीसी हीरोज जो है, ऐसा केलिया जो है, केलिया सीसी हीरोज में काउंट होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसके लिए सिर्फ डीगी को पिक करना शायद थोड़ा भारी ना पड़ जाए जेपलिन को, मेरे को ऐसा लग रहा है शिंदा भाई। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो है डिग्री पिक करना इतना सामान्य रूप से मैं कहूँगा ज़्यादा समझदारी वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए आगे जो है अच्छे से एक तरीके से मैं कहूँगा डैमेज सोख पाए, और थोड़ा-सा जो उनका लेन है, लाइनअप है, वो थोड़ा-सा जो है डिस्टर्ब कर पाए, तो एक अच्छा-सा यहाँ पे टैंक लेने की ज़रूरत रहेगी। शायद अकाई अकाई एक अच्छा पिक हो सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह से अगर चार्ज करते हुए ये आगे आएँगे, तो उनको अपनी टीम से दूर भटकाने के लिए कैसा रहेगा यहाँ पे अकाई पिक? क्या लगता है आपको जय भाई? क्या यहाँ पे अकाई देखने को मिलेगा, या फिर जाएंगे वो टिग्रेल की तरफ? मैं बस बोलने वाला था कि टिग्रियल भी बहुत अच्छा पिक हो सकता है शिंदा भाई यहाँ पे, क्योंकि टिग्रियल की तरफ जाएंगे तो उनका जो सीसी है वो चलता फिरता सीसी है, जैसे एनिमी को पुश करते हैं फिर अल्टी एक्सप्लोजन का यूज करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया पिक टिग्रियल का यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ जो है हमारे यहाँ पे बर्फ की रानी जो है अरोड़ा, उनको दिखाया जा रहा है, जो कर देते सब एनिमी को फ्रीज, और उनका जो सीसी स्किल है बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ जो उनका डेथ इम्यूनिटी है वो फ्रीज करके खुद को हील करती है, वो भी बहुत ही बढ़िया पिक कहना चाहूंगा। मोबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन इन रिटर्न उनका जो सीसी कैपेसिटी है बहुत ही ज्यादा है। इसका जो लिंक हमारे दीवार पर चढ़ते हुए भैया है वो ले लिया गया, लेकिन लिंक को यहाँ पर संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो फेनी की तरफ जो है एनर्जी डिपेंडेंट हीरो है, तो बाफ नहीं मिला तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसका कड़ी था जो बेस्ट मैच है हमारे, वो उसको ले लिया गया शिमरा भाई। कड़ीता पिक वैसे ज्यादातर देखने को भी मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने पिक के ऊपर, अपने कंफर्ट पिक के ऊपर, तो शायद यहाँ पे उसी के साथ जाना चाहते हैं। अरोरा को जो है स्वैप करके यहाँ पे कड़ीता को पिक किया गया है, और दूसरी साइड से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कार्मिला के ऊपर ओवर किया जा रहा है जैपलिन की तरफ से। काफी अच्छा पिक रहेगा अगर कार्मिला पिक करते हैं वो, और एक अच्छा खासा मौका रह सकता है, या फिर टिग्रेल के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार किया जा रहा है, अभी भी टीम से विमर्श वगैरह लिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको, या तो अकाई या तो जो है टिग्रेल अच्छे पिक रहेंगे, और शायद वो इस समय जो है टिग्रेल हमारे हथौड़े वाले जो है ना दोस्त, उनके उनके साथ जाना चाहते हैं। इनका हथौड़ा कितनी जोर से पड़ेगा वो तो गेम के अंदर ही पता लगेगा, किस तरह का ये इम्प्लोजन है, किस तरह का ये धमाका कर पाएंगे उसमें। क्या वो है 3-4 बंदे एक साथ अपने इम्प्लोजन के अंदर ले पाएंगे, या फिर धाराशायी हो जाएंगे। और ये हमारे जो टिग्रेल भाई है भैया, ये बहुत ही मैं कहता हूँ, ये इनका एक लाइन बहुत फेमस है जय भाई, ये कहते हैं कि ब्रेव मैन नेवर हाइड इन द बुश, बट ज्यादातर यही सबसे ज्यादा बुश पे रहते हैं घात लगा के। जी बिल्कुल, लेकिन शिंदा भाई मैं एक बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, यहाँ पे टिग्रियल तो ले लिया गया है, जो पिछले 3 लाइनअप थे 3 हीरोज की पिक के हिसाब से टिग्रियल सही था, लेकिन जैसे कादिता और यहाँ पे जो है आपका लिंक को ले लिया गया है, तो कादिता और लिंक जो है वो अपने आरटी का यूज करते हुए सीसी जो टिग्रियल का सीसी है एक्सप्लोजन की, उनसे जो इम्यूनिटी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहने को देखने को मिलेगा हमें शिंदा भाई। देखिए, जहां तक मेरे को लगता है कि जो टिग्रेल है वो अपना जो अल्ट है लास्ट में सबसे एंड में जो है रिसोर्सेज यूज करना चाहेंगे, ना कि पहले, हालांकि जो है स्टार्टिंग में यूज किया जाए। मेन फोकस जो है यहाँ पे एरिथ के ऊपर रहेगा, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेन डैमेज डीलर पीछे से वही रहेंगे जो रिसोर्सेज वेस्ट होने के बाद पीछे से जो है लाइनअप गायब करने की क्षमता रखते हैं इस गेम में। और लेकिन उसी के साथ देवी और सज्जनों, हम आते हुए लैंड ऑफ डॉन की तरफ, दोनों ही खिलाड़ी अपने योद्धा जाएंगे सीधा अपने जो है यहाँ पे खेती बाड़ी की तरफ, खेती बाड़ी करते हुए, और उसी के साथ टिग्रेल जी वो थोड़ा सा मुआयना लेते हुए कि किस तरफ जो है एनिमीज वगैरह रहेंगे। और लिंग जो है अपने यहाँ पे रेड बफ से स्टार्ट करते हुए वो जाएंगे फिर ब्लू बफ की तरफ। तो शायद हो सकता है कि अपने जो गोल्ड लेन में वहां पे हमें थोड़ी सी कशमकश देखने को मिले, लेकिन उससे पहले मिड लेन पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने को मिला है पोक करने का प्रयास रहेगा। लिंग गए हैं ब्लू बफ की तरफ और अपना ब्लू बफ लेते हुए, तो और ये साथ यहाँ पे उनके ब्लू बफ को बचाने के लिए पूरी पूरी टीम यहाँ पे तैयार है उनके जंगल में हेल्प कराती हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पे शायद जो हमें पहला फर्स्ट ब्लड जो है वो देखने की मौका मिल सकता है, जिस तरीके से टीम गैदर कर रही है एक दूसरे का, देखिए किस तरह से हाइलोस जो है पोक कर रहे हैं यहाँ पे गैदर हो रही टीम, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लड की मौका देखने को मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे हाइलोस है उनको जो थोड़ा सा लाइफ काम है तो यहाँ पे उनको भागना पड़ेगा। लिंक जो दीवार पर चढ़ते हुए फुल लेवल 4 चुका है, उनका जो अल्टीमेट यूज किया, फर्स्ट ब्लड जो यहाँ पे मिल चुका है मेलिसा को, बहुत ही अच्छा खासा जो मैं बोलना चाहूँ गेम प्रदर्शन। इसके साथ जो लिंक ने बदला लेते हुए यहाँ पे जो है वैलेंटिना को जो है कर दिया धराशायी, उनको जाना पड़ेगा बेस की तरफ वापस शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल, हाइलाइट्स के ऊपर सारी जो है
स्किल्स वगैरह वेस्ट करी और उसके साथ जो है कहीं ना कहीं उसका मुआवजा उनको जो है भुगतना पड़ा, उनको जो है मृत्युदंड मिला गया वहां पे। अब खामखा स्टार्टिंग में अपने 2 किल गवाए, थोड़ा सा पेशेंस रख के खेलना चाहिए था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे सीसी हमें डोमिनेट करती हुई दिख रही है बॉटम लेन पे और केलिया को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला है अभी तक। और लेवल 4 यहाँ पे होने का प्रयास जरूर करेंगे सीसी, क्योंकि टर्टल महाराज अपने जो है कुछ देर में पधारते हुए और उसी के साथ नाम लेते ही अपने जो कछुआ महाराज है वो आ चुके हैं। और इसी कछुआ महाराज के साथ एक और फाइट इमर्ज होते हुए हमें जरूर दिखेगी यहाँ पे। जय भाई। जी शिंदा भाई, यहाँ पे एक चीज देखना, लिंक जो है टाइटल पे कोई फोकस कम कर रहे हो, जो है थोड़ा सा मास्टर जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो अगर फार्मिंग जो है थोड़ा सा लेवल हाई होता है सुयू से, तो उनका जो रेट्रीब्यूशन का डैमेज है वो इसका एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया था लेवल 5 हो गया, जाके सुयू जो है उनका लेवल 4 है। यहाँ पे देखिए सुयू पीछे की तरफ आ गया, टिग्रियल आए थे फ्लिकर मारते, इसके साथ जैसे मैंने कहा था लिंक ने जो है टर्टल कचुआ को ले लिया। एक अच्छा खासा फाइटिंग हुआ, टिग्रियल का अल्टीमेट का यूज हो चुका है यार। यहाँ पे देख किस तरीके से कैरियर को जो है सुयू का किल मिला। तो यहाँ पे जो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे तो टफ हो सकता है सिचुएशन यहाँ पे जो है टीम्स के लिए कितना हार्ड। जो यहाँ पे किल जो है, किल के बाद किल जो यहाँ पे हमें लास्ट देखने को मिल रहा है शिंदा भाई। जी हाँ, किल के बाद किल देखने को मिला है और लाशों का ढेर बनता हुआ हमें दिखा है। 4-1 का स्कोर होता हुआ और अभी भी जो है ब्लू टीम थोड़ा सा डोमिनेट करती हुई और इसी के साथ कोशिश करेंगे के लिए उनको जो है सीसी को मारने का, लेकिन सीसी बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे पीछे हट जाएंगी। बैक लेन की तरफ जाती हुई पुश अभी किया जा रहा है। गेम का पड़ाव अभी भी ब्लू टीम की तरफ झुका हुआ है और कहीं ना कहीं जो जैपलिंग है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए उनको जो है वो मौका नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करेंगे, उनको जो है फार्म करने का मौका जरूर आएगा। उनको जो है किल्स अर्ली गेम पे वो बटोरना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर किल नहीं मिलेंगे उनको तो मिड गेम आते आते उनका प्रभाव जो है गेम पे इतना ज्यादा नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि उनका जो गेम है वो अर्ली गेम का ही रहता है। जय भाई। जी यही मैं कह रहा था कि टिग्रियल जो है उनका अल्टी का तो यूज करेंगे, लेकिन बोलना और जो करना दोनों अलग अलग होता है। थोड़ा सा दिक्कत है। जो लिंक का जो यहाँ पे ब्रेसलेट जो अल्टीमेट का यूज हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। लिंक जो है यहाँ पे दराशा यूज होती है, बिल्कुल यहाँ पे लिंक को दर्शक दे, यहाँ पे कारिता ने भी कोशिश किया था, लेकिन टिग्रियल के सीसी के आगे उनको हारना पड़ा और जो अपने जो यहाँ पे जान देते हुए बेस की तरफ वापस जाएंगे। यहाँ पे कैलिया जो है थोड़ा सा पोक करने की कोशिश करे, लेकिन सीसी का कॉन्फिडेंस देखिए जिस लेवल से सीसी यहाँ पे जो लेन कट करे बहुत ही अच्छा कदम देखने को मिला है। कैलिया डैमेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है गैंग होगा, यहाँ पे कैलिया का जो बचना मुश्किल हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लिकर यूज हुआ है शिंदा भाई, बहुत ही अच्छा कहना चाहूंगा। लेकिन जो सीसी ने जिस तरह से गैंग किया, कैलिया का बस अभी मौका नहीं है भागने का, क्योंकि उन्होंने अपना जो फ्लिकर है यूज कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और उसी के साथ बॉडी स्लैम का प्रयोग, लेकिन कोई फायदा नहीं और सीसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत पड़ती हुई पीछे हटना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनिशिएशन हमें टैंक की तरफ से देखने को मिला है। अंदर से जाके सीधा बाहर लेके आए हैं उनको, उसी के साथ लिंक डैमेज देने का प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन वो डैमेज पर्याप्त नहीं है। और अभी जो है टटल महाराज अपने आते हुए आग बंद करेंगे और इस टटल को ले जाने का पूर्ण जो है रूप से एक तरह से मैं कहूंगा संघर्ष करेंगे। और उनकी जो ब्लू टीम है वो भी संघर्ष करेगी, लेना जरूर चाहेंगे, लेकिन अभी लिंक को भी पता है कि वो नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो अपने बफ की तरफ भी ज्यादा ध्यान देंगे। और इसी के साथ इजी टर्टल लेते हुए जो टीम है वो जाती हुई और इसी के साथ रेड टीम जो है यहाँ पे ब्लू बफ पे अपना जो है यहाँ पे सुयू ब्लू बफ की तरफ जाते हुए मिडिल लेन पे थोड़ा सा पोकिंग बाजी हमें देखने को मिल रही है। पोकिंग का लगातार चलते हुए यहाँ पे और अभी भी वो पारी रहते हुए। टॉप लेन की बात करें तो टॉप लेन पे अभी भी ज्यादा फाइट हमें देखने को नहीं मिला है। उसी के साथ अगर आइटमाइजेशन की बात की जाए भाई, तो जानना चाहेंगे कि यहाँ पे टीम्स ने जो है क्या क्या आइटम्स वगैरह बना लिए हैं, लेकिन उससे पहले लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। पोक करने का प्रयास जरूर किया गया था आलोस की तरफ से और यहाँ पे जाएंगे जरूर। फिर दोबारा सारे रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट कराए गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। पीछे से जो है यहाँ पे किलिंग स्प्री जो है मेलेसा उनकी उठाती हुई और पीछे हटना पड़ेगा। डैमेज देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन सीसी पीछे से आएंगे अपने योयो से मारेंगे, सीधा लेके जाएंगे और लिंक को सीधा यहाँ पे मृत्यु के द्वार पहुंचाते हुए बॉडी स्लैम दिया गया है। टावर के अंदर लेके गई है, सीसी को दिया गया है मृत्यु दंड और उसी के साथ काफी अच्छा यहाँ पे किलेगा जो है यहाँ पे उन्होंने जो अल्ट का प्रयोग किया गया। बॉडी स्लैम सीधा टावर के अंदर मारा, लेकिन अभी भी जो है हालात अपने इतने अच्छे से हुए नहीं है। 6-6 का स्कोर होता हुआ, लेकिन अगर स्तंभ की बात करें तो यहाँ पे टॉप लेन का स्तंभ जाता हुआ मेरे को दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पे और उसी के साथ डैमेज का पूरा प्रयोग करेंगे यहाँ पे। क्रोनो फोर्स का काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए डैश क्रोनो डैश जिस तरह से मारी है, डबल किल अपनी झोली में बढ़ते हुए हैरित का भी फार्म अभी जो है चरम सीमा पे आता हुआ। और एक बार फिर से मैं जहाँ पे बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बात करने का मौका नहीं मिला।
जाएगा, किलिया को चेस करने के लिए गए हैं पीछे सीसी लगातार यो का प्रहार करते हुए और इसी के साथ मेगा के लिए अपनी झोली में भर चुके हैं और इसी के साथ जो है मैक्स जो है वो हो चुके हैं इस बैटलफील्ड पे मैक्स फीड और उसी के साथ वो अभी करेंगे डैमेज और इसी के साथ देखिए जिस तरह से मिड का स्तंभ भी निकाल लिया गया है। दोबारा एक बार मैं बात कर रहा था जैसे कि जय भाई आइटमाइजेशन की बात करते हुए देखेंगे एक बार कि किस तरह से यहाँ पे जो आइटम बनाए गए हैं, लेकिन उससे पहले शायद दोबारा से यहाँ पे कुछ फाइट देखने को मिल सकती थी और अभी जो है पीछे हट जाएगी टीम। और आइटमाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे स्टालियम साइड यहाँ पे बनाते हो, उसी के साथ फेदर ऑफ हेवन भी बना चुके हैं। हैरिथ के 2 आइटम ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा आइटम बनता हुआ श्रेणी में दिख रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो किलिया के यहाँ पे थंडर बेल्ट बनाया है, हाईलॉस से देखा जाए तो यहाँ पे एंटी हिल बनाया, डोमिनेंस साइज उन्होंने बना लिए हैं। लिंक की बात करें तो बजरंग फ्यूरी यहाँ पे आया लेकिन पीछे से गए हैं अटैक करने के लिए और उसी के साथ सीसी काफी अच्छा दिया गया, बॉडी स्लैम का प्रयोग किया गया है, टावर के अंदर गए हैं, डैमेज देने का प्रयोग जरूर करेंगे अंदर लेकिन कोई फायदा नहीं है वहां पे। और इसी के साथ एक अच्छी पारी चलती हुई दोबारा से यहाँ पे बॉडी स्लैम का प्रयोग करते हुए और पीछे हटते हुए टीम, आई थिंक वो वैलेंटीना थी जिन्होंने जो है यहाँ पे, लेकिन ऑफ स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिंक का किल लेते हुए और उसी के साथ मैं कहूंगा यहाँ पे जो हैरिथ है वो अब फार्म हो चुके हैं जय भाई, वो बन चुके हैं इस गेम के देवता। जी बिल्कुल शिंदे भाई, जैसे कि आप कह रहे थे याद है शायद आपको कि अर्ली गेम पे हैरिथ जो उनका बैकलाइन डैमेज है उनको अगर फार्म मिलता है तो प्रॉपर गेम प्ले दिखाएंगे यहाँ पे जो डोमिनेट करेंगे गेम को। बिल्कुल से उसका टॉप लेन जो जा चुका है बॉटम की तरफ जो हैरिथ फोकस करेंगे, यहाँ पे गैंग करने की कोशिश किया जाएगा, हाइलोस आने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद लगता है कि हाइलोस की यहाँ पे जो थोड़ा सा पीछे हट के खेलना पड़ेगा वरना उनको यहाँ पे जो मिड टू डन मिल सकता है। हाइलोस जो वो समझ के ग्लोरियस पक्का करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और उसके साथ जो बाकी ब्लू टीम से वो आएंगे यहाँ पे गैंग शायद हमें देखने को मिले। इसके बॉट लेन का जो स्तंभ है शिंदे भाई हमें गिरने की जो यहाँ पे देखने को मिल गया है, तो आप कहना चाहूंगा अच्छा खासा काम बैक कर रहे रेड टीम यहाँ पे, जो चांसेस तो वो नहीं हो पाए। देखिए लिंक को किस तरह से डोमिनेट करने को लिंक ने अल्टीमेट यूज कर लिया लेकिन यहाँ पे मुझे लिंक का जो खतरे में इसी के साथ टिग्रिल ने जो है यहाँ पे लिंक की जो जान ले ली है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेम प्ले शिंदे भाई, बहुत ही अच्छा टिग्रिल का गेम प्ले मैं बोलना चाहूंगा। उन्होंने प्रॉपर अल्टीमेट यूज किया, वेट किया, जो हाइलाइट्स है भाई तुम भाग जाओ, तुम्हारे पास तो है नहीं ग्लोरियस पर, तो यहाँ पे तुम्हें मौत के फाइट करने की किस तरीके से मेलिसा ने जो डबल किल यहाँ पे शायद माउस ने मिला है सर हैरिथ को, के लिए जो है इन्होंने टिग्रिल को ले लिया जान और हैरिथ जो डबल किल पे शायद ट्रिपल किल को मिल सकता है क्योंकि उनके पास शील्ड है। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिला, एक्सचेंज जो है लाशों की बदलाश, लेकिन यहाँ पे हैरिथ जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे गेम मेलिसा कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि हैरिथ जो है उनके जो गोल्ड फार्म और डोमिनेट की वजह से शायद उनको जो यहाँ पे एडवांटेज ज्यादा मिल जाएगा कंपेयर टू ब्लू टीम शिंदे भाई। जी हाँ बिल्कुल, मैक्स देखिए ना 8-0-2 का यहाँ पे स्कोर लेके घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शटडाउन अभी तक उन्हें मिला नहीं है और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे क्रोनोस डैश का प्रयोग करते हुए उसी के साथ देखिए जिस तरह से मेल्ट किया जा रहा है टैंक को, किस तरह मेल्ट किया जा रहा है यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि वो टैंक है। 2 डैश में सीधा जो है टैंक का सीधा 60% एचपी गायब कर दिया गया है। इसी के साथ जो लॉर्ड है हमारे शिव शंभू की आराधना यहाँ पे रेड टीम ने शुरू कर दिया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है लॉर्ड में कोई ऐसा कुछ मुश्किल हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमारा लिंग है उन्होंने अपना अल्टीमेट यूज कर चुका था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाइलोस का जो ग्लोरियस पाता है उसकी आ गया, यहाँ पे सुई को मिल गया लॉर्ड और कालिटा फाइनली ले चुके थे किल, तो यहाँ पे डोमिनेशन फाइट दिख रहा है। जो यहाँ पे मेलिसा का भी डैमेज वो भी आने लगा धीरे धीरे, इसका लेजेंडरी जो हैरिथ ले जाएंगे। लिंग जो है टर्रेट तो डिस्ट्रॉय कर दिए, पुश करने की कोशिश करे ताकि जो ब्लू टीम है वो पीछे से जाके उनका जो टर्रेट बचा सके। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा लिंक का अच्छा खासा गेम प्ले, भले और टीम के साथ सपोर्ट नहीं कर पाए लेकिन जिस तरीके से मोबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ पे पुश कर रहे हैं रेड टीम को वापस की तरफ जाना पड़ेगा। लॉर्ड यहाँ पे अकेले जाएंगे तो लॉर्ड जो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लिंक की जो लिंक ने जो दिमाग यूज किया जिस तरीके से उन्होंने पुश किया मोबिलिटी उसके बहुत ही बढ़िया कहना चाहूंगा इस टाइम पे इतने प्रेशर की गेम पे शिंदे भाई। यहाँ बिल्कुल अगर आप जो है टीम फाइट पे मौका नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते तो आपको जो है दूसरा रास्ता यहाँ पे अपनाना चाहिए। वो स्प्लिट पुल का रास्ता जो है यहाँ पे हमारे लेन है उन्होंने अपनाया है और इसी के साथ थोड़ा सा जो गेम की पारी है थोड़ा सा डिले करवाया है इस गेम को और इसी के साथ 10 मिनट गेम में जाते हुए और इस 10 मिनट के में गेम में जो है अभी भी जो है मैक्स जो अपने हैरिथ थे उनको अभी भी जो है मृत्यु दंड एक बार भी नहीं मिला है। 902 का केडी है उनका, उनको जो है शटडाउन देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और फिलहाल अभी तो मेरे ख्याल से 10 मिनट होने के बावजूद अगर एक शटडाउन मिल भी जाता है तो इतना ज्यादा जो प्रभाव है वो नहीं पड़ पाएगा क्योंकि उनके पास जो है ऑलरेडी फार्म वगैरह आ चुका है और जस्ट इनिशिएशन रहेगा। जिस तरह से जो है टिग्रेल अपना अगर एक अच्छा अल्टी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो गेम की पारी जो है पूरी तरीके से बदली जाएगी, लेकिन उसी के साथ कोशिश करने का प्रयास जरूर किया जाएगा और सीसी की तरफ से अल्ट का प्रयोग जरूर किया गया है। उसे डैमेज देने का प्रयास करते हुए निकाला जाएगा जूड़ा को दिया गया है मृत्युदंड। उसी के साथ बॉडी स्लैम का प्रयोग करते हुए लेके आएंगे टावर के अंदर सीधा
डैमेज देने का प्रयोग, लेजेंडरी उठाएंगे, यहाँ पे पीछे से आएंगे और दोबारा से डैश मार मार के एक के बाद एक लाशें बिछाते जाएंगे। और ये हैरिथ जिस तरह से लगातार लिंग जो अपना यहाँ पे प्रयोग किया था, यहाँ पे काफी अच्छा ब्लेड का प्रयोग करते हुए, लेकिन वो फायदा नहीं रहा। और उसी के साथ मिड से चाहेंगे कि वो जो है उनका मिड स्तंभ वो भी उठा लिया जाए, क्योंकि बॉटम लेन पे ऑलरेडी मिनियन आ चुके हैं और वो जो टावर है वो भी चला ही जाएगा। जय भाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा हरित का गेम प्ले हमें देखने को मिला। आपको जो मेटा हीरो होता है, डैमेज हीरो होता है, वो जो आप जो दूसरी टीम को जब देते हैं तो जो डैमेज है, यहाँ पे हीरो पिक तो बढ़िया था, लेकिन हरित का गेम प्ले हरित को काउंटर नहीं किया गया। जो टॉप लाइन पे गैंक नहीं है उसकी वजह से हरित को जिस तरीके से फार्म मिला, वो अभी पूरा का पूरा गेम डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हरित को शट डाउन मिलता है, तो जो टीम है दूसरी टीम जो ओपोनेंट है ब्लू टीम, उनको एडवांटेज ये मिलेगा कि उनको थोड़ा सा गोल्ड भी मिलेगा। अगर आप कोई भी हीरो जो होता है हाई गोल्ड पे, हाई किल पे, जीरो डेथ पे, उनके ऊपर जो बाउंटी लगता है वो मिलने से शायद आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिले जो आपका आइटम से वो लेने के लिए। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, हारित को किसी तरीके से ले लिया जाए। लिंक जो कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा फार्म करके हारित को अगर डैमेज दे सके, लेकिन जिस टाइम पे हारित यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं गेम, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाइलोस का भी जो एचपी आधा के आधा खाली कर रहे हैं दो शॉट्स पे। जी हाँ बिल्कुल, आधा खाली करते हुए, लेकिन हल्का प्रयोग जरूर करेंगे। यहाँ पे वैलेंटीना कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ती हुई पीछे हटना पड़ेगा, लिंक पीछे से आएंगे और इसी के साथ यहाँ पे किल उनका लेके जाएंगे। और किल के साथ पीछे से यहाँ पे दोबारा से डैश का प्रयोग करते हुए कितने खूबसूरती से यहाँ पे डबल किल लेके गए हैं अपने जो हैरित है। और ये जो अभी टीम फाइट देखेंगे, 4 बंदे दाराशाही होते हुए, टीम जो यहाँ पे अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रही है यहाँ पे हैरित की टीम। और कहना चाहूंगा अभी तक उनका जो है मृत्यु दंड उनको नहीं मिला है। 12-0-7 का स्कोर होता हुआ यहाँ पे जय भाई। जी बिल्कुल, इसका देख केलिया जो है बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो टीम है ब्लड टीम, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इजीली ले सकते हैं जो यहाँ पे टारगेट, इसलिए लॉर्ड की तरफ गया नहीं है। मेगा किल मिल गया, केलिया कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे जामान फोर्स का यूज होते हुए देखा हमें, यहाँ पे कोशिश तो कादी तक करेंगे, अगर प्रॉपर चांस मिलता शायद उनको मौका मिल जाएगा ग्लोरियस पथ के उसके आइलेट्स आए इनिशिएट करने के लिए। केलिया का जो अल्टी कॉपी करते हुए यहाँ पे ब्लडी सब दिखने को मिला, तो शायद यहाँ पे फाइनली जो है लिंक को मिल चुका है टिग्रियल का किल। लेकिन अगर हाइट को शट डाउन नहीं किया गया तो यहाँ पे भयंकर रूप से आया जो हाइट डोमिनेट कर सकते हैं। लेजेंडरी मिला, आइलेट्स को शट डाउन मिला, यहाँ पे जो किसी डबल किल मिला, मैनिया को शायद हमें देखने को मिल सकता है। इसके शट डाउन मिला किसी को, जो हमारे हरित भाई है उनको मिला, मैनिया किसी के साथ जो गेम है हमें खत्म होने को देखने को मौका मिलेगा श्रीडा भाई। क्या बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले में देखने को मिला। जिस तरह से मैंने कहा था आपको कि पीछे से जो हैरित आएंगे जो पूरा पैटर्न है वो गायब कर देंगे, और उनको जो है फार्म प्रॉपर मिल चुका था। और उसी के साथ उन्होंने जो है काफी अच्छी पारी यहाँ पे खेली, और कहूंगा कि जो एमवीपी है वो भी डिजर्व करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन जिस तरह से उनका गेम प्ले था। 72% जो है यहाँ पे टर्रेट डैमेज, उसके साथ साथ 77% जो है यहाँ पे टीम पार्टिसिपेशन, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे डैमेज की बात करें जय भाई, तो 39% पूरा। और डैमेज देखिए कितना ज्यादा किया है उन्होंने, पूरे जो टैंक को मेल्ट किया था दो आगे फ्रंट का, वो डैमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। जय भाई शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है जय भाई के साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि काफी बेहतरीन यहाँ पे जो पारी खेली है हमारे जो हैरिस जी ने, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हैरित का गेम पे बहुत ही अच्छा था। मैं कहना चाहूंगा शिंदा भाई कि यहाँ पे गोल्डन पे थोड़ा सा डोमिनेट करने की जरूरत है। हैरित को गोल्डन पे उतना कुछ ज्यादा खास कुछ गैंक देखने को मिला नहीं, और जो भी एक दो मैचेस हुए तो उसमें से हैरित को ज्यादा डोमिनेट करने का मौका मिला नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हैरित को फार्म एडवांटेज बहुत ज्यादा मिला। मेरे से क्या किया, टॉप लेन जब उनका लेन टूट गया, हैरित ने जैसे डबल किल लेते हुए पहले टॉप लेन का लेन तोड़ा था, तो उसके बाद हाइलो से मेरे किल लिया था उन्होंने, डबल किल मिला था। उसके बाद से मेरे ने कोशिश नहीं किया कि थोड़ा सा फार्म किया जाए, वो बाकी लेन्स बचाने के लिए टीम के साथ आ गया। तो इसी के जो रीजन की वजह से हैरित को जो फार्म मिला है, टर्रेट का गोल्ड मिला है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। और हायत तो आप पता ही है उनका जामान फोर्स का जब स्टोन डैश यूज होता है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए बचना। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पे खेली है दोनों टीमों में, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे जैपलिन जो है बहुत ही इजीली गेम को जीतते हुए और अपनी जो टीम को है वो आगे ले जाती हुई इस टूर्नामेंट में, इस ओडिसी कप में। मैं हूँ आपका खासा शिनरा और मेरे साथ है जय। हम आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards
towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is hot, cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing. But I don't second guess it, I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living. I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot. I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked. And if I keep going, I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will
chillin', I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living, I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking, I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. I got the strength in the Guinness, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time in. I wanna build a life worth living, I wanna be rich cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking, I wish I had more but I'll take what's given. I just wanna pop cause I've been working a lot, I think I deserve a shot, I think I deserve a spot. Cause it's been years on this path that I walked, and if I keep going I pray I'll be at the top. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और नए मैच में। और सिटी कप यहाँ पे लगा हुआ है, राउंड 1 यहाँ पे चल रहा है, नॉकआउट है, राउंड यहाँ पे है। और इसी के साथ एक ही मौका मिलेगा टीम को। यहाँ पे एक तरफ है लिन लिन, दूसरी तरफ है टीम एएफके। और इसके बाद यहाँ पे पता लगेगा कि कौन एएफके जाएगा इस बैटलफील्ड से। और अगर बात करें तो लिन लिन के यहाँ पे पहला पिक उनको मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे पहला बैन जाता हुआ यहाँ पे बीस्ट। क्या बैन करेंगे यहाँ पे? मैं हूं आपका कस्टर्शन रहा, मेरे साथ है जय। और पूछने से पहले यहाँ पे उड़न खटोला यहाँ पे बैन कर दिया गया है टिल्डा को। और जय भाई क्या लगता है यहाँ पे कि आगे जो है क्या बैन हमें देखने को मिल सकते हैं? अपनी थोड़ी द्रव्य दृष्टि डाली है इसके ऊपर। शायद यहाँ पे दिव्य दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है जो लास्ट मैच में हेल्थ का दबदबा चल रहा था वो एएफके ने देख रहा था, इसीलिए उन्होंने मौका नहीं दिया। चौका मारा है जो हरित भाई है, हमारे हरित भाई को सीधा गेम की बसे बाहर ही निकाल दिए इस मैच के लिए शिंडा भाई। इसका तो फैन ही जो हमारे 99% बैन लिस्ट में देखते हैं वो देखने को मिला। लुकास भी हमें बैन लिस्ट में देखने को मिल सकता है शिंडा भाई। जुशिन तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो शायद हर कोई बच्चा भी जानता है। जुशिन को पिक मत करो, सीधा बैन करो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आइडल्स भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे केलिया को जो है बैन कर दिया गया है। नया हीरो नहीं चाहते कि लिया जाए एनिमी टीम की तरफ से, लेकिन यहाँ पे भी जॉय को बैन किया जाएगा। अभी भी एक मौका रहेगा इनके पास जो है एक अच्छा खासा हीरो बैन करने का। यहाँ पे अगर जुशिन बैन नहीं होते तो यहाँ पे टीम लिंग लिंग को जो है लिंग लिंग करते हुए यहाँ पे मौका मिल जाएगा बुरी अम्मा लेने की। इसका सुई को बैन कर दिया गया है तो यहाँ पे टीम लिंग लिंग के पास मौका है लिंग लिंग करते हुए 900 साल की बुरी अम्मा जुशिन को जो यहाँ पे उठा लिया है। लेकिन वो लोग जो हायाबुसा पे ओवर कर रहे हैं। इसका गैटो का जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा शिंडा भाई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी कि यहाँ पे जो जुशिन हमारी बुरी अम्मा उनको जो है एएफके की तरफ धकेल के। Only love at night. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी जो है सिसिलियन जीबी ओपन थे तो अभी सीधा जो है सिसिलियन को पिक किया जाएगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पे एएफके डियाब्लो की तरफ से, लेकिन यहाँ पे टॉप अप किया जाएगा टिग्रेल को। इतना जल्दी यहाँ पे टैंक को सीधा उठा लेना ये थोड़ा सा मैं कहूंगा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर वो उन्होंने वहां पे टीम यूनियन ने अगर यहाँ पे अकाई उठा लिया यूटिलिटी जंगलर के रूप में
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे टीम ए के को, क्योंकि ये अकाई का जो है काफी अच्छा काउंटर हम कह सकते हैं कि टिग्रेल का भी रहता है। और फर्स्ट पिक या सेकंड पिक में आप टैंक उठा रहे हो, उससे अच्छा ये कि आप थोड़ा सा सोच समझ के उठाना चाहिए था पिक। क्या कहना चाहेंगे जय भाई इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शिंदा में मेरे दिमाग में कुछ ऐसे बातें चल रहे हैं अभी जो मैंने कभी सोचा नहीं। हमने इतने सारे टूर्नामेंट देखे, इतने सारे मैच देखे, लेकिन पहली बार जहाँ पर जोशिन जो है, हमारे जोशिन रानी जो है, उनको इस तरीके से जो है इग्नोर किया गया है, उनको लिया नहीं गया। जोशिन को जो है यहाँ पे निकालते हुए वैक्सन और सिसिलियन का जो यहाँ पे आगमन हुआ है, तो ये कुछ मुझे पहली बार देखने को मिला है और मैं काफी खुश हूँ इस चीज को लेकर। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे आश्चर्यित हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जोशिन को जो है कोई भी मतलब मौका नहीं मिला इस मैच में उनको कुछ कर दिखाने का। देखिए जूशिन को जो है नहीं उठाना, यहाँ पे एक समझदारी वाली बात कहूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है टिग्रेल पिक हो चुका था, तो टिग्रेल को रोकने के लिए यहाँ पे वैक्साना को उठाया गया है। कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज देंगे उनको, डैमेज से ज्यादा जो है सीसी देंगे, तो आगे आना पड़ता है। हम सभी को पता है जो टिग्रेल है वो आगे जाके खेलना पड़ता है, उनको आगे आके आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जो है यहाँ पे वैक्साना पिक करके उन्होंने काफी ज्यादा दिक्कत मिलेगा यहाँ पे टिग्रेल को अपना जो है कॉम्बो मारने में। लेकिन इसी के साथ आप ये भी देखिए, यहाँ पे जैसे ग्रेंजर ले लिया गया है। नॉर्मली बेसिकली हम लोग को पता है कि जो ग्रेंजर का काउंटर है, आप हेरिथ बोल सकते हो, लेकिन हेरिथ बैन है तो आप एथेल उठा सकते हो। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे मेलिसा को उठा लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं शिंदा भाई थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है ग्रेंजर लेट गेम या मिड गेम से लेट गेम तक जो उनका जो अल्टीमेट रहता है सोनाटा उसका यूज करके मेलिसा को पोक करके? जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा दे जरूर सकता है, लेकिन आप एक आप पे ध्यान दीजिए, ग्रेंजर जो है लेन क्लियर करने में इतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें मेलेसा की, तो मेलेसा जो है काफी अच्छा एमएम रहेंगे, और उनकी साइड से अगर पुश भी होता है एनिमी की साइड से तो एक डिफेंस करने में काफी अच्छा जो है हेल्प करता है। और अगर बात करें यहाँ पे लिनलिन की, उनकी साइड से जो है मेज वो काफी इंपॉर्टेंट एक पिक रहेगा पूरे गेम में, क्योंकि देखिए जिस तरह से मिनियन वगैरह आएंगे तो लेन क्लियरेंस एबिलिटी जो है काफी अच्छी रहेगी ब्लू टीम की तरफ से मेज की साइड से। हालांकि जो ग्रेंजर है वो सिर्फ एनी पे ही एनिमीज वगैरह पे ही डैमेज देंगे वहां पे, जिसके हमने देखा पिछले बार जो गेम हुआ था सुपर यामा की तरफ से ग्रेंजर ने काफी अच्छा खेला, लेकिन परंतु जब लॉर्ड आए उनके साथ मिनियंस आए वहां पे वो डिफेंड करने में कहीं ना कहीं चूक रहे, कि उनके पास जो है लेन क्लियर एबिलिटी नहीं थी। तो वहीं पे जो है थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हमें देखने को मिल रहा है जय भाई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर हमें अच्छा ग्रेंजर प्लेयर देखने को मौका मिलता है ना, तो उनका जो ग्रेंजर का एबिलिटी होता है हीरो बर्स्ट डैमेज का, जो पोक करके वो दूर से जो डैमेज देते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज जो है वो टीम को मिलता है। क्योंकि मेज एमएम या एसेशन बोलिए आप, उनका जो हेल्थ है थोड़ा सा स्क्विशी हीरो होता है, उसकी वजह से हेल्थ थोड़ा कम रहता है। तो ग्रेंजर की डैमेज के बाद उनका हाफ एचपी तक बचता है, उसके बाद फाइट लेना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का एडवांटेज लेके अगर ग्रेंजर ने अपना अल्टीमेट का यूज किया, गाटो का एवोजी देखने की मौका मिला, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर दे सकते हैं ग्रेंजर की टीम। इसी के साथ हमारे भाले वाले भैया जो भाले चुबाएंगे अभी सबको, जो है उनका दर्शन का मौका हमें मिल गया। मिनिस नगर में पिक कर लिया गया, इसके बाद हायाबुसा दिखाया जाए, लेकिन मैं बोलूंगा था हायाबुसा अगर पिक करा तो संभाल के पिक करना, क्योंकि मिनिस जो हायाबुसा और हर कोई डैश हीरो का अच्छा खासा काउंटर है शिंदा भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा मैं पिक कहूंगा यहाँ पे उठाया गया है सितार एएफके की तरफ से। जो एएफके की टीम है यहाँ पे काफी अच्छा पिक रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत जरूर देगा यहाँ पे अगर अच्छे से अल्ट मारते हैं या फिर ग्रेंजर वगैरह को पकड़ते हैं। और हायाबुसा को भी अगर पकड़ लिया जाए तो वापिस जो है शैडो बैक नहीं कर पाएंगे, वहां पे जो अपनी शैडो पे वापिस नहीं जा पाएंगे, उनकी डैश खेल जो है कैंसिल कर देते। लेकिन थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा, मीन सितार को अकेले अगर पकड़े गए तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और उसी के साथ यहाँ पे घोड़ा माना को यहाँ पे लॉक किया जाएगा, काफी अच्छा पिक मैं कहूंगा। और एक तरह से जो बूस्टअप मिलेगा इन लोगों को कि निकलने के लिए अच्छा जो है उनके अल्ट पे पकड़े भी जाते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं निकलने का अच्छा खासा मौका इनके पास रहेगा। बात किया जाए अभी भी जो है जंगलर अभी आया नहीं है, लास्ट पिक रहेगा। कौन सा जंगलर पिक करना चाहेंगे यहाँ पे? हायाबुसा के अगेंस्ट मैं तो कहूँ कोई यूटिलिटी जंगलर भी उठा सकते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बेनेडिटा को उठाया गया है और बेनेडिटा जंगल जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जय भाई? देखिए अगर उनके पास कैपेसिटी है बेनेदा से लेके गेम निकालने का, तो बहुत अच्छा कहना चाहूंगा कि बेनेदा जो आपका पैसिव है, वो जो आप जब उसको बेसिक स्किल को दबा के रखते हैं तो उनको मोबिलिटी जो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस सेकंड स्किल में वो डैमेज से इम्यून रहते हैं, आई थिंक 0.06 सेकंड के लिए।
तो अच्छा सा पीक बोलना चाहूंगा बेनेता, लेकिन अगर आप खेल पाओ तो हायाबुसा का आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जी सकता है, बिल्कुल। स्पेशली सिसिलियन को और मेलिसा को। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे जंगल्स के ऑलरेडी, यूटिलिटी जंगलर्स आप उठा सकते थे। आप जो है फेड्रिन उठा सकते थे, आप जो है अच्छा खासा एक जो है डैमेज डीलर या टैंक के रूप में जो है टैंक जंगलर थोड़ा उठा सकते थे, लेकिन वहां पे सीधा बेनेडिक्टा की तरफ जाते हुए देखना हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को एक अलग बात रहा, और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है, अगर बेनेडिक्टा चल गया अच्छा खासा तो टीम अच्छी खासी से यहाँ से जो है अपनी वापसी कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ इसके बारे में कि अगर यूटिलिटी जंगल उठाते ज्यादा बेटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है जैसे कि जय भाई आपने कहा कि अगर चला सकते हैं, अगर कंफर्ट पिक आपका इतना अच्छा है, आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि हाँ मैं ये चीज हो सकती है, तो लाइक फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वही देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे जो ये की टीम है और उनका जो बेनेटा पिक था, क्या वो कॉन्फिडेंस पे रहेगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा। और इसी के साथ कुछ देर में हम लोग जाएंगे लैंड ऑफ डॉन की तरफ, और लैंड ऑफ डॉन में जैसे हमारा आगमन होगा तो जय भाई क्या कहना चाहते हैं, 2 लाइन जरूर बोलना चाहेंगे स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल शिंदा भाई, इसी के साथ जो हम लोग आ चुके हैं लैंड ऑफ डॉन में, सब जाएंगे अपनी खेती बाड़ी की तरफ, हाया जाएंगे शायद रेड की तरफ, उसके बाद जाएंगे ब्लू बफ की तरफ, क्योंकि हायाबुसा जो एनर्जी डिपेंडेंट है उनको ब्लू बफ की सख्त जरूरत पड़ता है। इसके बाद देखिए आप जो यहाँ पे बेनेटा जो है पहले जाएंगे ब्लू बफ की तरफ, तो यहाँ पे जो दोनों टीम है अपने अपने खेती बाड़ी करने पे लगे हुए हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा शिंदा भाई कि यहाँ पे जो पीक हुआ है उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बेनेटा जो लिया पीक लिया गया है वो चलो एक तरफ सही भी है, क्योंकि देखो अगर टिग्रिल का अल्टी यूज होता है, जो उसके बाद जो यहाँ पे हमारे भाले वाले भैया है मिंचेस्टर, उनका अल्टी साथ ही साथ जो बेनेडिक्टा का अल्टी है लॉन्ग स्केल डैमेज देते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लू टीम को जो वाइप आउट की मौका हमें देखने को मिल सकता है। जी हम वहां का तो देखिए दोनों तरफ से रहेगा, यहाँ पे किस तरह से कुक अप किया जाएगा, उसी के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास किया गया है, टैंक को पीछे हटेंगे, टैंक पीछे जाएंगे जय भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज उमेज पोकिंग बर्स्ट एबिलिटी देखने को मिला, सिसिलियन जो पोक कर रहे हैं यहाँ पे हाइलो जो हाइलो से, उन्होंने भी थोड़ा सा अच्छा खासा जो यहाँ पे आया टिग्रियल का जो हेल्थ थोड़ा सा पीछे किया है, टिग्रियल जो है यहाँ पे रिवर्टर्स का यूज किए होंगे, थोड़ा सा हेल्थ जो अपना डिजाइन करने चाहेंगे। इसके बाद वैक्सना जो है यहाँ पे अच्छा खासा नेता को पोक करते हो अपने सिसिलियन स्किल के द्वारा, टिग्रियल का जो यहाँ पे हमें सेकंड स्किल देखने की मौका मिला, तो शायद यहाँ पे हमें गेम की ऑनर की मौका देखने को मिलेगा शिंदा भाई। यहाँ बिल्कुल, और टॉप लेन पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे आगमन होता हुआ शेडो का प्रयोग करते हुए हायाबुसा अभी भी लेवल 3 पे है, लेवल 4 अभी तक नहीं हुए, और दोनों ही जंगलर अभी थोड़े से पीछे पीछे हटते हुए, और मौका नहीं देना चाहेंगे। ग्रेंजर जरूर जाना चाहते हैं अंदर से, जो है फार्म उनका लेने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, कोई 4 बंदे एक साथ वहां पे है और ग्रेंजर की लेन में भी कोई नहीं है, तो पीछे थोड़ा संभल के जो है खेलना पड़ेगा। बॉटम लेन की बात किया जाए तो यहाँ पे मिंसितार और यहाँ पे जो अपने गटू का चाहे उनके बीच में थोड़ी सी हलचल होती हुई, लेकिन उधर की साइड में बात करें तो फाइट जरूर होने का प्रयास रहेगा। फर्स्ट ब्लड जो है हायाबुसा इजीली लेके जाएंगे बेनेडिक्टा का, और मैं यही चीज कह रहा था कि यहाँ पे जो गेम है थोड़ा सा अलग जाता हुआ, क्योंकि बेनेडिक्टा जंगल थोड़ा सा जो है लैकिंग करता है जंगल एरिया की तरफ से, और ये जो फ्री टर्टल है वो जाएगा सीधा लिनिन की तरफ। यहाँ पे बेनेडिक्टा कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पे जो है कैसे भी टर्टल ले जाए, लेकिन वो सक्षम हो नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से हाइलाइट इनिशिएट करे, यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्लिकर का यूज होगा, इसके साथ में इस तरह का जो पाने वाले भाई लोग को यहाँ पे बुला लिया गया है कि जो यहाँ पे हाइलोस का ग्लोरियस पाथ का भी यूज किया गया है, किस तरीके से जो यहाँ पे वैक्सना डैमेज दे रहे, यहाँ पे जो मिनिस्टर जो पीछे जाएंगे, यहाँ पे शायद हायाबुसा अगर थोड़ा सा कोशिश करे तो शायद मार पाएंगे, लेकिन हायाबुसा जो प्रायोरिटी देंगे अपने ब्लू अप की तरफ। बेनेडिक्टा जो है इनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसकी वजह से मैं जो शिना में बोला कि बेनेडिक्टा चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो बहुत ही बुरा होने को है यहाँ पे मौका। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मौका देंगे नहीं ना, देखिए जिस तरह से अभी दोबारा से इसके ब्लू बफ पे लग चुके हैं, वो ऑलरेडी उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ी सी वीक रहेगी जंगल एरिया पे, अपने जो बेनेडिक्टा है उनको मौका नहीं दिया जाएगा फार्म करने का, और हायाबुसा इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे, शैडो का प्रयोग करते हुए जाएंगे अंदर, अल्ट का प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा, और इसी के साथ हेल्थ उनकी जरूर कम करी है, और यहाँ पे अपनी लेन पे फार्म उनको जरूर करना पड़ेगा। और फार्म की अगर बात किया जाए जय भाई, तो अभी से जो है 2K का डिफरेंस हमें आता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी। ब्लू टीम जो अपनी है लेन लेन, उन्होंने जो है 2K का फार्म डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया, बस इसको जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर ये मेंटेन करके चलेंगे तो वापसी के जो है कम बैक के चांसेस थोड़े से जरूर कम रहेंगे यहाँ पे AFK के।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल शिंदा भाई इसके बाद देखिए जो यहाँ पे घाटों पे जो है भाले की बात चल चुका है, घाटों पीछे जाने की कोशिश करेंगे, वो जंप भी नहीं कर सकते, एओजी का प्रयोग नहीं कर सकते, इस किसी का लेकिन यहाँ पे जो हमें पल्ला वाले देखने को मिला, मिनिस्टर जो है पीछे की तरफ चले गए, उनका जो हुक है भाई, वो यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। घाटो जो है भाई यहाँ पे राजा है, यहाँ पे मिनिस्टर को जिस तरीके से किया, मिनिस्टर को मुझे लगता है लेन के लिए पीछे की तरफ बजाना की जरूरी है, वरना घाटो की अगर एओजी हमें देखने को मिला तो यहाँ पे मिनिस्टर को जो बचना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, मिनिस्टर जाएंगे पीछे की तरफ, टीरियल जो रहेंगे थोड़ा सा लेन को जो बचाने की सक्षम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से दो हीरो जो पीछे की तरफ, यहाँ पे टॉप लिफ्ट में गैंग देखने को मिल रहा था, कर दिया गया। रेंजर जो मैं बोल रहा था शिंदा भाई जो डैमेज देते हैं वो डैमेज ले लिया, हायाबुसा ने मेल डाउन किया और रेंजर ने यहाँ पे जो किल निकाल के उनको जो गोल्ड मिला, बहुत ही बढ़िया चीज। मैं कह रहा था बेरेटा पे कार्ड बना के बैठी हुई है, वेक्सना पे कोशिश करेंगे, वेक्सना का सीसी स्किल प्रेजर जो है बेरेटा को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। टर्टल जो कुछ हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फाइट शायद देखने को मिले, लेकिन लगता तो है कि रेड टीम जो है उनको मिलने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाइलोस कुछ खास मौका देंगे नहीं बेरेटा को इस तरफ। जी बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और फार्म डिफेंस की बात किया जाए, देखिए धीरे धीरे करके और फार्म और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 5K का डिफरेंस आता हुआ हमें दिख रहा है, और ये 5 से बहुत ही जल्द 8K भी होने वाला है, क्योंकि अभी जो है बेनेडेटा वो लैग कर चुकी है जंगल एरिया पे, और उनका जो है फार्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे लूटा जाएगा। अल्ट का प्रयोग जरूर किया गया है, लगाया जा गया है वॉल, लेकिन टिग्रा रनर से आए इम्प्लोजन का प्रयोग करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे मैच को, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। पीछे से ग्रेंजर आए हैं, अल्ट जरूर करेंगे, यूजी का प्रयोग करा, लेकिन कोई नहीं पकड़ा सिवाय नताला गए वहां पे। और यहाँ पे रेड बफ लिया जाएगा ग्रेंजर के द्वारा पीछे से, और जो है हायाबुसा वो लेके गए हैं एक्चुअली यहाँ पे। और इसके साथ गेम की पारी थोड़ी सी खुलती हुई, गेम का खाता उनका जरूर खुलता हुआ, 5-1 का स्कोर चलता हुआ, लेकिन अभी भी जो फार्म है वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे 6K की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमको। फार्म में कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे हल्का प्रयोग करके रोका जरूर गया है 3 बंदे का डैमेज लेने के लिए। पीछे से हायाबुसा आया है, शैडो किल का प्रयोग करेंगे, एक किल अपनी झोली में भरते हुए, दूसरा किल भी भर सकते हैं। जी हाँ, दूसरा किल भी भर लिया है अपनी झोली में। मृत्यु दंड यहाँ पे दिया गया है, और उसी के साथ मृत्यु दंड के साथ साथ ये जो लेन है वो रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा, मेलेसा को डैमेज देने का। दैट सुनाता मार के सीधा किलिंग स्प्री अपनी झोली में भरते हुए ग्रेंजर वो लेंगे टॉप का टावर, और मिड लेन पे दोबारा से यहाँ पे थोड़ी सी हलचल हमें देखने को मिल रही है। गटोकाचा ऑलरेडी प्रेशर देना चाहेंगे उस मिड टावर पे, और वो टावर जरूर लेना चाहेंगे। तो यही बात मैं बोल रहा था जय भाई, अगर आपका जो जंगलर आप इसके पास पेनेडेटा से अच्छा जंगलर थे, बहुत सारे अच्छे जंगलर थे, आप यूटिलिटी कोई भी जंगलर उठा सकते थे, फैटिन उठा सकते थे, आप जो है अपना अकाई उठा सकते थे, या फिर कोई दूसरा जंगलर उठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एयूजी का प्रयोग करके डबल किल इजीली यहाँ पे हायाबुसा लेके गए हैं, और पीछे से भी एक और मौका नहीं दिया जाएगा। हाई लॉस जरूर यहाँ पे लेंगे अपने जो टिग्रेल है उनका किल, और उसके साथ मेड का स्तंभ टूटने का प्रयास जरूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बाद बेनेडिक्ट अल्ट मार के अंदर जरूर आएंगे। मेगा किल पीछे से उठा लिया गया है ग्रेंजर की तरफ से। जिस तरीके से उनके पास दो टैंकी हीरो है, गाटो है, एक्सप्लेन पे खेल रहे हाइलो से, तो उनके पास मौका इनिशिएट करने का, अगर टैंक को जो है कुछ मौका मिलता है किल ले मतलब मरने का, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास ग्रेंजर जो है ऑलरेडी उनका जो पोक बस्ट एबिलिटी जो मैं कह रहा था शिंगा भाई वो आ चुका है। मेलिसा अपने अल्टीमेट शील्ड का यूज करे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरीके से ग्रेंजर का डैमेज लग रहा है, जिस तरीके से मैं ग्रेंजर बस्ट कर मैं एक बार पोक बस्ट करके यहाँ पे जो देखिए किस तरीके से यहाँ पे तो जो यहाँ पे मिस्टर ने कोशिश किया था अपना अल्टी मारने का, लेकिन हाइलोस ने जो ग्रेस पॉट किया उसके मिस्टर को यहाँ पे बचना मुश्किल है। वेक्सना का अच्छा खासा किल मिलेगा यहाँ पे, वेक्सना जो किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है अपने टीम को, जिस तरीके से यूज करे, किसी को भागने का मौका नहीं दे रहा। हायाबुसा घाट बना के बैठते कि मिस्टर अल्टी यूज करेगा, उसके बाद ही भाई मैं जाऊंगा, इससे पहले तो जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिस्टर अल्टी की मुझे फंसना पड़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले पे हायाबुसा की बहुत ही सुझाव के साथ देखिए हायाबुसा जो अपना शॉट उसकी अनस्टेबल मिला है, पेनिटा का कोई एडवांटेज मिल नहीं रहा है। ग्रेंजर पे थोड़ा सा गैंग करने की कोशिश करेंगे, ग्रेंजर का जो डैमेज एबिलिटी अभी आ चुका है, तो उनको कुछ ऐसा कुछ जो हम यहाँ पे कोई हानिकारक कुछ देखने को मिलेगा नहीं में। जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था आपको कि गेम का पारा जो जूशिन पिक करके नहीं वक्साना पिक किया गया, तो यही बात रहती है कि पिक के साथ आप जिस तरह के हीरोज पिक करते हैं उनके साथ जो है कॉम्पेरिटी किस प्रकार रहता है आपका वो ज्यादा मैटर करता है, और कॉम्बोज किस तरह से पड़ेंगे उस तरह का वो मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे इम्प्लोजन का प्रयोग करते हुए, बेनेडिक्टा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे एजू का प्रयोग करेंगे, गटोकाचा डबल किल अपनी झोली में भरते हुए ग्रेंजर पीछे से, और इसी के साथ मेज यहाँ पे एमएम का किल लेते हुए, और डेट सुनाता की बरसात जरूर करेंगे, लेकिन मिटले का टावर यहाँ पे लेते हुए 4 बंदे धाराशायी अकेले सिसिलियन यहाँ पे बचाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मिनियन एक ही है, मिनियन बहुत कम है यहाँ पे, और इसी के साथ शटडाउन दिया गया ग्रेंजर को,
और यहाँ पे इजीली शट डाउन दूसरा यहाँ पे गाटो काचर को थोड़ा सा हड़बड़ आए यहाँ पे फिनिश करने पे, और उसी का यहाँ पे मुआयना पीछे हटना पड़ेगा उनको। और ये जो पारी है थोड़ी सी एक साइड चलती हमें दिख रही है। और स्वर्ण मुद्राओं की बात करें जय भाई तो ऑलमोस्ट 10K का डिफरेंस आ चुका है फार्म में। जिस तरीके से ग्रेंजर, जिस तरीके से हायाबुसा जंगल पे जंगल लिए जा रहे हैं यहाँ पे रेड टीम का जो है यहाँ पे जो एएफके का, तो एएफके यहाँ पे कुछ चाके भी कर नहीं पा रहे। यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे उनका प्रभाव दिखते हुए भी उनको जो एएफके फीलिंग दिलाया जा रहा है लिंग लिंग की तरफ से। लिंग लिंग जो लिंग लिंग करते हुए जा रहे हैं एएफके के जंगल पे, बोले तुम लोग एएफके ही रहोगे कि हम तो तुम्हारे जंगल जो लेने आया। उसे यहाँ पे अपना क्वाड सेट हो गया, उसके लॉर्ड आ चुका है, मेले से घाट बना के बैठा कि लॉर्ड पे अगर कोई अटैक होता है तो मैं हूँ। लेकिन हाइलोस यहाँ पे ये जो चाल समझते हुए उन्होंने बूस्ट चेक किया, मेरे से को वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद लिंग लिंग जो यहाँ पे शायद आई थिंक यहाँ पे जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे जो यहाँ पे लॉर्ड लेने का शिंगा भाई। जी हाँ बिल्कुल, इग्नोर का प्रयोग किया गया, किंग्स कॉलिंग का उसके साथ एजू का प्रयोग करते हुए पीछे से आएंगे गर्भ काचा बहुत ही इजीली। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए टैंक जो बन के आ चुके हैं, ग्रेंजर डैमेज देने का प्रयास करेंगे, गेम खत्म करने का पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा। और ये देखिए जिस तरह से मिनियन क्लियर हुआ, ये लेन क्लियर करने की एबिलिटी मैं बात कर रहा था वेक्साना के पास, ये एबिलिटी रहती है उनके पास। और इसी के साथ देखिए किस तरह से जो है लेन बहुत ही इजीली क्लियर करते हुए, टावर लेते हुए, और ये गेम बचाना नामुमकिन रहेगा यहाँ पे सीसी लेन के लिए। जी बिल्कुल कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई छोड़ने पाएगा। इससे के साथ जो गेम है भैया, अच्छा खासा गेम जीतते हुए मैं बोल रहा था शिंदा भाई ग्रेंजर को आप कम मत समझिए, नर्फ भले मिले लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस नर्फ से उनका बफ जो है वो कम नहीं हुआ है। अच्छा खासा ग्रेंजर का गेम पोजीशन मिला। हाइलोस जो है 3019 पे टैंक को एमपीपी मिला है, अच्छा खासा इनिशिएट, अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला। गाटो का एओजी भले ही 2 बार मिस हुए, लेकिन तीसरा बार जो एओजी प्रयोग उसके बाद वैक्सना का जो बात ही क्या करे, उनका जो अच्छा खासा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है वैक्सना का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा हमें इस जो मैच की अभी हमारे को डिटेल्स देखने को मिलेगा उसमें वैक्सना का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मेरे से कुछ कर नहीं पाएगी कि उनके लाइन पे गैंक हो रहा था, जिस तरीके से उनको मौका ही नहीं मिला। बेनेता चूज जो आपने स्टार्टिंग में बोला शिंदा भाई, बहुत ही अच्छा खासा कि बेनेता अगर चला तो चला, नहीं तो ये गेम जो है डूब गया। एएफके में जो सीसीले ने कोशिश अच्छा किया था, मिर्जा ने भी अच्छा कोशिश किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हायाबुसा जिस तरीके से हमें डोमिनेट कर रहे थे गेम में। इसके बाद मिड जब गेम का मिड टर्म आया उसके बाद जो ग्रेंजर ने किया, और हाइलोस देखिए 96%, और यहाँ पे जो टीम फाइट परसेंट में वैक्सन 65% पे, इसका ग्रेंजर भी कम नहीं है। बहुत अच्छा टीम पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिला शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल, डैमेज देखिए 30% यहाँ पे दिया है ग्रेंजर ने। पीछे से जो एमएम का एक रहता है रोल यहाँ पे कि सबसे ज्यादा डैमेज देने का, वो उन्होंने निभाया बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर टीम बात करें टीम एएफके की, तो उनको अपना ड्राफ्ट थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जिस तरह से ड्राफ्ट उनको जो है थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। आई होप इस टूर्नामेंट के साथ जो है ये होमवर्क जरूर करके आएंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर हम इनके टीम को देखें तो शायद हमको मौका मिले कि इन्होंने जो है इम्प्रूव किया है थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में। इनको अगर मौका अच्छा रहता है इनके पास, मैं अभी भी कहूंगा अगर बेनेटा की जगह कुछ और पिक होता वहां पे तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था जय भाई। जी बिल्कुल शिंदा भाई, जैसे कि आपने कहा, लेकिन एक अच्छा खासा कॉम्बो के बारे में सोच रहे थे कि बेनेते का आरटी होगा, टिगरियल का आरटी होगा, सचेत जो मिशेस्टर का आरटी, फिर जो बाकी थोड़े बहुत एचपी बचेंगे वो जो सिसिलियन जो है मिड टू लेट गेम में ले जाएंगे। जैसे हम लोग रील्स देखते हैं उस टाइप का कुछ प्लान करके आए थे, लेकिन जो हो नहीं पाया क्योंकि हकीकत कुछ और ही था। एफ के जो यहाँ पे एफ के जो इस टूर्नामेंट की इस मैच के बाद जो उनको एफ के का जो है लेना पड़ेगा, और अगले टूर्नामेंट में शायद वो अच्छे से कोशिश करे कि बेनेता की जगह कोई अच्छा खासा एक हीरो लो, ताकि आपको जो है मोबिलिटी भी मिले, आपको जो टीम फाइट में आपको जो है बहुत ज्यादा मौका मिले कि आप दूसरी टीम को डोमिनेट कर पाओ शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ आज के जो मैच है यहाँ पे खत्म होते हुए, मैं आपके कास्ट शिनरा, मेरे साथ कास्टिंग कर रहे थे जय। और आज के जो मैचेस थे काफी बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिले और सीरीज कप में। तब तक के लिए दर्शकों को कहूंगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो है यहाँ पे जाते जाते जो है सब्सक्राइब भी जरूर करें। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जय भाई? लास्ट में आप 2 शब्द अगर आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे हमें राइवल स्पोर्ट्स की तरफ से जो हमें यहाँ पे टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, वो जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट, इसके जो हम लोग कास्ट है, हम लोग को और भी बेहतरीन मौका मिलेगा शिंदे भाई जो अभी अगले वाले टूर्नामेंट्स की जो मैचेस है उनकी तरफ से। तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बुलाए, ताकि आपके दोस्त भी जो ऐसे फाइट से, ऐसे टूर्नामेंट्स में, ऐसे मैचेस है, उनको भी देखने को जो मौका उनको जरूर दे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जय भाई, और इसी के साथ मैं तक कास्टर आपका शिनरा, मेरे साथ थे जय। और अभी इसी के साथ हम लोग जाएंगे, आप सभी से विदा लेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।
ये था आखिरी मैच और इसी के साथ जो है स्ट्रीम यहाँ पे बंद होती हुई